Abu Bakr Ashik, the partner of Spitz Saloon, as well as Ajmal Trends Gold Mangalore. In their presence and their great presence, we are going to toss the coin for this fantastic and decided day of cricket. Absolutely, we are just waiting for the moment where we can witness some the good contest in the Mangalore poll. The six ranking teams will going to compete for the place in the final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is organized with the memory of sweet memory of late Suresh Bian. And here is a tossing the coin from our chief guest, and a toss which is on by captain of KCCR Kadri, registered. Dilip is the captain of the side, won the toss against Akim of KFC Kodikal. Two very good captains, successful captains, two cool captains. And I think Dilip, captain of KCCR Kadri, after winning the toss, they rightly elected to field first. They wanted to ball first and wait and see the strategy, the game plan from the captain of the side. Thank you very much, our chief guest, Abu Bakr Ashik, the partner of Spitz Saloon, as well as Ajmal Trends Gold Mangalore, for your great presence and for this tossing ceremony of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. And all set now for the first match, the big match. The two very good teams, ranking teams, they will going to take the challenge in the first round itself. The team which is won prestigious UFC Trophy RRP Memorial Trophy 30 format game, KCCR Kadri registered, will going to take KFC Kodikal. Of course, in this season, they're only once in the last tournament they are able to lift the prestigious trophy. Sauhardha Trophy, which is organized by MK Sports, and in this special, in this prestigious cricket ground. And so that KFC Kodikal might be the very confident side, because that tournament which is held in this cricket ground. And altogether these two teams and even KCCR Kadri also, they got 2-3 the very good important titles in the seasons. So that is going to be a very good contest between two very good teams, and everyone is waiting for that, isn't it? And slowly the crowds are gathering here in this UCG cricket ground with the newly built galleries, and certainly it's going to be a fantastic opportunity for the cricket lovers to come with a large number, and they can get some entertainment in this final day of this cricket tournament. And of course, sorry for everyone, those who are almost in the early morning itself. The viewers of 10 Media YouTube channels are just waiting for when the match will going to start here. Sorry for that. It's a late start because of a slight bit of interruption in the cricket ground. Because of yesterday's, there is a function which is organized in this particular UCG cricket ground. So that to clear that all that things from the cricket ground, and it's take a little bit time in the morning to start the first match. So that sorry for sorry for the late start, the viewers, those who are waiting for the live telecast of this cricket tournament. And this is your Sajesh Salyan, and wishing everyone the very good morning. And I promise you that you will definitely going to get some more entertainment in the last day of cricket tournament. And me and Gopi certainly will going to give our best in this prestigious cricket tournament as a commentator. So everything is ready here, and umpires are already there in the field, and the two very experienced umpires out there in the middle, umpire Roland Pinto, and the man who is did the job as an umpire in more than 39 years. Absolutely, it was an outstanding journey. And even Arish Padil, what a great journey has got. Absolutely fantastic, isn't it?
He is the one. Harish Padil has got experience of more than 27 years, and both in overarm and underarm cricket. The man who did the job not only in our South Kent district but in other districts, several districts. Is did a great job, and taking the name of Mangalore very high, especially when they're going and neighboring districts, neighboring states till Maharashtra. And Harish Padil is traveling a lot because he is a busy customer as far as umpiring job is concerned. In more than 27 years, did a great job. And along with the umpire Roland Pinto and Harish Padil, we have one more good umpire, Mohan Iyadi. Will going to join here in our commentary box as the third umpire. And welcome for all three umpires for the last day of this cricket tournament. And all set now for the big moment. And the cameramans are ready here. And in our commentary box, one of the most important department, the scoring department, Satya Sarup is already ready here, just waiting for the first delivery of the first match. Slight a bit of different condition in the morning. Just coming back to the morning condition and overcast condition, and there is no bright sunshine, and we can see that clearly that scatters clouds absolutely, the covering the brightness of the sun, and fantastic weather condition, isn't it? The players will going to enjoy this condition. And more than the players, I think the bowlers will going to enjoy this condition. So that is a very good toss to win the morning from the captain of Kadri Cricketers Club registered, one who are organized a very successful KPL Kadri Premier League 2023 in the last 2 weeks back. Successful cricket tournament which is organized. That is the Belt Area Cricket Tournament. And now they are playing their first match. Umpire Roland Pinto, sir, just signaling towards our scorer. So opening batters are there. Came into middle. Izaz is a striker, and Tazuddin is in non-strikers end. And coming back to the condition of this cricket tournament, playing condition, in fact, I am talking about 8 overs format of games. 2 overs going to be a power play, and 2 fielders in the deep, in the mid-wicket and deep long off. Starts with the warm-up delivery of the morning by the captain of the side, Dilip. Starts with the wide, and the morning exercise straight away for umpire. First run comes up here for team KFC Kodikalla. This time first run from the bat, not quite convincing cricketing stroke there from Izaz because he wanted to drive the ball towards the cover point region. Got a slight bit of outside edge of the bat, ball running down to short third man region. Raghu the fielder there in the short third man fields the ball, and ample time for the batter to cross off for a single. With that single, scoreboard numbers on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number. Roughest is in progress. And again, Dilip first time bowling to Tazuddin. Oh, lovely delivery, beautifully bowled, perfect one, and a different delivery, isn't it? It's a flighted one, quite deliberately bowled by Dilip, just inviting the batsman to go for the big shot, because intention is very clear that from Dilip that he know exactly the kind of batter Tazuddin is. Loves to drives the ball, especially in the offside region, and one of his favorite area, extra cover. He's kept the fielder in that region. So this time again nicely bowled. That's what I'm talking about. A ball which is not really coming to the bat. The batsman just expecting that the ball is coming to the bat. But just I mentioned about the condition of the ball and the condition of the weather. Slight a bit of encouragement for the bowler. 3 without loss of any wicket. This time again lovely delivery in there. Different one. Lakatar again there from Dilip. And Izaz tried to swap the ball. His intention is to swap the ball, but the line is so difficult to play that sweep shot, and he missed it completely. This time, obviously played. Fantastic catch has been taken. This time the big man down at short extra cover. Manjunath making no mistake at all. Absolutely fantastic catch. Even fantastic delivery from Dilip. Just have a look at that one. Slightly like a and loose stroke play by the Izaz. And have a look at the effort there from Manjunath. Magnificent, isn't it? It's not so easy for the tall fielder. If you mind you,
The diving is not easy for the tall player like Manjunath, because it is a very difficult job. And the way that Manjunath is diving to his right, absolutely magnificent. And a very good catch to finish the innings of Izaz. And Dilip, captain of the side, strikes with a beauty. And Izaz might be not really played that one very well. Instead of putting some power behind the stroke, he just half a drive, half a push. And that's the big problem. At the same time, he fails to keep it down. And Manjunath making no mistake at all. It's 3 for the loss of 1 wicket, and a new batter in is a key player, and everybody knows is the present cricketer, one of the top all-rounder, and Shakir and Jackie, and even you call him as Robot. And first ball itself, copybook style, beautiful shot down to deep long off region for a single. With the singles covered, Namuzan to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Good start given there by the captain of the side, leading from the fan. On the toss, elected to field first, and he himself justifying the decision which is taken for his team, and he able to send a huge wicket of Izaz back into pavilion, and that is a big contribution from the fielder for that wicket, because Manjunath taken a good catch. Altogether, the first over, which belongs to KCCR Kadri, registered in that over. Dilip is got a wicket of Izaz. But nothing much worry about that, the wicket, because KFC Kodikal has got a formidable batting department. Now we can see that that hide and seek is going on between sun and cloud. Now slight a bit of sun which is coming out of the black clouds, and a slight a bit of brightness we can see here in USCG cricket ground. That will going to continue throughout the day, maybe, because the month of April, end of April and May is always going to be a beginning of the monsoon, especially in our South Kent district and coastal area, and hope the rain will not going to interrupt this tournament. The first ball of the over number second, tried to sweep that one very fine, but Jackie didn't got enough bat onto that, so that ball went straight to the hands of Dilip at short fine leg decision, and ample time for the batter to complete the single. 5 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. Tazuddin is a very useful player for the side of KFC Kodikal as far as opening batter and a good bowler. And here is right arm over the wicket. Lovely delivery. Slight a bit of extra bounce here from Satish. Satish has been very impressive, and in his performance in the last two, three tournament which is played in this UCC cricket ground. As far as the bowling department is concerned, is very accurate in his line and length. And here is again right arm over the wicket balls. Satish, just I'm talking about very accurate, but this is not that much of accuracy. We can see that from Satish is not justifying my commentary. And he's ball far outside the line of off step, and wide call by umpire. 6 for the loss of 1 wicket in the over number 2 is in progress. And here is again Satish bowling away from us. Right arm over the wicket balls. There's some drags that one from outside the line of off time to get that one down to wideish long on region, and before the fielder from deep wideish long on to collect that one. Ample time for Ashok, I think, the fielder there, and wideish long on to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. 7 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Both the batters realizing that the partnership is so important after losing the wicket of Izaz in the first over. And here is Satish, right arm over the wicket. Misjudgment, absolutely misjudgment. Good thinking as far as this particular bowling is concerned, because seeing that Shakir is going here and there, moving here and there, and just wanted to disturb the concentration of the bowler, but by doing that, I think he himself is missed the ball. And here is Satish again, right arm over the wicket, drives that run powerfully down to deep long off, but lack of placement. He's just choosing one of the fielder out of 2 in the deep, because this is the second over is in progress. The power play is on in progress, because you can keep only 2 fielders outside the circle as per the rules and regulation of power play is concerned. 8 for the loss of 1 wicket in the over number second is in progress. Again bowler Satish bowls bad line. Second wide of this over. Not only the wide, they're going to get extra runs as well. 2 wides, the gifted runs here for Team KFC Kodikal.
They need to restrict all these extra runs when you're playing the team like KFC Kodikal, one of the top teams as far as in this South Kent district's ranking is concerned. All rankings teams, 6 ranking teams, top ranking teams, they're taking part in this final day of this cricket tournament. Again, swept that one, lack of placement. Set to the fielder, chance of run. Oh my goodness, can you believe this? Bowler Satish just missed the golden opportunity to get the wicket here, isn't it? Because Tajuddin already given up. After Shakir swept the ball, Tajuddin thought it might be a ball which is went in a gap, but ball went straight to the hands of that short mid-wicket fielder. But short mid-wicket fielder did a great job, fields the ball, returns the ball, but Satish fails to collect the throw from the fielder, so that Tajuddin is got a life here. Absolutely, you can't give the life to the batter like Tajuddin, who can be very handy if he goes on batting, if he gets his rhythm back. He is always going to be a danger batter for any opposition. So 10 for the loss of 1 wicket. After completion of 2 overs, Satish bowled over of 7 runs. Just 6 runs came from that over, in fact. The first over it's 4 runs and second over it's 6. Altogether it's 10 on the board for the loss of 1 wicket. So very, very interesting to see that. Now bright sunshine, absolutely. The sun which came with the full strength. And this is a typical morning condition in USG cricket ground in the month of April. Almost is the end of month of April. And the field restriction is off, so that we can see that so many bodies out there in the deep. One at deep cover point, one at the long off. One fielder is down at orthodox long on, one at mid-wicket, orthodox mid-wicket, and one fielder stationed at deep backward square leg. Here is Dhanush, a very young talented bowler. It starts with the delivery, good delivery, but no support coming from the wicket keeper behind the stump. Sandeep missed it completely, but umpire not missing here to signal the bye. And with that bye, scored Namuzan to 11 on the board for the loss of 1 wicket. Dhanush is a very young talented bowler. Maybe he was a 16 or 17 years age, and is been outstanding in the playing 11 of KCC Arkadri in this particular season as a bowler, and scoreboard is 12 for the loss of 1 wicket. Dhanush from the far end, right arm over the wicket. This time Tajuddin wanted to cut the ball, but realizing that there is not a room enough to play the cut shot, so just he went with the stroke to get the single down to a short extra cover region. Manjunath, the fielder, down at extra cover, fields the ball and back to bowlers. 13 for the loss of 1 wicket. Dhanush again to Shakir. Shakir wanted to play that, so his favorite single-handed sweep shot, but ball is just passing under his bat. But the reason that he's shuffled across the line of the delivery too much, tried to reach the line of the ball, and misses it completely. This time he just wanted, oh, ball is in the air, but is lucky, very lucky from Shakir there, because he didn't middle it. If he able to middle that one, ball certainly will going to land into the hands of mid-wicket fielder, but he's got a slight bit of mistiming in that occasion, shuffled across the line of the delivery, but he got a single for that. 14 for the loss of 1 wicket. Again Dhanush from the far end. Right, over wicket, top edge, opportunity for the fielder. Raghu is one of the safest pair in the fielding department. No way to miss the golden opportunity to take the catch. Dhanush strikes in his first over. Just like I mentioned, he's been very impressive. And he's really going to be a future player for KCC Arkadri. The way that he's bowling that line and length, they quite deliberately bowled outside the line of leg stump. Seeing that Tajuddin is going for the reverse stroke, he's just following the batsman, bowling around the legs of the batter, so that is always going to be difficult for the batter. Whenever the line is outside the line of leg stump, he wanted to go for the reverse stroke. This is one of the difficult line to play, and that's why Dhanush has got a success of getting a top edge of the batter, and Raghu making no mistake at all. The second wicket is back into pavilion of KFC Kodikal. It's 14 for the loss of 2 wickets. The very good over which is completed, which is consists of just 4 runs and a wicket. So Dhanush once again is contributing from his bowling. The young talented bowler, it's not so easy to come and perform, especially in the high level. The tournament like high voltage matches like this, there's a need to be confidence enough to bowl. But this man is always
is very confident and got the reward for that. He picked the wicket as well of Tazuddin. 14 for the loss of 2 wicket. Run rate is not that much of a healthy enough for KFC Kodigal, but they got a healthy enough batting where they can get some acceleration in the incoming overs, because it's a 8 overs format of games, so a lot of time for the batters to accelerate, because 8 overs in the sense 3 overs which is completed, 5 overs remaining, that means 30 balls remaining excluding wides and no balls, and they can get some good score. That means the sensible batting which is badly required of our team KFC Kodigal, and Raghu brought into attack, and the bowler who can be the very effective as far as his bowling action is concerned. A lovely delivery to start with, not that much of turn. Maybe Jackie is thinking about that going to be a big off cutter, but a slight a bit of deviation. That's why Jackie has missed it completely. Maybe Raghu is bowled that one, quicker one. When you are bowling you quicker one, you are not getting that much of turn, and that's the reason the batter missed it completely, and there is no chance at all for any run. Raghu again, right arm over the wicket. This time batsman went for the receive, a chance of run out. Sandeep misses the stump, and Hakim survives. Oh my goodness, the heart in the mouth of the supporters of KFC Kodigal, isn't it? Because losing wicket here in this condition, putting them in more pressure for the incoming batter. So Hakim just survived from that run out. Risky run has been taken there. Scoreboard now 15 for the loss of 2 wicket in the over number 3rd is in progress. Raghu, short run off. Is definitely going to enjoy the condition here. The morning condition, beautiful off the toes, very confident. Hakim's typical cricketing stroke is that he loves to play a shot. Even needs to slide a bit of across the line of the delivery, but he's so confident as far as the wrist work is concerned. There's an excellent wrist work there from Hakim to get the single down to wideish long on for a single. With that single, scoreboard moves on to 16 for the loss of 2 wicket. You can get that kind of cricketing stroke, especially in international cricket, overarm cricket, because he is the one. Hakim is performing in both overarm and underarm cricket, and the last month he's got 100 behind his name in the overarm cricket, the seasonal cricket. We're talking about a division match at NMPT cricket ground. 16 for the loss of 2 wickets. There's a ball was back drive. Difficult opportunity for Raghu to take the cotton ball, because Shakir hits the ball pretty hard. Might be the mid-off is in the situation if Raghu not really getting that hand, but he's standing in a wide off extra cover, and I think it's going to be a no chance at all for that extra cover fielder as well. But bowler stopping the speed of that stroke and fails to collect the catch. 17 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Oh, beautifully ball, beautiful delivery, isn't it? Oh my God! Direct it, and it's gone. Shakir is gone. Can you believe this? This is a huge fish in the net. This is absolutely huge fish in the net, because Shakir, who known as a robot, he's a robotic as far as underarm cricket is concerned. He's got ability of potential of playing a long innings, and but losing in this condition for KFC Kodigal, I think it's absolutely big breakthrough for KCCR Kadri. What a fantastic work by the fielder. Absolutely fantastic. I think the young man Dhanush did the job in the 3rd man. Absolutely terrific work. I'm not getting the replay of this run out. If just I want to see which fielder did the job. It was absolutely fantastic one, isn't it? Have a look at it in the replay. The deliveries are so beautiful. Have a look at Raghu. He's bowling away going delivery. Lekatar just got a deviation. Dhanush, absolutely young man doing the job here. It's a stump, and responsible for the dismissal of a huge wicket of their opposition. Now under pressure situation here for KFC. 17 for the loss of 3 wickets. The new batsman in is Harris. One more excellent striker of the ball, and but here is the more than the striking the ball. They needed some partnership here for KFC Kodigal, and wait and see how these two batters will going to get the partnership here for KFC Kodigal. But so far, Kadri cricketers are dominating. Raghu bowls, reverse sweeping that one, but they kept the fielder for that. He knows that
what the potential, what is the scoring zone of the ball, the batter, so that the captain of Kadri kept one field and the third man. One more good over is completed after completion of 4 hours, searching for the right track. A slight a bit of struggling here by the batters of KCCR Kadri registered, and they're 18 for the loss of 3 wicket. And before the next ball going to start, time to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Hindi, Gopi, good morning to you, and slight a bit of late start, but nothing much worried about the late start, because you can continue this match the late, because the under red light match will go into progress. But I think condition slight a bit of different, overcast condition, morning itself, scattered clouds, hide and seeks is going on between sun and cloud, but I think the bowlers dominating that condition, especially in this condition. The bowlers of KCCR Kadri registered, they exploit the condition very well, putting some pressure onto the opposition batsmen by picking some wickets. But still, Gopi, KFC got some fantastic batting department. They can bounce back in the remaining 4 hours if they bat well. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, इस वक्त सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो इस बार इम्प्रोवाइजेशन के जरिए गेंद को खेला इस वक्त थर्ड मैन पर बल्लेबाज ने, और सही बात आपने कहा सतीश, यहाँ पर 4 ओवर का खेल इस वक्त कदरी क्रिकेटर्स के पक्ष में हो चुका है, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है। सबसे बड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है शाकिर का विकेट का पतन, दुर्भाग्यवशात रनआउट के रूप में वो पेविलियन वापस लौट चुके हैं। और ओवरकास्ट कंडीशन, मैच आज कुछ देर से शुरू हुआ, 10:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि देर रात तक आज मैच होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस श्रृंखला के अंतर्गत। ये गेंद चिप गया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर के दिशा में गेंद जाते खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। 2 रन इस बीच मिले गया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कोप किया था इस वक्त 2 रनों के लिए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। निस्संदेह एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की जरूरत KFC कोडिकल्स को कम बैक करने के लिए। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, लेकर गेंद थी, और अंतिम क्षण में 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए हकीम ने, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज दिलीप एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ, इंप्रोवाइजेशन करते हुए बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाते हुए काफी लंबा डॉट फीडर लगाते हुए तीसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा। 2 मात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। He just played that one with a twisted bat at the last moment and got that one in the right placement। और 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। ये गेंद स्वीप किया, इंप्रोवाइजेशन, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, और कुल मिलाकर इस ओवर में 6 रन बने, 6 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। 5 overs gone and after 5 overs still the batsmen of KFC Kodigal searching for the right track. It's 24 for the loss of 3 wickets. The next match, और जहां तक अगले मैच का सवाल है, the next match, one more big match is now coming up. NM Mangalore will take over Gori Young Boys in the next match, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. तो सो बैक टू दिस गेम एंड 6th ओवर स्टार्ट्स, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए राघु, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज हकीम। तो जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, KFC के उम्मीद है इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर। रिवर्स शॉट इस बार खूबसूरती के साथ इंप्रोवाइजेशन किया, गेंद जाते हुए कवर पॉइंट की दिशा में, लेकिन जब तक गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद फील्ड और डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो बेहतर रिवर्स शॉट इस वक्त हकीम खेल चुके हैं, और 4 रन यहाँ पर बटोरने में सफल। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज राघु, गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछाला, गेंदबाज के दाईं ओर से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के दिशा में,
और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 27 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज राघु गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए एरिस इस वक्त सामना करते हुए तैयार। बल्ले को बार बार इस वक्त जमीन पर पटकते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट इस बार स्वीप करना चाहता गेंद को, लेग कटर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, लेकिन और आखिरकार 1 रन बल्लेबाज को इस गेंद पर मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर। इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 in progress. The batsmen of KFC Kodikkal are now searching for the right track and a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of KCCR Kadri. तो आज सुबह से बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। क्लाउडी एटमॉस्फेयर इन दिस ग्राउंड। बादल नीला आकाश को घने बादल तो नहीं लेकिन बादल जरूर इस वक्त ढक चुके हैं कुछ हद तक। और जहाँ तक सवाल है मैदान पर बदली भरा वातावरण इस वक्त छा चुका है जरूर, लेकिन खेल के लिए पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर इस वक्त निर्माण हो चुका है। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी राघु आगे बढ़ाते हुए हकीम के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में नजदीकी मामला, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को थ्रो करना नहीं चाहा गेंदबाज ने। और आखिरकार बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके। गेंद पैरों पटक रन के बाद सीधे बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद, हालांकि थोड़ा सा आगे की ओर दौड़ लगाते हुए गेंद तक पहुंचे, लेकिन घूम कर जब उन्होंने निशाना दागा लेकिन तब देखा कि हकीम लगभग क्रीज पर पहुंच रहे, अपने इरादे को यहां पर बदल दिया। और फिर से एक बार राघु गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए एरिस के लिए ये गेंद स्वीप किया। इस वक्त एरिस ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 2 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 31 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। बराबर का टक्कर यहां पर जारी। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है राघु इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस, bowled off his legs and that is the end of Harris. Just wanted to loft that one on the onside, just wanted to swing it away in fact on the onside after being shuffling across the line. स्टंप्स को कुछ हद तक एक्सपोज किया था और फुल टॉस गेंद उनके बल्ले को बीट करती हुई देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। लो फुल टॉस गेंद थी और गेंद को बल्ले को बीट करते हुए सीधे लेग स्टंप पर जा टकराए। एरिस की पारी समाप्त और इसी के साथ चौथा विकेट यहाँ पर गिर चुका है KFC कोडिकल का 31 रनों के योग पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 6 ओवर्स कंप्लीटेड। तो जैसा कि हम जानते हैं इस श्रृंखला इस प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा और अंतिम दिन का पहला मैच यहां पर शुरू हो चुका है। KCCR कतरी और KFC कोडिकल के बीच में सौहार्दा ट्रॉफी 2023 इस वक्त की प्रगति करते हुए और ये श्रृंखला दिवंगत सुरेश BN जो कि गोरी यंग बॉयज के फाउंडर थे उनके मधुर याद में इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और जहाँ तक का सवाल है आज मंगलूर के टॉप सीडेड टीमों के मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे और निश्चित रूप से हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि क्रिकेट का हर पहलू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सुरेश BN एंड की ओर से गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए सतीश नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। हकीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी चूके गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, शायद विकेट कीपर के अंगूठे से टकराकर, थंब जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अंगूठे से टकराकर गेंद निकली इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर। कुछ हद तक अपने अंगूठे में थंब में दर्द हो महसूस करते हुए 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 32 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सतीश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने ओवर द विकेट चेतन का आगमन हो चुका है, सामना करते हुए इस वक्त गेंद को स्वीप किया इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, लेकिन कुछ खास सही तरीके से गेंद को फाइन नहीं खेल पाए और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 4 विकेट के नुकसान। कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंच रहा होगा KFC कोडिकल को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और सतीश एक बार फिर से तैयार हकीम के लिए ये गेंद लॉफ्टेड और इस बार गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए।
तो पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक कहना पड़ेगा केएफसी कोडिगल की पारी में लग चुका है हकीम के बल्ले से। और देखिए थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को इस वक्त कनेक्ट किया मिडल ऑफ द बैट। हालांकि अंतिम क्षण में बल्ला बैट उनके एक हाथ से छूट गया था, लेकिन गेंद को बखूबी मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट करने में सफल। डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा या फिर 50 का आंकड़ा पार करना होगा यहाँ पर केएफसी कोडिगल को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और यहाँ पर हकीम का काफी बेहतर स्ट्रोक, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर। ही इज मूविंग अप टू 17 नाउ इन 12 बॉल्स इंक्लूडिंग 1 6, प्लेइंग अ रिस्पांसिबल नॉक फॉर देयर साइड। और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सतीश की गेंदों का, और सतीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार हकीम के लिए। दाहिना तो द विकेट, और छक्का प्रदान करने के बाद देखना यह है कि अगली गेंद पर सतीश किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं। दाहिना तो द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में। बेहतर गेंद इस वक्त बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी, और गेंद को खेल तो जरूर दिया लेकिन ठीक तरह से जगह नहीं बना पाए, और बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद पहुंची। बेहतर गेंद थी गेंदबाज की, और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन कमबैक, 2 लगातार डॉट गेंदे यहाँ पर फेंक चुके हैं। छक्का प्रदान करने के बाद गेंदबाज सतीश, तो निस्संदेह बेहतर कमबैक यहाँ पर कहा जाएगा। और अब अंतिम गेंद उनके पारी में बाकी, और चेतन इस वक्त हकीम को बुलाया उन्होंने, कुछ कहते हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए। और इस बीच इस ओवर की अंतिम गेंद पर देखना यह है कि हकीम क्या करते हैं, और सतीश अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए। रवि पट्टायूर माफ कीजिए दूसरे फील्डर थे वहां पर, उनको बीट करती हुई गेंद निकली इस वक्त डीप फाइन लेग पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 7 ओवर के समाप्ति 41 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स after completion of 7 overs scored by KFC Kodigal after being losing the toss and put it to bat by KCCR Kadri in the match number 1 of the day 3 of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023। और अंतिम ओवर का खेल बाकी। Meantime, I once again request all the players of NM Bangalore and Gori young boys to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. The next match will be played in between these two teams. Players please note. और जहाँ तक सवाल है अंतिम ओवर का, तो कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज धनुष इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज चेतन। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त धनुष तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए, और 1 रन का इजाफा, माफ कीजिए पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। और 6 गेंदों में देखना यह है कि केएफसी कोडिगल के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। पहली गेंद लेकर तैयार धनुष, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन फाइन, लेकिन फील्डर गेंद को रोकने में सफल बेहतर तरीके से थर्ड मैन पर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। इंप्रोवाइजेशन बेहतर था, लेकिन अंतिम क्षण में काफी तेजी के साथ दौड़ते हुए अपने पैर के जरिए गेंद को रोका। देखिए किस तरीके से, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। दूसरे फील्डर गेंद को उठाकर जब तक फील्ड करे, हर्षित बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का मौका था, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 43 रन पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। धनुष एक बार फिर से तैयार चेतन के लिए, ये गेंद स्विंग करना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, और इसी के साथ ये चेतन की पारी समाप्त। पैर पर गेंद टकराई, थोड़े से सफल हो चुके थे, और गेंद लाइन पर टिप्पा खाए, मिडल स्टंप को कंसंट्रेट कर आते हुए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, पैरों पर गेंद टकराई थी, और अंपायर कोई दिक्कत यहां पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में, और इसी के साथ चेतन की पारी यहां पर समाप्त हो चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, पिछले गेंद पर परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद यहां पर फेंकी थी गेंदबाज धनुष ने, और विकेटों प्राप्त करते हुए बेहतर गेंदबाजी धनुष द्वारा। 4 गेंदें अब बाकी उनके पारी में, और
नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ। तो सुबह का वक्त 11:05 यहाँ पर बज चुके हैं। बदली भरा वातावरण अभी भी मैदान पर छा चुका है। कुछ हद तक धूप जरूर प्रकट हो चुकी है, लेकिन उतनी प्रखर धूप नहीं। और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा खेल के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। और आज जो कि मैंगलोर के टॉप सीडेड टीमों के बीच का मैच यहाँ पर खेला जाएगा सी पूल में। और यहाँ पर मैच इस वक्त जारी है। आज का पहला मैच केसीसीआर कद्री और केएफसी कोडिकल के बीच में। और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। धनुष इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हुए। इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला, लेकिन बैकवर्ड थर्ड मैन पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 8 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन द रिंग्स। और अंपायर ने इशारा किया कि इस वक्त स्टिपुलेटेड टाइम, निगदित समय जो है वो समाप्त हो चुका है। तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। कुल मिलाकर 4 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर मौजूद। तो देखना यह है कि इन बचे हुए 3 गेंदों में केएफसी के बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद है, हकीम और इमरान, किस तरह इस फील्डिंग, जो एक फील्डर कम है 20 गज के बाहर, उसका किस तरह यहाँ पर बल्लेबाजी के जरिए फायदा उठा पाते हैं। और इस बीच धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त कुछ कहते हुए, शायद वहां पर कुछ कोई प्रेक्षक सीमा रेखा के अंदर खड़े हुए थे, तो उन्हें इस वक्त कुछ कहते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 44 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। तो इस वक्त अंपायर रोलैंड पिंटो कुछ कहते हुए केसीसीआर के समर्थक यानी सपोर्टर्स है। और इस बीच स्कोर रुक चुका है 44 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन ऑल द प्लेयर्स ऑफ एनएम मैंगलोर एंड गोरी यंग बॉयज प्लीज टू बी रिपोर्टेड हियर टू मेक अ साइन इन द ऑफिशियल चार्ट। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। हकीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद थी। वाइड का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, 2 रन मिलेंगे। 1 + 1 2 रन नाउ एडेड टू देयर टोटल। और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 46 रनों पर। देखिए किस तरीके से हुआ था, लेग स्टंप से काफी बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की और गेंद थी, रन के लिए दौड़ पड़े, विकेट कीपर के हाथों से चूकी, विकेट कीपर ने निशाना दागा, लेकिन निशाना चूका। यह गेंद स्वीप करना चाहा, पैर पर टकराए, विकेट कीपर पहुंचे, निशाना इस बार लग चुका है। इस बार विकेट कीपर नहीं चुके, बेहतर फील्डिंग वहां पर विकेट कीपर द्वारा। और इसकी बदौलत यह विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। गेंद पैरों पर टकराए थे, रन के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही गेंद स्लिप पॉइंट पर गई, विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए गेंद स्ट्रोक को इस वक्त विकेटों पर शाइन किया। और बल्लेबाज क्रीज पर नहीं पहुंच पाए। इससे पहले विकेटों पर जाकर गेंद टकरा चुकी थी, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब हो चुके थे। और इसी के साथ विकेट नंबर 6 गिर चुका है। इट्स 46 for 6, 2 balls now left in overall calculation in their innings। और अब इंतजार है नए बल्लेबाज का। और जहां तक सवाल है इस वक्त धूप का, तो प्रखर धूप अब मैदान पर प्रकट हो चुकी है। सूरज बादलों के आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को इस वक्त मैदान पर फैलाता हुआ। और निस्संदेह यहाँ पर कुछ हद तक गर्मी का एहसास खिलाड़ी और दर्शक दोनों इस वक्त करते हुए। और कुल मिलाकर 2 गेंदें अब केएफसी कोडिकल की पारी में बाकी। और गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके, शॉट फाइन लेग पर वाइड का इशारा। 1 + 1 in fact they come back for the second and get it. This is an absolutely fantastic running between the wicket। जैसे ही देखा कि थ्रो धीमे तरीके से पहुंच रहा है, दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। और यहां पर देखिए कुछ हद तक धीमे तरीके से थ्रो किया था और दोनों बल्लेबाजों ने बाबा की थ्रो काफी धीमे तरीके से पहुंचा है पिच के बीच। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन यहां पर मिल चुके। 2 + 1 3
runs added to their total. Fantastic running between the wicket between these two batsmen, Iqbal and Hakeem. और जहाँ तक सवाल है 3 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं. 49 रन 6 विकेट के नुकसान पर. 49 for the loss of 6 विकेट. तो इस वक्त 2 गेंदें अभी भी बाकी है और धनुष गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैनात के बल्लेबाज हकीम के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर. इस बीच सिर्फ बाई का इशारा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हकीम. खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और रखने में सफल इस वक्त. और इसी के साथ 1 रन मिला. 1 विकेट यहाँ पर हकीम के रूप में गिर चुका है. माफ कीजिए इकबाल के रूप में गिर चुका है. तो 50 comes up for KFC Kodigal. 50 for the loss of 7 wicket and now just a last ball left. देखिए किस तरीके से हुआ था. Have a look at this in the replay. यहाँ पर जो रन दौड़े थे और वहाँ पर देखिए कितने धीमे तरीके से गेंद को फेंका था इस वक्त फील्डर ने. और इसे देखते हुए बल्लेबाज ने दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण करिए. अंतिम गेंद पिछले गेंद की क्लिपिंग है. देखिए यहाँ पर रन आउट हुआ था और 7वां विकेट गिर चुका. अंतिम गेंद द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. भगवान हकीम के लिए ये गेंद इस बार चूके गेंद को ड्राइव किया लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट. इनफैक्ट इट्स गॉट अ सिंगल. इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट. 1 रन मिलेगा. 51 द स्कोर स्कोर्ड बाय KFC Kodigal after the completion of 8 stipulated overs and they started slowly but finished very well. In fact 51 runs they scored for losing 7 wickets in the stipulated 8 overs. 51 the score and 52 the target. और जहाँ तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल एग्जैक्टली 6.5 रन पर होते हैं. आफ्टर स्कोर फॉर विक्ट्री विद द हेल्प ऑफ 10 विकेट्स द प्रेजेंट इक्वेशन शोज फॉर देम. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. और 52 रन जो कि उन्हें यहाँ पर बनाने हैं. और सतीश जहाँ तक सवाल है दे स्टार्टेड स्लोली. 4 ओवर के बाद जब माइक्रोफोन आपने मेरे हवाले सौंपा था जब सिर्फ 18 रन स्कोर था लेकिन द्वितीयार्ध में हकीम इस वक्त कुछ हद तक बरस पड़े और आखिरकार एक बेहतर पारी उन्होंने खेली. और आखिरकार उनकी इस बेहतर पारी की बदौलत द्वितीयार्ध में 33 रन बटोरने में सफल KFC Kodigal. 33 runs scored in the last 4 overs by Kodigal in the second session and they come back very well after being slow start in the first 4 overs. That means in the first session of their innings. Or 51 और Hakeem he's remained unbeaten on 19 not out 19 by Hakeem. और उनकी इस जिम्मेदारी भरी पारी की बदौलत एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुका है KFC Kodigal. 52 रनों correct. 6.5 runs per over. The required run rate for them with the help of 10 wickets. The present equation shows for them in 8 overs. They have to score for victory. और जहाँ तक सवाल है KCCR कतरी का तो उनके पास भी एक सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है. रवि पड्डयूर दिलीप और कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक बार अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रख सकते हैं. लेकिन जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी के डिपार्टमेंट का KFC Kodigal के पास भी KCCR की तरह ये बेहतर गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है. कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा 52 रनों का लक्ष्य. जहाँ तक सवाल है इस मैच का तो मैं कहूँगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 और दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने सही क्षमता के अनुसार इस द्वितीयार्ध में अपना खेल खेलते हैं तो निस्संदेह ये मैच यहाँ पर एक रोचक मैच हो सकता है. सतीश Well, thank you very much, Gopi. And just like I mentioned, the innings of KFC Kodigal, and exactly, they started slowly and progressed nicely and finished very well. And that's only because of one man which is taking the initiative of getting some responsibility of playing some big innings. That is none other than Akima. I think played a very responsible innings and he taken an initiative of getting some good runs for his team and scored 19 unbeaten 19 valuable runs. And that is a good score, Gopi. In this condition, I want to say the 52 definitely going to be a good score. And just like you're mentioning about just question raising here, will it going to be good enough against formidable batting department of KCCR Kadri registered? You're just mentioning about the name like Ravi Sali and Padayuru and one more man who is a killer of the ball, Manjunath.
and of course Sandeep and Raghu. So Dilip all has got a good performer from the bat. So that I think it might be the good contest for spectators. They can definitely going to get entertained in this particular match because it's going to be anybody's game. And just like we are talking about the batting department of KCC, definitely it's going to be chaseable if you manage to perform as per the reputation what they got. But at the same time, Gopi, KFC Critical also got some good bowling department. And more than anything else, in the last tournament, they came into the right track. They came into the winning track. Whenever the team which is coming into the winning track means their level of confidence always going to be very high. This is maybe the danger sign here for the opposition team that KFC Kodikkal, they back into the winning track and the level of competition going to be very high. The first ball, ooh, that one magnificently bowled by Jackie in the occasion. Lazy movement of the feet here from Ravi Salian. Just wanted to push the ball, but a slight bit of lack of footwork again here from Ravi, so there is no chance at all for any run. Jackie right arm over the wicket drives, copybook style, right from the middle of the bat. Absolutely sweet sound coming from the bat of Ravi, that indicating that is a very good striker of the ball. One without loss of any wicket in the over number first is in progress. Very interesting moment from the captain of the side, sending this to do destructive batters to open the innings. Maybe the reason that they want to exploit the condition of the fielding restriction of the power play, and wait and see how well these two batters will go to justify. Jackie, right arm over the wicket bounce. This time going for the big drive, expansive drive, but not really getting that one from middle of the bat. That's what I'm talking about. This wicket is not so easy. Ball which is not coming to the bat, it's absolutely congested in the occasion. Ball is not really coming to the bat, and the bowler have to wait for the ball to coming to the bat if you want to get the very proper timing. Right arm over the wicket bounce. This time, what we are talking about, Ravi Salian is going for. Absolutely terrific slog sweep shot comes into play. You can't keep this man for a long time, isn't it? The way that he is stretching his front foot, absolutely. Have a look at it one. Nothing wrong with the line of the delivery, isn't it? But the way that the batsman taking his position is absolutely exquisite footwork. And there is no fielder at all in the deep square, like ball which is raising towards the fence for 4 runs. With that boundary score moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Now slight bit of under pressure situation here for the bowler, but Jackie can handle the pressure. This time he's going over, and it's going to be a maximum. What a strike! Oh my goodness! It's a phenomenal cricketing stroke. It's absolutely phenomenal. Have a look at that one. Do you think that anything wrong with that ball? But the way that Ravi is picking that line and length, absolutely instrumental cricketing stroke. This time, he's really seeing the ball like a football. Mind you, this is the pressure. We can see, oh my goodness, they're going to do a chance of run now. They missed it. There is a fielder slight bit of fumble. Maybe just lost his balance. I'll have a look at it one in the outfield. Harris, but he's recovered quickly and he returns the ball. But I think Manjunath is struggling. Oh my goodness, he's gone. He's definitely gone. If Shakir will going to complete the formalities of uprooting the stump. But what a great start here for KCC Kadri. Once again, Ravi has been outstanding. 13 runs he scored in 5 deliveries. And the total score which is 14 on the board. That means 95% of the runs which is came from the bat of Ravi. Absolutely, the good start, the kind of start what the team KCC Kadri wanted to get. The same start which is given there by the opening batters. Shakir has been punished in the first over. Maybe I'm really thinking about, because as always this man Chetan is always starts the proceedings, but here is the captain wanted Shakir to bowl the first over, but Ravi Salian just going after him, hitting 1 boundary and a 6, and he got a start. 14 without a loss of any wicket. One of the hunting ground for Ravi Salian. The umpire now just examining the bat of Ravi Salian, because the 4.25 inches as far as the width of the bat is concerned. But certainly the Ravi Salian is aware of that whenever coming to play in a usage cricket ground, especially when now having umpires like Roland Pinto, there is no chance to get away from that. So
just under 4.25 inches, so that his bat is safe. 14 without loss of any wicket. Here is Chetan from the far end. Right arm over the wicket. Need to restrict in this over. This time, ball which is in the air, but there is a possibility of getting a single there. But Ravi is not interested in that occasion. Maybe thinking about why to take the risk after getting a 14 runs in that over. But Chetan is a kind of bowler who can be very effective. But he's got a lot of experience. Whenever his team is needed some restriction from the ball, he's the one who's leading from the front. You know exactly what the condition of the game and what kind of over is required in the second over of the power play. Chetan right arm over the wicket second time. Right arm over the wicket to Manjunath. This time Manjunath going for the expansive reverse stroke, and this time absolutely unnecessary. Absolutely unnecessary. Maybe the jockey is thinking about that. Why not to get one wicket in the form of run out? But I think by doing that, more than the single, I think is the batsman just came into the strike is Ravi. He's just giving the opportunity Ravi to come to the strike, and whenever the Ravi comes to the strike, it's not so easy for the bowler to handle the pressure. There is no fielder in the deep. We can see that very interesting field set. There is a little bit offensive field in the offside region. The four fielders all with inside the ring. The two protection has been given in the onside region, deep long on and a mid wicket. Here is Chetan from the banner of Suresh BNN. This time slashes it hard, but lack of timing. If he mid that one, he can deliver that one between cover point and extra cover. But because of mistiming, there is no chance at all for any run. So far, so good, Chetan. 3 balls, just a single run conceded. It's 15 on the board without loss of any wicket. That one also from the extra. That is a wise. Chetan again, 4th time in this over. Right arm over the wicket. This time, drives. What a shot! Right in the gap. Doors a wide is long on boundary for 4 runs. Once the ball is left the bat of Ravi, I think the fielders just a spectator. The fielders just want to become a spectator. The watching the ball is going towards a deep long on region. Have a look at the placement. Absolutely no. You know exactly where the fielder is. He knows the fielder is in that mid wicket is a little bit squarer. The long on fielder is almost in outermost long on. So there is a huge gap between that. They're sending that one right in the gap, and 19 without loss of any wicket. Chetan again. Still is the one after bowled 3 very good deliveries because of that boundary. Already the 5 came from that over. Chetan again with a short run up. Right arm over the wicket. This time swings it on. Ball wide like a tracer bullet. What a batting display here from Ravi. He's unstoppable. What he left in the last 2 tournaments here in the UCC ground, he's just continuing that one in this match as well. Absolutely terrific slog slip. Have a look at the bat swing. Just like it's a stroke from the cannon. One of the signature shot. Of course, Riaz Gori, commentary box, he's also played plenty of that kind of cricketing strokes. One of his favorite slog slip shot. He definitely has enjoyed that one. 23 without loss of. Chetan bows, frustration and the pressure straight away for the bowler. Why not? After the batsman hitting your good deliveries into the boundaries, then the bowler suddenly wanted to do something special. The experiment, it's too much. And ball went too much outside the line of off time. 24 without loss of any wicket. Chetan again. Slower one. This is the last weapon. This is the last weapon what bowlers wanted to implement when the batsman going after you to bowl that a slower one, so that Ravi is just waiting but not really getting that one from the middle of the bat. But he got what really wanted in that over. That 2 boundaries is quite enough for KCCR Kadri to get that 2 overs, which is definitely going to be very expensive. 24 without loss of any wicket. That means it's going to be a testing time now for the bowlers of KFC Kodikal, how to restrict the runs. After, of course, the first 2 overs, which is definitely the opportunities created for the batter to get a lot of runs because of fielding restriction. But I want to see the strategies and the game plan there from the captain of KFC Kodikal to back into this game. And the only way for KFC Kodikal to back into this game is that they need to break this partnership, and especially the wicket of Ravi. And he's looking so dangerous. 21 already scored
in just 9 deliveries, and strike rate is more than 250. Absolutely is amazing. The jersey number 10 is always going to be a danger signal for any team opposition. The Sachin Tendulkar wears that number, jersey number 10. (24) without loss of any wicket. Now Akeem, captain of the side, have to do something special because he batted brilliantly. Now you need to contribute from the bat, from the ball. Now jersey number 9 is in action. Jersey number 10 is in non-strike again. And the jersey number 25 is in strike again. That is Manjunath, one more killer of the ball. But so far he's that ball is a slight a bit of going down the leg stump. Again they're going for the quick single, and umpire says it's going to miss the leg stump. No signal came from umpire. It's a leg by. Yes, thank you. So with that leg by, scoreboard moves on to 25 on the board without loss of any wicket. Certainly that ball is getting extra deviation, and rightly so, umpire Harish Padil. That ball certainly going to miss the leg stump because of extra deviation, extra turn, which is Akeem is ball. Now it's going to be a great contest between these two. Akeem to ball to Ravi, right arm over the wicket. This time Ravi lofted, and he got the distance. He won that ball. I want to tell you, this is not a convincing cricketing stroke. This is not a convincing cricketing stroke, I want to say, because there only the power which is taken that stroke. Otherwise, that ball came in the toe end of the bat. It's not the middle. But because of that, the batter has got a lot of power in the stroke, that ball went out of the park. Absolutely disappointment for the bowler, isn't it? I thought it might be a catch for the deep long off fielder, but ball went out of the park. 31 without loss of any wicket. Again driven. This time it's not really good timing in that aggression because of slow ball there from Akeem, and ball went towards a deep long on for a single. 32 on the board without loss of any wicket. Absolutely, they're cruising towards the victory. Unless any miracle bowling from the bowlers of KFC Kodikal. This time, Manjunath joining the party. I think so. One bounce into the fence for 4 runs. Now, after seeing Ravi is dominating, then Manjunath saying, what about me? What about me? I want to join the party as well. And he picked up a boundary for that. 36 on the board without loss of any wicket. So, slower one. He can left the ball, then it's going to be a wide, but he wanted to reach that one. Lucky escape here for Akeem, because if he middle that one, definitely that ball going to travel out of the park. But ball is got a leading edge and landed safely between the fielders. One more single is added total. This time, Ravi is hitting that one out of the park for a big egg. When Ravi Salyan is in arc, ball will go on to disappear out of the park. This is not a kind of line you need to bowl to the Ravi, isn't it? The one who hitting the good deliveries into the fence, then no way to missing that loose deliveries to dispatch that one. 43 in just 3 overs. Absolutely, it's astonishing batting performance here from the batter Ravi. Out of 43, he himself scored 34 runs. That shows how he's dominated. He played some enterprising cricketing strokes, isn't it? He's got some entertainment, even though the viewers, the spectators, those who came in a big number in the usage cricket. We can see that now slowly the ground is covered with a good number of crowds, and more than the crowds which are watching here in cricket ground, and more than that, I think in YouTube channel 10 Media, the viewers really enjoying the game of cricket with a big number. They know this is a final day, and seeded teams which is taking part in this cricket tournament, they will going to get some entertainment. And Ravi Salyan is giving that entertainment for everyone. Now I request for the second match, the team needs, please get ready for the second match. NM Mangalore versus Gori Young Boys. So one more big match coming up.
Starts with a slower one there from Chetan, but not well directed. Ball is going far outside the run of off tempo, and one more addition to total score. Number moves on to 44 without loss of any wicket in the over. Number 4 is in progress. Chetan bows. This time again Manjunath wanted to dry the ball, wanted to square drive that one, but ball which is in the area where it is very difficult to play that square cut, missed it completely. Slower one, pick that one beautifully, down to deep back square leg boundary for 4 runs. What a shot there from Manjunath. I think it's nothing less than the kind of cricketing stroke which is played by the Ravi Salyan. Slog sweep shot is more better than that. I will look at that one. Slower one, because it is much better because he's picked that one, and even the ball which is very slow, but he picked that slow one very well to get the boundary. Driven that one down to mid-on, going for the single, direct hit, and is gone. Izaz at last managed to produce the breakthrough in the form of run out. As Manjunath is fighting himself is short of his crease, but I think he's did a great job. Because he's playing a very good supporting role in the other end. Even though he got 11 runs from his bat, but he's responsible for a partnership of 48 runs, one of the highest partnership which is recorded in this Sauhardha Trophy 2023. Just 4 runs required for the victory. Ravi has got an opportunity to finish the match in a style. Now he's going for the slog reverse stroke, but missed it completely. And Chetan back to his bowling mark. Right arm over the wicket, delivers slower one. This time very good slow one there from Chetan. This time unnecessary, isn't it? That shows the body language of the opposition, how much they frustrated, because they thought that it might the game in their hand after they're getting a 51 runs. It's going to be a good score in this condition, but the batter like Ravi, if his opposition in the department, the batting department, the opposition, then it's very difficult to tell how many runs is going to be enough to depend. Chetan completes over number 4, his second and fourth over, and after completion of 4 over, chasing 52 to win this match. KCC are Kadri are 49 for the loss of 1 wicket. Ravi is batting on 34. And now it's going to be just a no ball umpire, going to be a free delivery. The 34 is the highest individual score in the tournament. Rashid Baba has got a 33 so far in this tournament. Now Ravi is breaking that record. He's got now 34, but still he need to wait to get the spinning run for his team. He just bounce. Just extra bounce ball which came along the carpet when Ravi went for the big drive, missed it completely. And there is no chance at all for any run. Right arm over the wicket. This time reaching for the delivery. Now he's away from the strike. That means the winning runs. Definitely the captain will going to get the opportunity to get the winning run. Certainly needed to be the captain to finish that one. 51 on the board. And now the bowler is not giving the opportunity to finish the match from the bat, but he's conceded a wide. That's it. KCCR Kadri registering their absolutely and comprehensive victory, isn't it? They're not really feeling any pressure at all to get that 52 runs. Everyone thought that the game will going to be one of the most thrilling game for the first match of the day number final, but unfortunately there's a match which is ended in a one side. But that's only because of the man who is leading from the front, score dominating and absolutely astonishing batting performance from Ravi Salyan once again. Remains unbeaten by scoring 35 runs. And have a look at the scoreboard in the big screen. This is the first match result we can see here. That the first wicket partnership of 48 runs. That's a definite difference we can see in just 20 balls. Now it's the time for announcement of the man of the match.
So thank you very much. Now it's the time for the announcement of the man of the match of the first match. It's one and only man who has dominated from the bat, scoring an unbeaten 34 runs. And once again, it's Ravi Salyan Padayuru of KCCR Kad registered, who is judged as the man of the match for his astonishing batting performance. Absolutely played some enterprising cricketing stroke and got some entertainment for the spectators. And Naushad of Gori Young Boys will going to present the man of the match award for Ravi Salyan. May I request Ravi to come and collect your man of the match award. At the same time, the cameraman to please collect at now here is yes, absolutely, Ravi Salyan is collecting the man of the match award from Naushad for his fantastic batting performance. Hope he will going to carry his business in remaining matches. And thank you very much, Naushad. And that's it from the presentation ceremony. We are going into the match number 2 of the day number final. And one more big match. The top seeded teams, NM Cricketers Mangalore takes on Gori Young Boys. It's going to be one more good match in front of spectators out here in the UCG Cricket Ground. And those are watching live telecast of this cricket tournament through 10 Media. Definitely, it's going to be one more good match. And we'll take a short break here. And after a short break, and my friend Mr. Gopi will going to have a mic in our national language in the thank you. Thanks a lot. Dhanyavad Satish. So one more good match is now coming up. NM Mangalore will take Gori Young Boys. In the first match, KCCR registered a comprehensive victory against one of the favorites of this tournament, KFC Kodikal, defeated with more than 3 hours to spare. And thanks to the fantastic knock of Ravi Salyan Padayuru, who scored 35 runs unbeaten in just 20 deliveries. And with this fantastic knock, because of his fantastic knock, they registered a comprehensive victory and through to the next round of this tournament. Next match, the match is now going to start. One more big match is now coming up. And then Mangalore will take over Gori Young Boys. And we are just waiting for the first ball of the match. And the openers, आरंभिक दोनों बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद
तौफीक इस वक्त जो कि सामना करने के लिए तैयार और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट की दिशा में, गेंद जाते हुए लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर, और जब तक गेंद को डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर फील्ड करे बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और तीसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त उछाला था, बैकफुट पर जाने के बाद पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और आखिरकार 3 रन बल्लेबाज बटोरने में सफल, और इन 3 रनों के साथ स्कोर इस वक्त शुरू हो चुका है 3 रन बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एनएम मैंगलोर को एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है। तो जहां तक गोरी अंगबाज का सवाल है, उन्हें भी एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त जरूरत है गेंदबाजी में, और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट फयाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस वक्त इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल फील्डर आफ्टर इट, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर। तो दर्शक धीरे धीरे मैदान पर इस वक्त जमा होते हुए, और वो जानते हैं आज जो कि टॉप सीडेड टीम्स के मैचेस खेले जाएंगे तो एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा, तो इस वजह से उनकी संख्या इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर वृद्धि होती नजर आती हुई। और इस बीच गेंदबाज की गेंद इस बार अपना बैलेंस खो बैठे, गिर पड़े इस वक्त फयाज, गेंद को फेंकते हैं लेकिन ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी थी, दिशाहीन गेंद, और आखिरकार वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रन। देखिए किस तरीके से यहाँ पर गेंदबाज गिर पड़े थे, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए आजीम इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक तौफीक का सामना करने के लिए तैयार, और अपनी अगली गेंद लेकर फयाज की गेंद इस बार इस गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, विकेट उखाड़े गए गेंदबाज द्वारा, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे, देखिए किस तरीके से गेंद को खेला था, मिड ऑफ पर तेजी के साथ गेंद पर लप के जरूर फील्डर थ्रो किया, विकेट कीपर माफ कीजिए गेंदबाज के हाथों में गेंद पहुंची, लेकिन जब तक गेंदबाज थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेट चटकाए, बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके थे, बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर। और गोरी यंग बॉयज के गेंदबाज फयाज इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, करना के हाथों में गेंद, थ्रो पहुंचा, ओह दैट इज एन सर्टेन मिस, दैट इज ओह इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड रन फॉर that is an absolutely disaster there at the non-striker end, if the bowler cleanly collected the ball at the last moment, लेकिन गेंद उनके हाथों से चूकी, और जब गेंदबाज के हाथों में थ्रो पहुंचा तो बल्लेबाज कोसों दूर थे, देखिए हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, करना गेंद तक तेजी के साथ पहुंचे, थ्रो किया उन्होंने गेंद को, और गेंद देखिए एब्सोल्युटली दैट वाज एन रन आउट, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को थ्रो को रिसीव नहीं कर पाया इस वक्त फयाज, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, बाल इस गेंद पर बचते हुए, और जहां तक सवाल है स्कोर का तो 8 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है। गेंदबाज फयाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त अजीम सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद दिस टाइम इज गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, the ball came along the ground at the last moment, just wanted to swing it away on the onside, लेकिन गेंद इतनी तेजी के साथ रफ्तार को वृद्धि करते हुए निकले कि बल्लेबाज इस गेंद पर कुछ नहीं कर पाए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, और अपना जश्न इस वक्त बनाया गेंदबाज ने अपने हाथ को हवा में लहराने के बाद उछलते हुए, और इस बेहतरीन गेंद की बदौलत फयाज यहां पर विकेट प्राप्त कर चुका है, पहला विकेट गिर चुका है आजीम के रूप में, 8 रनों पर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त एनएम मैंगलोर। और जहां तक एनएम मैंगलोर का सवाल है, इस सीजन में इस ऋतु में बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा है, कई ट्रॉफी उन्होंने अर्जित किए हैं, और निस्संदेह उस सफलता के सिलसिले को भी यहाँ पर वो इस श्रृंखला में आगे बढ़ाना चाहेंगे। और जहाँ तक गोरी अंगबाज का सवाल है, इस ऋतु में उनका कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन उनके पास उनके खिलाड़ियों के पास ये क्षमता, ये एबिलिटी जरूर मौजूद है, अगर वो अपना सही लय रिदम प्राप्त कर ले तो निस्संदेह सामने वाले टीम के ऊपर उनके खिलाड़ी भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं, और यहाँ पर उन्हें चाहिए एक कमबैक की इस मैच में। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज एक और बेहतर बल्लेबाज, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, आसिफ अड्डूर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल,
और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार फयाज की गेंद का। तो फयाज कुछ बातचीत करने के बाद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार आसिफ के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त इस बार रिवर्स शॉट के इम्प्रोवाइजेशन करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, लेकिन इससे पहले कि अभिलाष जो फील्डर थे गेंद को रोकने में सफल रहे, लेकिन एक रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। तो अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त 9 रन एक विकेट के नुकसान पर, एक विकेट खोने के बावजूद इस वक्त मैंगलोर यहाँ पर जोड़ चुका है और 7 ओवर का खेल बाकी है इस वक्त। तो देखना है कि इन बचे हुए 7 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। अभी भी बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है। कुल मिलाकर शनिवार की ये सुबह और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर क्रिकेट, एक रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। तो इस मैच के बाद अगला मैच खेला जाएगा केसीसीआर कद्री और मंगला देवी क्रिकेटर्स के बीच में। तो जहाँ तक सवाल है दोनों टीमों का, तो मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीमों के अगले मैच के दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज नौफल इस वक्त तैयार और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए आसिफ अड्डूर। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ दाहिने हाथों पर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद और स्टार्ट्स ऑफ द वाइड। नौफल का जहाँ तक सवाल है एक बेहतर गेंदबाजी के रूप में जाने जाते हैं गोरी बॉयज की ओर से, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की है वाइड के साथ और देखना है कि अपने सही रिदम सही लाइन को किस तरह वो इस ओवर में प्राप्त करते हैं। दाहिना तो ऊपर विकेट ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लोगों पर गेंद जाती हुई इस वक्त एक रन मिलेगा। बेहतर फील्डिंग बेहतर रिटर्न, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। गेंद इस वक्त निकले थे मिड ऑफ फील्डर की बाईं ओर से और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑफ पर पीछे की ओर दौड़ लगाते हुए बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। बेहतर रिटर्न यहां पर करते हुए फील्डर अंडर आर्म थ्रो इस वक्त बैक हैंड थ्रो और सीधे गेंद पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में चंद टिप्पों बाद स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौफल दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड एंड दिस टाइम इट माइट बीन कसल ऑफ जस्टिस आर डिफेंस। गुड पीस ऑफ वर्क, इन फैक्ट दिस कुड बी ट्रबल, दिस कुड बी इन ट्रबल, जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब गेंदबाज के हाथों में गेंद पहुंची थी और गेंदबाज ने विकेटों पर गेंद को लगाया था तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इस वक्त गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर बेहतर फील्डिंग था वहां पर फील्डर द्वारा थ्रो पहुंचा और यहां पर थ्रो पहुंच चुका है और यहां पर विकेट उड़ाए जा चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं या नहीं। तो 11 रन एक विकेट के नुकसान पर ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो इस वक्त 11 रन एक विकेट के नुकसान पर तो दूसरा ओवर इस वक्त जारी है और तृतीय अंपायर इस वक्त यहां पर उसका मुआयना करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो बेहतर मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है एनएम मैंगलोर और गोरी बॉयज के बीच में। दोनों संतुलित टीम है और निस्संदेह इस मैच में वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो कि देना चाहेंगी। और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर एनएम मैंगलोर की पारी का दूसरा ओवर यहाँ पर खेला जाता हुआ
नॉट आउट इज द कॉल एंड द बैट्समैन सर्वाइव्ड। तो दो यहाँ पर रन से पूरे हो चुके हैं और जब विकेट कीपर ने माफ कीजिए गेंदबाज ने थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेटों पर गेंद को थ्रो किया था, विकेट पर गेंद टकराई थी, तो तब बल्लेबाज अपना क्रीज बल्ले पर क्रीज पर बल्ला जो कि यहाँ पर रख चुके थे, हालांकि क्रॉस हो चुका था क्रीज से आगे उनका बल्ला, और इस बीच इस गेंद पर बच चुके हैं, अगली गेंद के लिए तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार पैरापाटी गेंद टकराई, प्लम इन फ्रंट, वन मोर विकेट फॉलन, मच स्ट्रेटर लाइन फ्रॉम नौफल, ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन। तौफीक की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, गेंद उनके बैक लेग पर टकराई, लाइन पर गेंद टिप्पा खाते हुए, और यहां पर अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो तौफीक का विकेट गिर चुका है, तो दो विकेट कमंत्राल में गिरने के बाद इस वक्त एक मौका जरूर है गेंदबाजों को बाउंस बैक करने का। गोरी अंगवाज के यहाँ पर एक या दो विकेट और गिरते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर एनएम मैंगलोर खतरे में आ सकता है। तो यहाँ पर अब सरप्राइजिंगली इस वक्त मंसूर जो कि आमतौर पर आरंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरते हैं, यहाँ पर उन्हें उतारा गया है नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से, और देखना यह है कि जो यहाँ पर उन्हें निचले क्रमांक पर उतारा गया है उसका फायदा वो किस तरह यहाँ पर उठाते हैं। तो गेंदबाज नौफल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंसूर के लिए पहली गेंद लेकर तैयार, या इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेला था। इस वक्त अंतिम क्षण में बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी और बैक टू द बॉलर की दिशा में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं भरा, और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार एक बार फिर से गेंद को ड्राइव कर दिया बैक टू द बॉलर की दिशा में। दो बहुत बेहतर गेंदें इस वक्त नौफल इस वक्त फेंक चुके हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर दबाव कुछ हद तक बल्लेबाज के ऊपर दिखाई देता हुआ, और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है नौफल का, और सिर्फ 4 रन इस ओवर में अब तक उन्होंने प्रदान किए। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, नौफल दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद मंसूर के लिए ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त खेला था स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर ड्राइव के जरिए, और एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि उन्होंने कोशिश जरूर की, देखिए किस तरीके से हुआ था, लेकिन जीत और कोशिश करने के बावजूद गेंद को रोक नहीं पाए, और कोई डीप पर फील्डर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद नहीं, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक, पहले ओवर में 9 रन बने, दूसरे ओवर में 8 रन बने, 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट in the open number after the completion of 2 overs in fact। तो 10 मीडिया पर इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का शानदार तरीके से इस वक्त सीधा प्रसारण किया जा रहा है YouTube पर, और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि देश विदेशों में इस श्रृंखला का हजारों दर्शक इस वक्त मुआयना करते हुए, और यहाँ पर जहाँ तक इस मैदान का सवाल है, उर्वा क्रिकेट मैदान पर देखिए किस तरीके से दर्शकों की संख्या इस वक्त वृद्धि होती हुई बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ सुबह के लगभग 12 बजते हुए 11:55 यहाँ पर बच चुके हैं, और यहाँ पर मुकाबला जारी है इस श्रृंखला के तीसरे और अंतिम दिन के दूसरे मैच में गोरी यंग बॉयज और एनएम मैंगलोर के बीच है। दोनों संतुलित टीमें मंगलूर के इस वक्त भिड़ रही हैं, और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी सौंपी गई है गेंदबाज साहिल, जो कि इस वक्त एक नया ओवर प्रारंभ करते हुए क्रीज पर मौजूद आसिफ अड्डूर और मंसूर जो कि क्रीज पर मौजूद। आमतौर पर ये दोनों बल्लेबाज आरंभिक बल्लेबाज के रूप में उतरा करते हैं एनएम मैंगलोर के लिए, लेकिन यहाँ पर आसिफ अड्डूर आए थे नंबर 3 क्रमांक पर, जबकि मंसूर उतर चुके हैं नंबर 4 स्पॉट पर, और देखना यह है कि ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके की साझेदारी यहाँ पर निभाते हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को हल्के से टैप करना चाहता, रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेलना चाहता ऑफ साइड पर रन लेने के लिए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की धीमेपन को समझ नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर,
ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा इस बीच और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज साहिल एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को पैनल स्वीप कर दिया। गेंद पहुंची इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। जहां तक सवाल है गोरी यंग बॉयज के गेंदबाजी का तो कम से कम 50 रनों के अंदर उन्हें रोक कर रखना होगा एनएम बेंगलुरु के बल्लेबाजों को, तब जाकर लक्ष्य कुछ हद तक उनके लिए आसान हो सकता है क्योंकि एनएम बेंगलुरु के पास जो सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है उसके खिलाफ बल्लेबाजी करना है। तो इस बार गेंद हवा में लेकिन फील्डर थोड़े से सीधे तैनात अभिलाष पॉइंट पर और 1 रन का इजाफा। जैसा कि मैं फरमा रहा था क्योंकि एनएम बेंगलुरु के पास जो सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है उसके खिलाफ बल्लेबाजी करनी है तो उनके गेंदबाजों को पहले कम से कम रन यहाँ पर प्रदान करने होंगे, बल्लेबाजों को किफ़ायती गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, केम अलोंग द ग्राउंड and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज साहिल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 4 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार था इन्हें तो ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, one more good delivery, slight bit of a leg cutter and just went wide of the batsman at the last moment and it went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run। और फिर से एक बार साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा विकेट कीपर, चूके रन मिलेगा जरूर, शॉट थर्ड बार फील्डर के हाथों से गेंद चूक चुके, वाइड का इशारा तो ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकली थी। 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। न सिर्फ विकेट कीपर चूके बल्कि शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर भी चूके और इस चूक के बदौलत बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ भी बदल चुके और वाइड का रन भी उन्हें मिल चुका है। 22 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और अभी भी इस ओवर में 1 रन 1 गेंद बाकी साहिल की और साहिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए मंसूर के लिए ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, परफेक्ट लेग कटर टू एंड द ओवर एंड अ गुड ओवर इन Gori young boys point of view came to an end. First good over in Gori young boys point of view came to an end. 5 runs came from this over from Sahil. 3 overs gone and after 3 overs NM Bangalore are 22 for the loss of 2 wickets. And just talking about this tournament, Sauhardha Trophy 2023 which proudly organized in the memory of late Suresh B and Gori young boys Pandeshwara Bangalore और निश्चित रूप से जनाब अल्फाज इनके सारथ्य में इस श्रृंखला का आयोजन किया गया दिवंगत सुरेश बीएन इनके मधुर याद में और विशेष अभिवादन इस श्रृंखला के संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से हम करते हैं। जनाब अबू बकर आशिक पार्टनर स्प्रिट सैलून एक्जिम लाइन यूएई और जनाब मुदस्सर कुर्ग न्यूक्लियस एग्जीबिशन दुबई यूएई जिन्होंने इस श्रृंखला की सफलता के लिए अपना बेहतरीन योगदान दिया है। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का तो एक प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट, प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला सौहार्दा ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नौफल अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार और आसिफ इस वक्त सामना करते हुए, मंसूर और आसिफ इस वक्त क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हुए और नौफल पहली गेंद लेकर तैयार। आसिफ के लिए गेंद को ड्राइव किया मंसूर थोड़े से आगे और इस बार मिस फील्डर रन के लिए दौड़ पड़े स्ट्राइक करंट पर थ्रो अगर करते तो शायद मंसूर के लिए खतरा पैदा हो सकता था लेकिन फील्डर ने थ्रो किया नॉन स्ट्राइक रन पर और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए काफी हद तक राहत इस वक्त दिला रही है दर्शकों को और खिलाड़ियों को इस गर्मी से और यहाँ पर गेंदबाज नौफल अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद मंसूर के लिए लेग स्टंप से बाहर स्पेक्ट्रा वाइड, आसिफ काफी आगे निकल आए थे लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद पहुंच चुकी है शॉर्ट फाइल लेग फील्डर रियाज के हाथों में। ये अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया, वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मिनट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक।
शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 25 रन। 2 विकेट गिरने के बावजूद रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए एनएम मैंगलोर के लिए बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त एनएम मैंगलोर अग्रसर होता हुआ कम बैक करना है इस वक्त गोरी अंगबाज को। तो निस्संदेह उन्हें इस वक्त एक घातक गेंदबाजी यहां पर करनी होगी। दाहिने हाथ ओवर द विकेट स्विंग्स एंड दिस टाइम टेकन इनसाइड डिफेंस, परफेक्टली टेकन बाय अंसार जो फील्डर था डीप बैक स्क्वायर लेग पर। एक वक्त लगा कि वो कैच छोड़ देंगे, देखिए किस तरीके से इस वक्त लपका था। मैं समझता कुछ हद तक मिस जजमेंट उन्होंने किया था, आगे की ओर दौड़ कर आए लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलने वाली है अपने ऊपर की ओर छलांग लगाई और आखिरकार दोनों हाथों से गेंद को दबोचने में सफल। तो विकेट यहां पर गिर चुका है आसिफ का। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से टॉप एज पर गेंद टकराई थी। अंसार काफी आगे निकल आए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलने ही वाली थी तो अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को लपका और आखिरकार ये विकेट आसिफ का गिर चुका है। 25 for 3, 4th ओवर इन प्रोग्रेस और आसिफ का विकेट गिर जाने के बाद एक और प्रमुख बल्लेबाज का आगमन होता हुआ आतिफ इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे नौफल की। जहां तक नौफल का सवाल है इस ओवर में काफी गेंदें उन्होंने फेंकी है, लगभग 2 या 3 वाइड उन्होंने प्रदान किए हैं अपनी सही लेंथ और लाइन को अभी भी तराशते हुए। सिर्फ 3 गेंदें अब तक इस ओवर में वो फेंक चुके हैं और देखना यह है कि इस वक्त आतिफ के लिए वो किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर था विकेट। गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज आतिफ इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। नौफल की गेंदों का ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए और यहाँ पर 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदलते हुए। तो जहाँ तक सवाल है कि साझेदारी का, तो आसिफ का विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त दिखाई देता हुआ एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों के ऊपर एक साझेदारी एक पार्टनरशिप की इस वक्त उन्हें सख्त जरूरत अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ना है तो। और ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, जगह नहीं बना पाए, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद बेहतर गेंद थी नौफल के, बिल्कुल जमीन के सहारे आई थी और आखिरकार इस गेंद पर ठीक तरह से स्ट्रोक्स खेलने में असफल मंसूर। और नौफल एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया एंड जस्ट ओवर द लास्ट हेड, दिस टाइम इज गॉट हैंड ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। और ये कैच लपक सकते थे लेकिन लेट मूवमेंट जिसे कहते हैं, यहाँ पर जब तक वो उछलकर गेंद की लाइन पर अपने हाथ दोनों हाथों को लाए, गेंद उनके हाथों को चीरती हुई सीधे निकल चुकी थी कवर पॉइंट पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से उछाला था, अगर थोड़े से लंबे होते तो शायद गेंद को लपक सकते थे लेकिन शायद अभिलाष कुछ हद तक थोड़े से छोटे खिलाड़ी तो इस वजह से गेंद उनके पहुंच से बाहर निकलते हुए ऊपर उनके सिर के निकलते हुए और इस पर 2 रनों का इजाफा, 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है तो 4 ओवर के खेल बाकी, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द रिमेनिंग 4 ओवर्स। तो आइए सतीश आपको बुलाते हैं। इस ओवर में कुल मिलाकर रन्स बने 7, 8, 5 और इस ओवर में 6 रन बने कुल मिलाकर 28, 3 विकेट के नुकसान पर। तो द इक्वल बैटल इज नॉट कंटिन्यूइंग, 4 ओवर्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स। मैं समझता हूं अगर गोरी बॉयज को एनएम मैंगलोर को अगर रोक कर रखना है तो कम से कम 50 रनों के अंदर रोक कर रखना होगा, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका। एनएम के पास सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है और उसके खिलाफ बल्लेबाजी करना है तो विशेष रणनीति के साथ बल्लेबाजी करने को, लेकिन उससे पहले उनके गेंदबाजों को इस वक्त एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देना होगा एनएम मैंगलोर को कम से कम स्कोर पर रोक कर रखने के लिए। Well, thank you very much, Gopi. So, the first ball of the over number 5, nice, delicately plays it down to deep third man region, just opening the face of the bat. Captain of the side, Atif, running it down to third man region for a single. With a single, score moves on to 29 for the loss of 3 wickets. Sahil brought into attack, one more very talented bowler for the side of Gori and Voice, and now we'll go into ball a second delivery of the over to Mansoor. Experienced campaigner Mansoor will go into face this time. What a delivery, that was a fantastic stop, and umpire saying that the bowler coming right in front of umpire, otherwise it's going to be very close indeed. Umpire just warning
Just getting a warning to the bowler. Otherwise, I think Mansur is so lucky in that occasion. Absolutely, that ball pitched in a line. The batter slightly across the line wanted to hit the ball, missed it completely. But umpire, of course, the bowler is just coming right in front of umpire in a protected zone, and that's a big problem for some bowlers. They are really missing the wickets because of their mistake. Again, nicely driven down to a wide-ish, wide off. That middle fielder going to be boundary. I think there is a fielder in the long off which is not in orthodox. Never looks like going to be at a boundary. Just defeat that mid-off-fielder. But I want to see where the fielder is in the long off. I think is not in the right position. Is not standing in the deep. This is a really big problem. He fails to chase that one. And by knowingly, I think Atif drives the ball into that area. And you got the boundary for that. Good placement. 34 for the loss of 3 wicket. Sahil again. Away upon, zips that one in the air, but safely plays it down to head of that cover point region. Abhilash chasing the ball. He will going to get there, but before the throw coming from the deep, they're turning out for the third. And he won the wide throw. Can you believe this? 4 runs has been taken. Young Gori, young boys, absolutely their fielding is not really up to the mark. So far in the ball first itself, I think the fielders of Gori young boys, they're really not fielding as per the reputation what they got. When you're playing against the big team like NM Cricketers Mangalore, I think this is not a quality of fielding we're expecting from Gori young boys. Absolutely, they're missing so many opportunities. Without crossing a boundary, opposition team getting a boundary means that shows that there was a lack of good fielding here from Gori young boys. Again outside the line of off stump, wicketkeeper again fails to collect the ball. Again he misses the stump. 1 + 1, 2 more to the total. The rightly said my friend Gopi is mentioned earlier when he's hand over the microphone to me. He said absolutely right that if Gori young boys fails to restrict under 50 NM Cricketers Mangalore, then Gori young boys have to pay the penalty for that, because NM Cricketers Mangalore has got some good bowling department. But so far they wanted to get more than that. The 40 already won the board. No, they lost 3 wickets. Sahil. This time, what a shot that by Mansur. Typical Mansur switch it. This is a typical Mansur switch it, and more than that switch it, which is played very well. I think the bowler helping that to get that switch it because of that juicy full toss. Absolutely, just like a left-handed batsman hitting that juicy full toss. He's such a good striker of the ball as far as switch it is concerned. Mansur, no way to miss the opportunity to get the boundary. So with that boundary score, moves on to 44 for the loss of 3 wickets. Sahil again, away from us. Pass umpire Roland Pinto. Balls wanted, he wanted to repeat that one. This ball is in there. Abhilash underneath it. And he takes the catch comfortable in the end. That might be a too late. Because there's so many opportunities which is missed out by Gori young boys. But last they got a breakthrough because of Mansur tried to repeat the stroke in that occasion. But Sahil is bowled a good line. He's just bowled outside the line of slight a bit of leg stump, outside the line of leg stump, so that Mansur has got no position to play the switch it, and he just pays the penalty for that. 44 for the loss of 4 wickets. So new batsman in is one more very dangerous batsman as far as the middle order is concerned. One of the best finisher of the match as far as under-arm cricket is concerned. Azhar is walking towards the middle. But I think he's got some overs to spare. Just a 5 gone, 3 to go. That means it's always going to be a testing time for the bowlers of Gori young boys. So how to restrict the runs from NM Cricketers Mangalore? Still there are 3 overs remaining. The huge score, 44 on the board. But I'm not saying that it's going to be a very difficult to predict over how many runs going to be enough. Only seeing the result of the previous match when 52 which is scored in just 4.2 deliveries. But it's not always happening in cricket, isn't it? It's only happening when the batsmen like Ravi Padayuru, the domination is so important when you're chasing a huge total.
And that's why it's so important here for Gori young boys that they need to bowl three good overs. They need to bowl 3 good overs if they want to restrict the runs of NM Cricketers Bangalore. Ansar brought into attack. Delicately played. Delicately reverse sweeping that one. And they got a fielder for that reverse sweep down to deep third man Sahil. And before the throw coming from the deep, ample time for the batter to complete the single. It's 45 for the loss of 4 wicket. So current run rate is looking so good in that aggregation for NM Cricketers Bangalore. The present position is showing 8.71 runs per over. Azhar to strike. First ball, nicely driven right into the line of the ball, and technically plays it down to deep long of region for a easy single. With that single, Sauhardha moves on to 46 for the loss of 4 wicket. Absolutely, it's a good number of good number of crowds enjoying the game of cricket in this Saturday, the last day of the week, and outside the line of flag stamp going to be a punishable from the umpire, a white call by umpire, so that with that extra Sauhardha moves on to 47 for the loss of 4 wicket. Along with the runs which he scores from the bat, I think a big contribution from extras from Gori young boys. This time, nicely swept that one right in the gap. They're running hard. Atif definitely coming back for the couple of runs. He know exactly, plays it quite nicely in the gap, so that he completed very fast and very quickly. So that's so easy for him to come back for the second, and ample time for Atif to complete that couple of runs. Delicately played once again, Atif. Sauhardha moves on to 49 for the loss of 4 wicket in over number 6 is in progress. Sauhardha Trophy 2023 progressing very well. This time loose stroke play there by Atif. Absolutely never looks like he's going to be very much control over that shot. Might be the two-minded cricketing stroke. Half a stroke, half a push. Pays the penalty. Abhilash takes his second catch at cow point region. Straightforward catch. But after taking it, we can see that the frustration from Abhilash. He knows that it's too late. They missed so many opportunities. But I think the cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. But for that, I think it's a bounce back is very very important. And feeling with your strength is so important. Believing with your strength is so important. And after the getting a wicket of Atif, I think the Gori young boys certainly looking to restrict the runs of their opposition. If they're able to restrict NM Cricketers Bangalore under 60, then absolutely the opportunity for Gori young boys if they bat well. Only if they bat well. And wait and see. There are still 2 plus over runs, 2 plus over which is remaining. But NM Cricketers knows that they're in a good position of getting more than that. Answer balls, and the new batter Riaz, he's just got a single there by placing the ball down to backward point region. With a single, 50 comes up. 50 comes up here for NM Cricketers Bangalore in a very quick time. They got in a 5.5 overs. They got a 50, and they're really looking in a commanding position. They can get more than 70 if they bat well. And here is Ansar, a ball from the far end. Right arm over the wicket to Azhar. Delicately reverse sweeping that one, but only single in the negation. Fielder is so quick. This is the kind of commitment which is required from the fielder. And just a single. So after completion of over number 6, and NM Cricketers Bangalore are looking in absolutely in a perfect controlled position. 51 for the loss of 5 wicket. 2 overs remaining. 12 balls remaining excluding wides and no balls. And in that 12 balls, if they are able to get at least 15 or 17 runs, they came very close to the 70 runs. Once it's going to be close to the 70, it's going to be psychological advantages for depending team. But psychological disadvantages for chasing team, because the run rate required is always going to be a big ask, and more than 9 runs per over might be a trouble for Gori young boys. Wait and see. So over number 7 will going to start from the commentary box end, and Fayaz is been introduced. Fayaz, absolutely very good talented bowler, no doubt at all as far as in the bowling department of Gori young boys.
you can pick one good bowler. If you want to pick one good bowler, you can easily pick Payaz. He's a good bowler because he's always bowling in the power play overs and even in the slog over. He's bowling his first over in the power play and he's bowling his second over in the slog overs. Very difficult condition he's bowling because both conditions, the batsmen are always looking for the big shots. This time, lovely delivery. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. The condition where he's bowling is not so easy, but he's got a potential of even testing the temperament of any good batters. And Azhar wanted to get that one very fine in the occasion. He's a clever cricketer, Azhar. He knows that he's bowling with a pace, so that he wanted a gentle direction he wanted to give down the third man so that he can get the boundary. But he missed it completely in that occasion. Again, Fayaz away from us. Right above the wicket. This is the one more opportunity. The wicketkeeper behind the stump, not really up to the mark. By call by umpire. Karna is not really collecting the ball neatly now. Umpire just showing their wrist watch, saying that the fielding team they crossed their time limits. That is a stipulated time which is given for the fielding team, which is they failed to complete their 8 overs quota, so that it's going to be, I think it's too early, because still they need to bowl another 10 deliveries. Then they can there will be an opportunity which is created to bring one more fielder inside the ring. Now 5 fielders inside the ring, only 4 outside the ring. An opportunity was created for the batter to get some placement easily. 52 for the loss of 5 wickets. Fayaz to Riaz. Riaz rise that one down to long on. That's what I'm talking about. Whenever one fielder inside the ring, then it's the opportunity always there for the batters to get some placement, convert that single into twos. This is always going to be a big problem when you are not really able to bowl your 8 overs in a time. Then the penalty is always going to be a huge one in this condition. 54 for the loss of 5 wicket. Fayaz again. This what a shot! Clean it! As clean as a whistle. And oh my goodness, Nandan Kulshekar is drops the catch. Maybe he's afraid of taking a catch. He might be fell down from the commentary box. That's why he's not tried. Oh my God! Have a look at it on a replay. And the cameraman almost tried his level best to get that absolutely fantastic pick. What a great shot there from Riaz. Absolutely glorious shot. Clean it. Again, he wanted to repeat that one outside the line of off stump. Payaz just learning from the mistake. The needed to be, you can't bowl that in the slot. If you bowl to the slot, the batter like Riaz certainly will going to get that one out of the park. And that's why he's bowled outside the line of off stump, rightly so. One more good delivery. One more. Oh! Absolutely lucky boundary. The runs which is coming as like a fast flowing waters of the rivers. 64 for the loss of 5 wicket. Everything is going in favor of NM, but everything is going wrong for Gori young boys. .64 for the loss of 5 wickets, and 7 overs completed, and run rate we can see here 9.14 runs per over. It is absolutely danger sign for Gori young boys. That's they need to climb the mountain of runs. If it is a 70 plus runs on the board, the last over is in progress. 64 on the board. Riaz got 13 valuable runs in just 5 deliveries. He's got absolutely acceleration in the previous over. One great shot which is played is, that was a straight drive, lofted straight drive, absolutely delightful cricketing stroke. This time Azhar rise, Azhar joining the party. No way, no way. Oh, now I think one dog which is almost just walking there in the ground, just inside the boundary line, ball just hitting that dog. That ball will going to pull that one inside the boundary line, but ball after hitting that dog, still that ball is traveled out of the ground. Have a look at it on a replay. Absolutely, ball is hitting the dog, but still ball is
got enough power to travel over the roof into the boundary for 4 runs. 68 for the loss of 5 wicket. Azhar joining the party. This time Azhar went for the reverse stroke and the fielder Abhilash just stopped the ball but fails to stop the single from this batter. 69 for the loss of 5 wicket. This is second the penalty which is given that one more fielder need to bring inside the ring. This is going to be a disaster. Absolutely disaster, isn't it? Now only 3 fielders outside the circle. Opportunity for the batter to get the boundary. Lovely change of line. Lovely change of line by Ansar, seeing that the Riaz is going for the expansive slog sweep shot, but he's just following the batsman bowled outside the line of leg stump, so that the batsman has no clue whatsoever to get that reverse stroke. But he just picked up a single for that. 70 comes up. That's what I'm talking about. The 70 is absolutely big score in this condition. Azhar, again Ansar bowls to Azhar. Azhar bowlers back dry, not quite getting that much of timing. Intention is to go over the top of the mid-on fielder. There is no long on because of that penalty. We can say there is no protection in front of the wicket. 71 for the loss of 5 wicket. Last 2 deliveries left. Amsar bowls to Riaz, going for the expansive drive, but Azhar already they came into the Saiga's end. He's not happy with his partner. He's not happy with the partners. Maybe Azhar wanted to tackle with the last delivery so that he can finish with the big shot. But Riaz is a kind of batter who can be he's also got the ability of getting a big shots. The previous over, he hit one magnificent stroke over the deep long on for a huge 6. So new batsman in is from the, of course, this came into middle, Ayaz. Again, just a single. Good bowling. They're coming back for the second, but just a suicider. And wicket which is fallen here. But I think the captain of NM Cricketers Mangalore must be pleased with the performance of their batter, because they scored a 71 huge score. 72 leaded correction. They scored a 72 and they set a target of 73 to win this match. Absolutely huge score on the board. And as far as the run rate is concerned, the goal almost it's over 9 runs per hour. So exact calculation is concerned 9.16 runs per hour. It's a net run rate, run rate of NM Cricketers Mangalore. But I think the danger of Gori young boys is that, and that's a cameraman is showing you that stroke which just came from the bat of Azhar. That ball hits the dog. 72 on the board. 73 is going to be a target, and it's going to be a huge one. But I think in cricket, there is nothing called can't, isn't it, Gopi? Everything can be possible. But I think if a Gori young boys wanted to win this bet, if he wanted to make that can't into can, they need to knock the tee from can't. Then you can, and that's what Gori young boys, the batsmen have to believe that. Of course, we are chasing a huge total, but believing in your strength is so important, isn't it? They got some good batters in the side. The batsman like the very destructive batsman like Deepak, the finisher like Karna. I request the volunteers to bring the water for umpires. I request the volunteers to bring the water to umpires. So that's I think yes, Gopi, welcome back. And compared to the previous match, with the 52 which is chased on by team KCCR Kadri quite easily in 4.3 deliveries. By seeing that performance, Gopi, this 72 is not a big total. But problem here is who will going to play the role of Ravi Sali and Paddayuru. That's a big problem here. One of the batsmen of Gori young boys have to play the same role. But I think Gopi, they got some good batsmen. No doubt at all. They got Deepak is a very dangerous, very destructive batsman. Naufal, absolutely. The Riaz is a one. And they got one finisher like Karna and Naufal, and I think they got a big names, but converting that big names into performance is going to be a big challenge here. And we didn't see, but another factor in this match is that Gopi, against
fantastic bowling department. They have to get that the 73 runs. That's why going to be a big factor in this match, Gopi. But cricket is, everybody knows, is a game of glorious uncertainty. Wait and see how uncertainty will going to happen in this match. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा इस वक्त निस्संदेह पिछले मैच में 52 रनों का पीछा केसीसीआर कदरी ने किया था जरूर, लेकिन रवि सालियन पंड्या ने एक बेहतरीन पारी खेली थी। लेकिन यहाँ पर 73 रन जहाँ के बनाने हैं। और जहाँ तक सवाल है सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, उन्हें इस वक्त उनके पास बल्लेबाज ऐसे मौजूद हैं, शक्तिशाली बल्लेबाज, दो एक बार अपना सही रिदम लय प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उन्हें इस वक्त 73 रन बनाने हैं अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ एनएम मैंगलोर। और एनएम मैंगलोर के गेंदबाजी का डिपार्टमेंट काफ़ी शक्तिशाली है, और उस शक्तिशाली गेंदबाजी के डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर बल्लेबाजी करनी है, 73 रनों के लंबे से लक्ष्य का पीछा करना है 8 ओवर में, तो निस्संदेह यहाँ पर गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों को कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग, असामान्य बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहना नामुमकिन है जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जाए। क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन सब है, लेकिन यहाँ पर प्रयत्न की ज़रूरत है, बेहतर प्रयत्न की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखते हैं गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाज किस तरह की रणनीति टैक्टिक्स अपनाते हैं इस वक्त एनएम के शक्तिशाली गेंदबाजी के लाइनअप के खिलाफ बल्लेबाजी करने में। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई, और गेंदबाज मुजीब गेंदबाजी इस वक्त तैयार करने के लिए, रियाज के लिए पहली गेंद लेकर तैयार था। तो ओवर द विकेट रियाज के लिए गेंद इस वक्त पैरों पर टकराई, लगभग शायद गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाते हुए, और काफी जोरदार अपील, लेकिन इस अपील को इस वक्त नकार दिया अंपायर ने। और आखिरकार रियाज इस गेंद पर बच चुके हैं, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 0 पर। और इस बीच अगली गेंद लेकर मुजीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, विस्फोटक बल्लेबाजी की जरूरत है गोरी यंग बॉयज को। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लंबन की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, 1 रन का इजाफा। और 1 रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। दर्शक अब लगभग मैदान पर भर चुके हैं, मैदान के चारों ओर जहाँ कहीं भी नजर फिरा है दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए, और निश्चित और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि एक बेहतरीन मैच यहाँ पर प्रगति पर मैंगलोर की 2 प्रतिष्ठित टीमें इस वक्त इस मैच में भिड़ रही है, एनएम मैंगलोर और गोरी यंग बॉयज, और मुकाबला इस वक्त जारी है। और गेंदबाज इस वक्त मुजीब तैयार नौफल के लिए, ये गेंद इस बार नौफल ने गेंद को ड्राउ, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जस्ट आउटसाइड द 20 यार्ड सर्कल। मेरे ख्याल से फील्डर है वहां पर आसिफ, जिन्होंने इस कैच को लपका। बेहतर कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से स्ट्रोक बेहतर था, लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं, और एक्स्ट्रा कवर पर अपने बाईं ओर ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए इस कैच को लपका 20 गज के दायरे के कुछ बाहर। और निस्संदेह बेहतरीन कैच इस वक्त खिलाड़ी आसिफ लपकते, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है नौफल के रूप में। गोरी यंग बॉयज आर now loses their first wicket. Nowfal departs, and now they are 1 for 1. KCCR Kadri will take over Mangaladevi cricketers in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕೆಸಿಸಿಆರ್ ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದರೊಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ त्यागराज, one more good striker of the ball, is now comes out to the middle. और इस वक्त गोरी यंग बॉयज को चाहिए एक विस्फोटक बल्लेबाजी, खासकर पावर प्ले का फायदा उनको इस वक्त उठाना होगा. और मुजीब गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ताइना तो ऊपर द विकेट क्रीज के कोने से गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ. त्यागराज ने इनटू द गैप एज वेल, गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 2 for the loss of 1 wicket in the first over. रियाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुका है और मुजीब इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ताइनात ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ताइनात के बल्लेबाज रियाज के लिए ये गेंद इस बार ड्राइव किया. इस बार गेंद जा चुकी है कवर पॉइंट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता दोबारा खुद उसी फील्डर द्वारा पीछे की ओर जाने के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का.
और इस बार ऑप्शन से काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद थी, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद किस वक्त खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट 2 रनों के लिए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। मुजीब एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए रियाज के लिए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड द बॉल आई थिंक इज just we have to wait for the umpire signal. So it's off the bat and a first over completed. 5 runs on the board after first over for losing 1 wicket. Gori young boys made a slower start. In fact, they are chasing the victory target of 73 in 8 overs. They made a pretty good start. In fact, 5 runs only managed to score on the board by Gori young boys. And let's straight away coming back to the equation. 68 more runs now they have to score for victory in remaining 7 overs. And the required run rate is now gone up to exactly 9.71 runs per over. 9.71 रन प्रति ओवर के औसत से इस वक्त बनाने उन्हें 68 रन। दैट मीन्स दे हैव टू स्कोर 68 आउट ऑफ देयर 42 डिलीवरीज। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है तो एक और प्रतिभाशाली गेंदबाज एनएम मैंगलोर की ओर से रियाज इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त संभालते हैं। और जहाँ तक रियाज का सवाल है इस ऋतु में उनका प्रदर्शन न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी काफ़ी बेहतर रहा है और यहाँ पर इस मैच में वो अपना करिश्मा दिखाने के लिए गेंदबाजी के जरिए मैदान पर उतरते हुए तैनात तो बढ़ता विकेट। ये गेंद इस बार स्वीप किया इस वक्त स्क्वायर लेग पर और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। रियाज ने गेंद को स्वीप किया था लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा रफ्तार नहीं, प्लेसमेंट भी बिल्कुल गलत था और आसानी के साथ 20 गज के दायरे के अंदर स्क्वायर लेग पर इस कैच को लपक लिया गया। देखिए किस तरीके से इस वक्त गेंद को स्वीप किया था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले एंड कंफर्टेबली हेल्ड जस्ट आउटसाइड द 20 यार्ड सर्कल। तो रियाज का विकेट भी यहां पर गिर चुका है और 2 विकेट यहां पर खोने के बाद हालत काफी हद तक नाजुक सी नजर आती हुई गोरी यंग बॉयज के 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका। नए बल्लेबाज एक और बेहतर बल्लेबाज, 1 मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल दीपक का आगमन यहाँ पर हो चुका है। और जहाँ तक गोरी यंग बॉयज के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो दीपक और त्यागराज दोनों काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, उनकी उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद ज़रूरी है। और गेंदबाज रियाज की गेंद इस बार दीपक के लिए बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर दीपक आगे निकल आए लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि गेंद को वहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जा चुका है। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गेंदबाज इस बार फिर से तैयार रियाज तैनात राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े दीपक काफी तेज और 1 रन इस बीच प्राप्त करने में सफल। इससे पहले कि लॉन्ग ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। त्यागराज सामना करने के लिए तैयार जबकि गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रियाज। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। निस्संदेह बंधनों को इस वक्त तोड़ना है गोरी यंग बॉयज को अगर उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर होना है तो। लेग स्टंप से काफी बाहर शॉर्ट फन लेग फील्डर आतिफ के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रियाज तैनात ओवर द विकेट त्यागराज के लिए। इस बार खूबसूरती के साथ फील्ड क्लियर करते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को जब तक डीप कवर पॉइंट पर सीमा रेखा के अंदर फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करेगी। जस्ट स्कूप दैट वन एट द लास्ट मोमेंट स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड बिकॉज ऑफ दैट has got a couple of runs for that stroke, 9 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. Required run rate now gone up to exactly 10.11 runs per over और रियाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए त्यागराज सामना करने के लिए तैयार दाहिना ओवर द विकेट। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, धीमी लेग कटर गेंद लगभग जमीन के सहारे आई। गेंद के इस वक्त त्यागराज उछालना चाहते थे, इस गेंद के इस धीमेपन को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद टॉप एज, मौका आसानी के साथ गेंदबाज के हाथों में।
तो यहाँ पर उछालना चाहता इस धीमे लेग कटर गेंद को ऑन साइड की ओर, ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट प्लेड दैट वन टू अर्ली. He just wanted to play that one too early and the ball came quite lately. And have a look at this in the replay. They get game top edge पर टकराई, आसान सा क्या, त्यागराज का विकेट गिर चुका. It's 9 for the loss of 2 wicket. 2 overs completed. इस बार ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 10 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त पहुंच चुका है. और फिर से एक बार गेंदबाज मुजीब अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद एक्स्ट्रा विकेट, पैरों पर गेंद टकराई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में. नॉट मोर देन अ सिंगल लेग बाय. 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. हर गेंद के साथ इस वक्त यहाँ पर दबाव बढ़ता नजर आता हुआ और यहाँ पर ज़रूरत है गोरी यंग बॉयज़ को चौके और छक्कों के इस मैच में अपना कमबैक करने के लिए. और इस बीच अभिलाष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाइना अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, जबकि गेंदबाज मुजीब इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं. ओह, अच्छी गेंद थी इस वक्त. बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेल दिया. इस वक्त खेलना चाहते थे ऑन साइड पर अंतिम एक्शन में, लेकिन गेंद पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ गोरी यंग बॉयज़. इस बीच मुजीब दाहिना तो ऊपर द विकेट. यह गेंद अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर. नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. एब्सोल्युटली स्लोअर प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर गोरी यंग बॉयज़. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, मुजीब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. रिवर्स शॉट, टॉप एज, मौका विकेट कीपर मंसूर के लिए. और यहां पर कैच को लपकने के बाद उन्होंने थ्रो किया, बैक हैंड थ्रो इस वक्त स्टंप्सों पर, लेकिन गेंद पैर पर लगकर आई थी. और इस बीच लेग बाय का इशारा अंपायर का और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर. देखिए किस तरीके से हुआ था. यहाँ पर पैर पर गेंद टकराई थी और मंसूर ने गेंद को तुरंत लपकते ही उन्होंने थ्रो किया. दाहिने हाथ से स्टंप से पर उनको निशाना चूकता हुआ लेग स्टंप से बाहर वाइड. एंड 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल. रन से इस वक्त चाहिए गोरी यंग बॉयज़ को. वो किस तरह से बनते हैं ये उन्हें जरूरी है. अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके छक्के ही गोरी यंग बॉयज़ को इस मैच में वापस ला सकते हैं. तो जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो मुजीब इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. दीपक का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. हर गेंद के साथ इस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ गोरी यंग बॉयज़ के लिए. और मुजीब अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद दीपक के लिए, पैरों पर गेंद टकराई. गेंद पहुंची इस वक्त गली क्षेत्र पर. नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. धीमी प्रगति यहाँ पर गोरी यंग बॉयज़ के लिए होती हुई और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज एनएम मैंगलोर के इस ओवर में अंतिम बार. इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेला. गेंद पहुंचा एक्स्ट्रा कवर पर. तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन मिलेगा. और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त बढ़कर पहुंच चुके 1 रन के साथ 17 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर. 3 overs completed, 17 runs on the board, 3 wickets down. And now they have to score. In overall calculation, it's going to be 56. They have to score for victory in remaining 4 overs. And the required run rate is in 5 overs, in fact. 56. They have to score for victory in remaining 5 overs. And the required run rate is now gone up to exactly 11.20 runs per over. 11.20 runs प्रति ओवर के औसत से 56 रन बनाने हैं.
5 ओवर में 30 गेंदों में 56 रन। और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा अब कुछ एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी ही उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तो अभिलाष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर किया। स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबल एट लास्ट। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रा जोन। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। फैजल एक बार फिर से तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े इस बीच, और इस बीच एक रन उन्हें जरूर मिला। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट। तो अभी भी रनों के लिए संघर्ष करते हुए गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाज और अभिलाष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फैसल की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन डीप कवर पॉइंट पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फैजल, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर टकराए, 1 रन का इजाफा। 22 नाउ, लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय एम्पायर। 3.3 ओवर्स गॉन इन द इनिंग्स, 22 रन्स ऑन द बोर्ड। और फैजल फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अभिलाष के लिए। रिवर्स शॉट, टॉप एज, गेंद निकल चुकी है गली फील्डर के सिर के ऊपर से। 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वितम यहाँ पर पूर्ण कर चुका है। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। जबकि 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। तो अंपायर इस वक्त बल्लेबाज अभिलाष से कुछ कहते हुए जहाँ तक सवाल है इस वक्त अभी भी कुछ बातचीत करते हुए, शायद किसके बारे में कुछ हमें यहाँ पर पता नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ कहने के बाद वो अपने स्थान पर इस वक्त वापस लौटते हुए। और इस बीच फैसल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिलाष के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद को उछाला इस वक्त गेंदबाज के बाईं ओर से लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी गोरी यंग बॉयज के लिए। और फैसल इस ओवर में अंतिम बार दीपक सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में फैसल गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया, बैकअप होता हुआ लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 4 ओवर्स कंप्लीटेड। तो 4 ओवर के समाप्ति 26 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। और 4 ओवर का खेल बाकी और 4 ओवर में रन इस वक्त उन्हें बनाने हैं 47। तो 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और सतीश 5वां ओवर इससे पहले के शुरू हो माइक्रोफोन पर आपको मैं बुलाना चाहूँगा। तो 47 विकेट और सतीश देखिए कंपैरिजन 4 ओवर के बाद एनएम ने बनाया था 28 रन, 28 रन स्कोर्ड बाय एनएम फॉर लूजिंग 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। मीन टाइम गोरी यंग बॉयज स्कोर 26। कंपैरिजन सेम है, लेकिन द्वितीयार्ध में एनएम के गेंद बल्लेबाज जो कि काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें अपनाई थी, लेकिन यहाँ पर गोरी यंग बॉयज को आक्रामक बल्लेबाजी अपनानी है, लेकिन अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। अब जब कभी भी आप रनों का पीछा कर रहे हो तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर रहता है। और यहाँ पर 47 रन बनाने के लिए बचे हुए 4 ओवर में मैं समझता हूँ इस वक्त गोरी यंग बॉयज को जी तोड़ मेहनत मुशक्कत इस वक्त करनी पड़ेगी इस मैच में कमबैक करने के लिए अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ एनएम मैंगलोर। Well, thank you, Gopi. Absolutely, and not a big difference as far as a comparison after completion of 4 hours. But the big difference is taken place when they started 5th over and last 4 hours. I think NM Cricketers Bangalore dominated, and the bowling of Gori young boys. So that kind of same domination which is required here, and this kind of extra deliveries, extra runs certainly will going to help. Gori young boys to get that domination. But I think Gopi, the 2 batters are in the middle, the experienced campaigner. And if one batsman can go for the aggressive stroke, and batter like
Abhilash can be the very good supporter from the other end. This time nicely plays it down to mid-on region and in fact short mid-wicket region, and they went for the quick single with the single score 29 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Here is Atif, right arm over the wicket. This time lofted, but I don't think he will go to get the distance, but he will going to get the fielder in the deep long off. Of course, he hit the ball very well, but the placement is not good. The placement which is not good, but against that pace, I have a look at that one. And it's a very difficult stroke to play in the book. And if he wanted to clear the ground in a long off region, I think he needed to have some kind of enough power and timing behind the stroke. And there might be that ball which is not really hit that one from the middle of the bat, and he just pays the penalty for that. What the last hope of winning this match for Gori young boys, very destructive batter, Deepak departs. But I think he's really not played as per his reputation what he's got. This is a result of frustration and uncomfortable is in the middle and not really hitting the ball very well, so that he wanted to break the shackle. By doing that, he just got the fielder in the deep. 29 for the loss of 4 wicket. The captain of the side, Karna, came into middle. Is known as a finisher of the match. But if he want to finish this match, I think he's need to play the innings of his life. He need to play his innings of his life if he wanted to finish the match for his team. And but I think he came in a difficult condition when it's required run. It is almost 12 runs per over. Atif, the captain to captain. The first ball and a typical Karna sweep shot down to deep fine leg region for a easy single, walkable single. Karna picked up a single. With that single score, moves on to 30 for the loss of 4 wickets. Still, it's long way to go. And the target is 73. That means 43 more runs required for the victory. Asking run rate is really creeping up. Again, dries that one. They went for the quick single. Pet attempt for the run out, but the throw which is not good enough to get that with stumps, get that wicket. But the ball is slide a bit of wide throw coming from the fielder, and batter got ample time to complete the single. 31 for the loss of 4 wicket. Have a look at the effort there from the fielder to get that run out, but ball misses the stump and batsman complete the single. Atif Walsh this time got a nice looking drive, but not more than a single. The fielder is there in the deep cover point region, and they complete a single. For every that cricketing stroke, I think NM Cricketers Bangalore, they run 2, but here they're running only 1. That shows the difference between the fielding department of Gori Young Boys and NM Cricketers Bangalore. They need to improve their fielding department. Gori Young Boys, of course, winning and losing is a part of cricket, but learning from the mistake is so important. And here is one more wide delivery. So with that, excess cover moves on to 33 for the loss of 4 wicket. I think the ball is in play. That's what umpire saying that Karna that he can go for the run. And here is again nice swept down to deep square leg region for a single. With that single, cover moves on to 34 for the loss of 4 wicket. One more over completed, and 5 gone. After completion of 5, it's 34 for the loss of 4 wicket. Not 39 to get from 18. Seems to be a little bit difficult one, but a difficult road always, absolutely, it is always leads to a beautiful destination. So destination here for team Gori Young Boys is 73, and but I think against the formidable bowling department of NM Cricketers Bangalore, that's a big problem. Welcome to the former president of UFCA, Ramakrishna sir, for this prestigious Sauhardha Trophy 2023 on behalf of organizers. So 34 for the loss of 4 wicket. And warm welcome for Lakshmi Narayana Achar as well, proprietor of Vidyagala Furnitures. They are enjoying the game of cricket here in community box. The first ball, quite interesting kind of cricketing stroke which is played by Abhilash, because he wanted to get that one into the third man region by playing the switch it, but seeing that very difficult to play that one, he just went with the stroke.
just like a right-handed batsman tapping the ball. He picked up a single for that, and with that single scoreboard moves on to 35 for the loss of 4 wicket. So and again bowler back to his bowling mark. Riaz needed one big over here for Gori young boys. Right arm over wicket. Karna improvising nicely down to square leg region. They're running hard, but this time the slight a bit of fumble, and the batsman grabbing the opportunity to come back for the second. With that second scoreboard moves on to 37 for the loss of 4 wicket, and they need to get another 36 more runs to win this match. Riaz to Karna. Again the slower one, absolutely change up pace. Seeing that, oh this time, oh my goodness, Karna already is not ready to take the run because of he's trying for the reverse flip. He's lost his balance and missed it completely. By knowingly, I think Riaz just blocked the slower one, seeing that the batsman is looking for the reverse stroke, and Karna missed it completely from the bat. Riaz again, he went for the sweep shot, missed it completely. Wait for the umpire signal. It's I think it's inside edge of the bat. One more addition to total. Addition of that single is going to be a 38 now for the loss of 4 wicket. But I think it's along with these singles, they needed 1 or 2 big shots in each and every over if they wanted to win the match. Abhilash is there for a long time. Is batting on 10 out of 10 balls. But these singles will not going to help the team Gori young boys. But Abhilash have to change the gear. This time tipped that one nicely over the head of the bowler, but not more than a single. Azhar the fieldsman there in the deep long, one of the quickest fielder in the deep. The fields the ball, so there's no question of getting any extra run. And slow cricket is going on here. It's 39 for the loss of 4 wicket in the over number 6 is in progress. Riaz again. Right above the wicket. Karna is just going for the waiting game. He's just playing a waiting game. Maybe he's targeting in the last 2 overs to get some acceleration. Wait and see. And 6 overs completed. After the completion of 6 overs, Gori young boys chasing a 73 to win this match. They are 40 for the loss of 4 wicket. Coming back to that run which is they're chasing, I want to see the extras, number of extras which is conceded by the opposition team. Gori young boys conceded 12 extras, and in that they missed 4-5 opportunities, the catching opportunities and run out opportunities. That's why they're struggling. If you exclude all these things, I think that might be in a good position. But I think now they need to go for the big shot. Do or die situation here for Gori young boys. The dotted delivery is not going to help the team to win the match. Atif to continue from the commentary box end. Still they have to get another 33 runs to win this match. But for that they remaining only 11 deliveries. Big wide and bonus run for Gori young boys. They need to capitalize that extra deliveries, and with that extra score was under 42 on the board for the loss of 4 wicket. That means now they needed another 31 runs to win this match. 1 or 2 big shots in this over will going to take this match very interesting, because even NM Cricketers Bangalore also they considered so many extras. 16, if you believe me or not, out of 42 runs, 16 extras conceded by NM Cricketers Bangalore. This time drives powerfully, but not more than a single. Not more than a single. One more single. With that single score moves on to 43 on the board. 30 required for the victory. And the remaining delivery is 10. Atif. This time Karna went for the big shot, not quite getting that one from the middle of the bat. So that ball will going to land it safely to the hands of long off. If he able to connect that one right from the middle of the bat, certainly it's going to be a 6. But Karna not mailing the ball well. Pays the penalty for that. Ball is gone very high up in there. Have a look at that one camera work there from the cameraman. Oh, slight a bit of, isn't it? Where is taken just inside the boundary line. It's a slight a bit of extra effort. Certainly is going to be a 6. That's going to be very unfortunate for Karna that he played it one very high. And because of that he played it very high. He is really fails to get the distance. 43 for the loss of 5 wicket. So what a fantastic cricket is progressing here.
So next match will be played between Mangala Devi cricketers versus KCCR Kadri. This time, what a shot! Magnificent stroke. One of the clean stroke I want to say in this particular day number final, which is came from the bat of Fayaz. What a great shot that one. Absolutely, have a look at that one. This is a clean shot. Absolutely clean. And ball is landed out of the park. They needed that kind of cricketing stroke in the early stage of the innings. But it's I might be so late here for Gori young boys. That man is came in too late. 49 for the loss of 5 wickets. 24 required. For outside and off stamp. Match which is not yet over. Match which is not yet over. 23 to get. 50 comes off here for Gori young boys. Here is Atif again. Right arm over the wicket. Oh, Fayaz looking for one more big shot. If he is able to get 1-6 in this over, it's going to be a very good final over. But I think Atif completes a slight a bit of expensive over. The 51, which is a total score, and the 22 runs which they needed to get in the final over. The news from for the next match, captain of Kadri, KCCR Kadri, won the toss and rightly elected to field first against Mangala Devi cricketers. And I request a winning team in this particular match, winning team, after completion of the match, you need to sign, then you can go for the lunch. So please note the winning team of this match, please complete the signature after this match, and then you can go for the lunch break. 51 for the loss of 5 wicket. Next match, one more big match, Mangala Devi versus KCCR Kadri registered. 22 required from last over. The experienced campaigner, right on the money, Faisal, absolutely perfect stuff here from him. The experienced campaigner is bowled up, beautiful delivery to pick the wicket of Fayaz. He looked so dangerous in the previous over, but this wicket and this wicket definitely, the Gori young boys certainly they are now in a deep trouble. 51 for the loss of 6 wicket. So new batsman is Ansar, and Ansar came into middle. So 22 required for the victory. This time ball is in there. One more opportunity for the fielder to take the catch, and he comfortably held. Now 4 balls, 22 runs required. Almost 4 sixes required for the victory. And maybe Nandan Kulshekar is thinking about, if I am going to be an impact player, I can walk to the middle and I am going to hit 4 sixes. There is no impact, of course, player in underarm cricket, but who knows in the future. That rule is definitely going to be implemented. It might be so for some get some entertainment. 51 for the loss of 7 wickets. The new batsman just came into middle. Looks like a Sahil. So one more answer came into middle. They picked up a single then. The with the single score number was under 52 for the loss of 7 wickets. So 21 required from 2 balls, 3 balls. I think no one can stop NM Cricketers Mangalore to win the match. Abhilash still is dealing with the singles. He knows that match is already out of the hands, so that he's just dealing with the singles. 53 for the loss of 7 wickets. 2 balls remaining, 20 runs required for the victory. One more match, which is a slight bit of disappointment finish. This time, good piece of fielding there by the fielder, and opportunity in the non-strikers, and for the run out, and one more wicket is back into pavilion. Now Gori young boys 54 for the loss of 8 wicket. Good piece of fielding there by the fielder. Even the wicketkeeper Mansoor has got a presence of mind by returning the ball to the hands of the bowler. Now last ball remaining to complete the formalities here. It's absolutely domination here for NM Cricketers Bangalore against Gori young boys.
But NM Cricketers Mangalore, when they going to the next match, they suddenly be worried about that extras they conceded in this match. They need to restrict the extras which is they conceded. Now conference victory. I request the NM Cricketers Mangalore. First you please come here and complete the signatures. Then you can leave the field. ದಯಮಾಡಿ NM Cricketers Mangalore ತಂಡದ first time. Yes. Roland Pitt does say that. NM Cricketers, in the first time in the history, they have completed their 8 overs quota in a time. And I request NM Cricketers Mangalore, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಬೇಕು. So, because I think after bowling with so many extras, still they are completed their 8 overs in their stipulated time. And thanks to the bowlers and thanks to the captain. Now is the time to announce the Man of the Match award. I request Lakshminarayan Acharya to present this Man of the Match award, the proprietor of Vidyakala Furniture's bat maker and one of the most popular personality as far as under cricket is concerned. So now time to announce the Man of the Match award and Man of the Match award which is goes to for the all-round performance man which is, man is who came into bat as a number 7 batter and played a fantastic small cameo innings which is very handy for the team and he scored a unbeaten 15 runs and bowled 2 fantastic overs. In that he picked up 2 valuable wickets for 10 runs. It's none other than Riaz of NM Cricketers Bangalore, who just as the Man of the Match. May I request Riaz, one of the best all-rounder for the side, requesting him to collect your Man of the Match award from our chief guest Lakshminarayan Achar for his Lakshminarayan Achar, the proprietor of Vidyakala Furnitures. ದಯಮಾಡಿ ರಿಯಾಜ್ ಇವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ cameraman of 10 media, please cover that presentation ceremony. Riaz will going to get Man of the Match award. I request Riaz once again please in a live telecast he has not covered, so I request you to once again to come to the dais to collect your award. Just a minute, wait a minute. Yes, this is going to be always going to be a golden moment for everyone when you are getting that individual awards in a big tournaments like this. Golden moment, especially when you're receiving the trophies. Yes, thank you. Over. So now it's a time to ask Gopi to take over the microphone, and it's going to be one more good match. Bangladesh Cricketers takes on KCCR Kadri, registered after captain of KCCR Kadri, Dilip, won the toss and elected to field first, so that Bangladesh Cricketers will go into bat first here.
धन्यवाद सतीश. So the match number 3 is now going to start between Bangladesh cricketers versus KCCR Kadri. So in this match, the openers for Bangladesh cricketers are Yatiraj and Nikhil. Meantime, the bowler is Dilip, who is now starts the fresh proceedings. And the first ball of the match number 3 of the day 3 of this prestigious tournament, Sauhardha Trophy 2023, is now coming up live and exclusively right in front of you. Exquisite live telecast from 10 Media. And we are once again giving special thanks to Mr. Abu Bakar Ashik, partner Spritz Saloon, Eximland UAE, and Mr. Mudassar Kurg Nucleus Exhibitions Dubai UAE for their wonderful support of this to the success of this tournament. And straight away, first ball, and Dilip the bowler. तो पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार यतिराज के लिए. ये गेंद हल्के से गेंद को शेयर कर दिया, रन के लिए दौड़ पड़े. एक रन मिलेगा इस बीच. एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. तो एक रन के साथ बिना किसी नुकसान के एक रन पर बांग्लादेश क्रिकेटर इस वक्त पहुंच चुका है. जहां तक एक बेहतर शुरुआत का सवाल है तो बांग्लादेश क्रिकेटर्स को चाहिए इस वक्त एक बेहतर शुरुआत. अगर उन्हें एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो खासकर सलामी बल्लेबाजों को इस वक्त बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा. और गेंदबाज दिलीप इस वक्त गेंदबाजी फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए निखिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के से इस वक्त खेलना चाहा. बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. बेहतर ऑफ कटर गेंद थी और आखिरकार गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड कर लिया गया. रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला. और फिर से एक बार दिलीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में. नॉट मोर देन अ सिंगल. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस, इट्स 2 विदाउट लॉस. और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त यतिराज ने शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में. नॉट मोर देन अ सिंगल. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर. और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है इस वक्त उन्हें एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है तो निश्चित रूप से उनके सलामी बल्लेबाजों को इस वक्त एक बेहतर प्रदर्शन यहां पर देना होगा अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ KCCR Kadri. और दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन बाय निखिल. नॉट कलेक्टेड दैट वन and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Scoreboard stays at 3 without loss in the first over. बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है. सूरज आसमान की बुलंदियों की इस वक्त छूने के बाद अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ. और इस बीच दिलीप की गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑन की दिशा में. नॉट मोर देन अ सिंगल. एंड विद दैट सिंगल अ सक्सेसफुल ओवर केम टू एंड फ्रॉम दिलीप. कंसीडेड जस्ट 4 runs and after completion of first over three Bangladeshi cricketers are with a slower start. In fact, it's a steady start. It's 4 without loss after completion of first over. Next match, one more big match is now coming up right after this match between NM Mangalore versus Torpedoes Kana. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से. और निखिल गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए. और जहां तक सवाल है पावर प्ले का तो दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ. हवा का रुख मैदान पर काफ़ी हद तक कम हो चुका है और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहां पर करते हुए. और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्दा ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई. गेंदबाज अपनी ओवर की अगली पहली गेंद लेकर इस वक्त यार सतीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में. एक्स्ट्रा क्विकर अंतिम क्षण में गेंद को ठीक तरह से खेलने में चूके बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. और सतीश एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बीच सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर डिफ्लेक्ट किया लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर बेहतर फील्डर वहां पर मौजूद. और जहां तक
सवाल है रनों का, तो रन इस बीच मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। निश्चित रूप से यहाँ पर मंगला देवी के बल्लेबाजों को पावर प्ले का फायदा यहाँ पर उठाना होगा। और जिस तरीके से पिछले मैच में केसीसीआर कदरी ने 52 रनों का लक्ष्य का पीछा किया था, सिर्फ 4.4 ओवर में केएफसी कोडिकल के खिलाफ उन्होंने 52 रन बनाए थे। रवि पंडयूर ने एक विध्वंसक पारी वहां पर खेली थी और इस बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस मैच में मंगला देवी क्रिकेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यहाँ पर बनाने हैं। अगर केसीसीआर कदरी के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर उन्हें दबाव डालना है तो 1 रन का इजाफा 6 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सतीश दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार चिप किया ऑफ द टोस डाउन टू लॉन्ग ऑन और इस बार वहां पर गेंद को फील्ड करने में सफल फील्डर। ऑफ द टोस गेंद को स्कूप किया था इस वक्त, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर रक्षण मौजूद और इस बीच नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। यतिराज और निखिल इस वक्त एक बेहतर आरंभिक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए और सतीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया, शॉर्ट थर्ड मान पर रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा फिर से और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। सतीश इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड और अंपायर मोहन ने तुरंत अपने पैर को गेंद की लाइन से हटा लिए अंतिम क्षण में और आखिरकार गेंद को जब तक मिड ऑन पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 overs completed, 9 runs on the board. Sri Mangala Devi cricketers made a slower start in fact. Still in overall calculation it's going to be 6 overs left in their innings. इतिहास के पन्नों को अगर कुरित कर देखा जाए तो श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स कम से कम ऐसा कहना पड़ेगा 35 से 40 सालों का इतिहास मंगला देवी क्रिकेटर्स का है। कई प्रतिष्ठित श्रृंखलाओं में उन्होंने खिताबे जीते हैं पिछले कई वर्षों में और निस्संदेह एक वक्त की नामी टीम आज भी अपनी छाप को वो जमाए रखा हुआ है और श्रृंखलाओं में हिस्सा लेते हुए खासकर कुछ खिलाड़ी मंगला देवी क्रिकेटर्स के आज भी अपने वर्चस्व को कायम रख चुके हैं इन दिनों में और निस्संदेह जब कभी भी अंडरआर्म क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को कुरेदा जाएगा तो निस्संदेह श्री मंगला देवी का नाम वहाँ पर ज़रूर होगा। तो यहाँ पर इस वक्त इस मैच में वो केसीसीआर कदरी के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए और इस बीच तीसरा ओवर गेंदबाज धनुष लेकर तैयार। तो फील्डिंग में जमावट चलती हुई इस बार गेंद पहुंची पैरों पर टकराई शॉट्स को अलग की दिशा में और 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर 10 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दूसरे ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए और यतिराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थोड़ा सा वाइडर इस वक्त तैनात और धनुष अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज यतिराज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता चूंकि और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज केसीसीआर कतरी के बल्लेबाजों को ज़्यादा रूम या विड्थ प्रदान नहीं कर रहे कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक्स खेल सके। ये गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, यतिराज दौड़ा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज निखिल द्वारा। तो इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत यह विकेट गिर चुका है। यतिराज स्ट्रोक्स खेलते ही दौड़ पड़े थे लेकिन कोई रिस्पांस नहीं इस वक्त नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज वाला, कुछ प्रतिक्रिया नहीं, गेंद सीधे पहुंची थी मिड विकेट फील्डर के हाथों में और आसान सा रन आउट यहां पर होता हुआ और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है 10 रनों के ऊपर। यतिराज 4 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस लौटते हुए 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया
और श्री मंगला देवी क्रिकेटर्स अपना पहला विकेट खो चुका है 10 रनों के योग पर। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। असगर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और सामना करने के लिए तैयार। इस बीच धनुष की ओवर की अगली गेंद का पहला विकेट मंगला देवी क्रिकेटर्स पिछले गेंद पर खो चुका है यतिराज के रूप में। यह गेंद इस बार स्टीयर करना चाहा गेंद को और गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ बांग्लादेश क्रिकेटर्स और असगर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। धनुष की ओवर की अगली गेंद का दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद स्टीयर करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर पहुंचे, थ्रो किया नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ अपना छोड़ वो बदल सके। 11 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। निखिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। धनुष की गेंदों का और धनुष दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर जगह बनाते हुए, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति। 3 overs completed, 12 runs on the board, 1 wicket lost. Still it's slower progressing here now for Sri Mangala Devi Cricketer. Still in overall calculation it's going to be 5 overs left. 5 ओवर का खेल बाकी और निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है तो अब ऐसा कहना पड़ेगा मंगला देवी क्रिकेटर्स को अपने रन की गति में कुछ हद तक एक्सेलरेशन जरूर लाना होगा अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज सतीश जो कि इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी से फील्डिंग के व्यू के बारे में। और जहां तक फील्डिंग के प्लेसिंग पर अगर नजर फिराया जाए तो दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप बैकवर्ड थर्ड मैन और जहाँ तक सवाल है डीप कवर पॉइंट तो लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद लॉन्ग ऑन और उन साइड पर अगर नजर फिरा जाए तो इस वक्त कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग या फिर डीप फाइन लेग नजर नहीं आता हो, जबकि डीप मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास। तो गेंद इस वक्त बदल देने के बाद नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए गेंदबाज सतीश और बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक धीमा क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बांग्लादेश क्रिकेटर्स की पारी में और निस्संदेह उन्हें इस वक्त चाहिए चंद चौके या छक्के इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए, एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होने के लिए। और पहले 3 ओवर के खेल के बारे में अगर कहा जाए तो द फर्स्ट 3 overs belongs to the bowlers of KCCR Kadri who conceded just 12 runs and capturing 1 wicket in the first 3 overs. First ball of the 4th over of the innings is now coming up. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 for the loss of 1 wicket at the start of the 4th over. In fact, सतीश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ड्राइव किया जगह बनाते हुए लॉन्ग ऑफ के दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। 14 now for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. दाहिने हाथ के बल्लेबाज असगर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सतीश की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए असगर के लिए
ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, जगह नहीं बना पाए ठीक तरह से और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया। इस वक्त गेंदबाज ने रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सतीश दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन एक बार फिर से खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल। शॉट मिड ऑन पर मंजुनाथ मौजूद थे जिन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन नहीं मिलेगा और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज KCCR कतरी के सतीश अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी ऑफ कटर गेंद थी। गेंद को इस वक्त स्वीप तो जरूर किया लेकिन बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट करने में सफल, लेकिन एक रन ना उन्हें जरूर मिला। 15 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और चौके या छक्के लगाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज मंगला देवी क्रिकेटर्स के, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है और कुल मिलाकर उनकी पारी का चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। सतीश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल के लिए ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर, खतरा हो सकता है नॉट स्ट्राइक रन पर, लेकिन थ्रो को रिसीव करने के बावजूद गेंद को विकेटों पर लगाने में असफल गेंदबाज और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का लेग पाई के रूप में। अगर विकेटों पर गेंद को लगा देते गेंदबाज थ्रो को रिसीव करने के बाद तो निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बचते हुए और सतीश इस वक्त असगर के लिए ये गेंद ड्राइव करना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, वंस अगेन इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और एक रन के साथ स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवर्स हैड बीन बॉल्ड, स्लोअर प्रोग्रेसिंग ये 4 मंगला देवी क्रिकेटर्स। 4 ओवर का खेल बाकी है और इससे देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में उनकी पारी में और कितने रन यहाँ पर मंगला देवी क्रिकेटर्स के बटोर पाते हैं। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा द फर्स्ट 4 ओवर्स बिलोंग्स टू द बॉलर्स ऑफ KCCR कतरी और बचे हुए 4 ओवर में देखते हैं मंगला देवी क्रिकेटर्स बंधनों को किस तरह तोड़ते हैं। 5वां ओवर इससे पहले कि आरंभ हो, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा सतीश को। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gobi, and good afternoon, cricket lovers. 17 for the loss of 1 wicket. Mangaladevi cricketers still searching for the right track, but they got a slow start, and the reason, the bowling performance of Gori young boys, led correction from KCCR Kadri. So far, they bowled very well. Dilip, Satish, as well as Dhanush, the 3 bowlers introduced by the captain, and Dilip himself bowled the first over, being the captain of the side. And afterwards, all the bowlers did a great job to restrict the runs of Mangaladevi cricketers. But this Mangaladevi cricketers still they got 4 overs to go, and they can get some acceleration. This time straight to the answer fielders, and a poor piece of thinking. After the batter hits the ball, Asgar is just going for the run, and Nikhil, have a look at that one. Even Nikhil also responded for the run, where there is no run at all. And they lost a big wicket of Nikhil. So Nikhil is out for 7. It's definitely going to be very unfortunate for Mangaladevi cricketers. They're throwing the wickets, in fact. And it's 17 for the loss of 2 wickets. Rizwan is a new batter in. Is one more very good all-rounder for the side of Mangaladevi cricketers. Wait and see how Rizwan will go and to contribute here. Not only they need to get some partnership here, but at the same time, the acceleration of run rate is also required. So very good toss to win here for the captain of Kadri Cricketers Club registered. After winning the toss, elected to bowl first. So far, they are doing great job. And the same thing they are continuing what they left in their first match when they played against KFC Kodikal. Rizwan, for Rizwan, one field right long off deep cover point. There is a fieldsman and a deep long on and a deep mid wicket. Raghu right arm over the wicket bounce. This time appeal for leg before wicket. Umpire says it's from the bat. Inside edge of the bat of the batter Rizwan, so that is off the mark with a single. Wanted to sweep that one, but missed it completely
from the middle of the bat, but he's got a slider bat onto that. 18 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. Raghu again. Right arm over. Again that ball almost looks like going to miss the off stamp. Leg cutter ball by Raghu. Even Asghar shuffled across the line after delivery to swing that one mid-wicket region. But again he missed it completely from the bat. Leg by called. 19 for the loss of 2 wicket in the over number 5 is in progress. It's a slow going here for Mangaladevi cricketers as Rizwan once again facing Raghu. This time top edge. Dhanush underneath it. One more huge wicket is back in the pavilion of Mangaladevi cricketers. One the big off of that when Rizwan is walk towards the middle. It's maybe there's someone thinking about that. Rizwan will go into play some responsible innings for his team. But losing him in this condition, I think Mangaladevi cricketers are looking in more trouble now. It's 19 for the loss of 3 wicket. Just like my friend my friend Gopi is just talking about the history of Mangaladevi cricketers. Absolutely right. They got more than 30 years of more than 30 to 35 years of history they got. But still, they are the only one team which is taking part in the cricket. Most of the big teams which is gone behind the screen. But the teams like Mangaladevi cricketers, teams like Adimeshwar cricketers, they're still there. They're battling in the present cricket as the Mangaladevi cricketers, one of the best team so far as South Kent district is concerned, and knowing for the discipline. So Mangaladevi cricketers, in the sense, it's a discipline because they got a lot of good talented players. Not only they got a talent, but along with the talent they got a character, and that's Mangaladevi cricketers produce so many good cricketers for underarm cricket. So new batter, left-hand batter came into middle. Prashant straight away he played that unorthodox cricketing stroke. The first ball is facing, but he's very confident that he will go and get that one down to a backward point region for a single, and with that single scored was under 20 for the loss of 3 wicket in the over number 5 is in progress. Raghu to ball from the far end. Raghu to Asghar. Asghar drives that, not quite intended. He wanted to get that one into mid-wicket region, but because of that, Raghu is bowled the leg cutter, sharp leg cutter. He just the stroke to play that one down to deep long on region. And one more over completed. A completion of over number 5. Still Bangladesh cricketers are searching for the right track. They're struggling in the middle. It's 21 for the loss of 3 wicket. So 3 overs remaining in the innings. 18 balls excluding wides and no balls. And Bangladesh cricketers have to get at least 30 runs in the 3 overs. That means they need to get the big overs. But so far, unfortunately, we are not finding any big shots in the innings of Bangladesh cricketers. There is no boundaries, there is no sixes. All the big shots which is really dried up. That one day happens when you are defeating big teams like AFC Kodikal, and then we can see that the body language of KC Sarkar is quite different. And now 3 overs remaining in the Bangladesh cricketers. Asghar is a man who is a subtle batsman in the middle. He's batting on 4 after filling 9 deliveries bucket. But playing the dot balls in this condition is not a good to see. And again, Dilip bowls outside the line of off time all the time in the world to batter to get that one into the long off. But he missed it completely, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Dilip bowls. This time again, batsman reaching for the delivery. But ball went in the gap, so that they got opportunity to come back for the second before Ashok is charging in from the deep long on to collect the ball in that cow corner, and at a couple of runs takes the total score into 23 for the loss of 3 wicket. Dilip again. Asghar this time lofted. He lofted, but I think the fielder is in the right position. Ashok taken that comfortable catch. The wicket number 4, which is back into pavilion. It's 23 for the loss of 4 wicket. The struggled innings of Asghar comes to an end. After facing 11 deliveries, he scored only 6. He wanted to get the big one, but I think he's not really getting that one from the middle of the bat, and placement is not good. So it's 23 for the loss of 4 wicket.
Damodar walks to the pavilion, walks to the middle correction after Asghar walking towards the pavilion. Quite surprising to see him as a number 6 batter. Damodar usually is the kind of batter who loves to come in the front as an opening batter. He's an experienced campaigner as far as the Mangaladevi cricket is concerned. Now I want to see how well he will going to handle the pressure. Damodar sometime is representative for KCCR Kadri as well. That's a few years. Now he is facing Dilip. Right arm over the wicket. This time beautifully ball. Perfect one. Sharp incoming delivery. And Damodar is out for golden duck. Captain strikes. Excellent off cutter, isn't it? Extra deviation. Beaten by the deviation of the delivery. Damodar looking for expansive drive but missed it completely. Then scoreboard is now 23 for the loss of 5 wicket. Now incoming batter is none other than absolutely one of the legend player in underarm cricket, Qureshi, walking towards the middle. But still I'm really not happy to see him as coming as a number 7 batter. He's still got a potential. He's still got is very hungry from the bat, who can contribute from the bat, but he's now coming as a number 7 batter here for Mangaladevi cricketers. But I think still there's some deliveries which is left. It is quite enough for Qureshi to get some acceleration, and we will see how he'll going to contribute from the bat. Dilip to ball, right arm over the wicket. This time lovely delivery, absolutely perfect leg cutter in occasion of Dilip. Because all the deliveries you can see in this over, he bowled off cutters. But now for Qureshi, he bowled a slight bit of outswing delivery, outgoing delivery. This time sharp incoming delivery. The batter completely missed it. Ball but just passed within the reach of the bat. And good over there from Dilip. After completion of over number 6, still Mangaladevi cricketers are searching for the right track and struggling in the middle. It's 23 for the loss of 5 wickets. 2 overs remaining. Just talking about the team like Mangaladevi cricketers, even Reliance cricketers, Japu also. The team which is still they are participating in the tournament, not regularly, but they wanted to be in the competition in the present cricket. There are some tournaments they are taking part, but most of the teams which is they are really gone behind the screen. So the teams like Hanuman cricketers also, they are only representing in the big tournament, UFC trophy. Otherwise, they are not taking part regularly in the tournaments. They got Morgan Gates, the Mangala Monkeys and Vijay Lakshmi cricketers. The big names, absolutely they gone. They wanted one time. They dominated teams because they are not getting the players. Once their top players are of course left segregated, but no one is coming there no one is replacing. The youngsters are not replacing here. At the same time is as a one more big problem, leg by call by umpire for the present cricket is that is expense of participating in cricket tournaments always going to be a very expensive. One more wicket is back in the pavilion in the form of run out. Qureshi unfortunately is not quite able to drag his bat. Of course he drags his bat, but I think is a man who is down at short extra cover. Is a big man. Manjunath did a good job to hit the stumps and back to pavilion. The owner of team we are talking about is a very difficult to run the team because it's about one season. It's going to be very expensive. It's not like that in the earlier days there will be less entry fees, and at the same time the cash prize money is also the less. The more than the players are playing for the money, they're playing for their team, so that even I think it's very expensive for keeping your players in your team, and there's a big problem here in the present cricket. The migration of the good players. It's always going to be a big challenge for the owner of the team. How to take your team, how to keep your team for a long time.
Outside the line of off time, going for the drive, missed it completely. It's a 24 for the loss of 6 wicket. Once it's got to be the concept of IPL, which is came in IPL, that is a Premier League, which is came in, then I think the face of cricket, which is changed in underarm cricket as well. Big prize monies, expensive for the owners to run a team. And again, I wanted to reverse sweep that one, so that's why there's some teams like the very good teams like it, which is gone behind the screen. 24 for the loss of 6 wicket. Here is again Dhanush balls. Total misjudgment of the line. One more over completed after completion of over number 7. Bangladesh cricketers absolutely is a disappointment performance from the bat. They got only 24 by losing 6 wicket. Last over remaining. So teams like sometimes the teams like UFCA is one more team which is gone behind the screen. The team which is dominated. So quite unfortunately we can see that yes, it's the teams which is produce a lot of good players, the big names, the legend players. Not only they are gone out behind the screen, along with that players, their teams also gone behind the screen. One more dotted delivery. The bowler is introduced. Correction, wide delivery. Dikshit is the bowler is introduced, and just an experiment here from the captain of the side. Drives that one down to deep long off region. Maybe the Kadri captain thinking about the one spare bowler can use. But in this condition, definitely they can go for the experiment when the opposition team is not having a big runs on the board. And it's a 36 for the loss of 6 wickets. Again, nicely driven down to mid-wicket region for a single. They're coming back for the second. In comes the throw from the deep, and ample time for the batter to complete the couple of runs. So some teams like we are talking about the Morgan Gate 11s, the Mangala Monkeys and the dominated teams, Sri Raghavendra cricketers, the 90s and 80s, they're the teams which is dominated. The underarm cricket this time again nicely driven down to deep long on. But good to see some the teams like Mangala cricketers and Ajmeshwar cricketers somewhere else they wanted to fight back in this modern cricket. 29 for the loss of 6 wicket, and last over is in progress. Outside the line of stump, second wide of this over. With that extra score, but moves on to 30 for the loss of 6 wickets. Drives that run nicely down to deep cow point region. They're running hard, but not more than a single. Ashit, the fielder, and the deep cow point is a good pair of hands. Absolutely no chance for second. 31 for the loss of 6 wicket. Now it's going to be last 2 deliveries left in the innings of Mangala cricketers. They got a 31. And going for the big shot, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump, but did the rest. 31, and it's not that it's going to be the total where you can say that it's a one-sided match, but you can, if you see the history in usage ground, even less than 30 is dependent. That's why this time driven that one down to wideish long on, but fielder in the deep takes a comfortable catch, and that's it. Mangala cricketers, they finished their 8 overs quota by scoring only 31 runs, and they lost 8 wickets for that, and more than that I think is a run which is not good enough. Target is just a 32 for the Kadri cricketers, one who chased down 52 runs in just 4.2 overs. Now they are going to chase only 32 runs to win this match, and question raising here is that will it going to be enough runs for the team like KCCR Kadri, for Mangala cricketers?
will Mangala cricketers has got that much of potential in the bowling department. But I don't think so. But cricket is, everybody knows that cricket is game of glorious uncertainty. If Kadri cricketers will going to take this lightly, then only the opportunity here for team Mangaladuri cricketers to win this match, because 32 to get from 8 overs, it's not looks like it's going to be the total where you can depend very easily. But if he bowls well, fields well, Mangaladuri cricketers can depend this total. And before the next the innings will going to start here, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, and I will going to tell you some the history of underarm cricket, just like is mentioned earlier. And Gopi knows that, because during I am performing in my team, he's the one is having a mic when I having a bat and ball, and he will definitely going to be the best one in a commentary to explain about the history of underarm cricket. Thank you. ಟೂರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೂರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಿರೋರಿಗಾಗಿ इस बार धन्यवाद सतीश. तो 32 रनों का लक्ष्य निर्धारित 8 ओवर में, और पहली गेंद को इस वक्त रवि सालियन पड्डयूर ने इस वक्त गेंद को ढकेल दिया लॉन्ग ऑफ पर. 1 रन का इजाफा, और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका. मंजुनाथ स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. किरण अनुभवी गेंदबाज मंगला देवी क्रिकेटर्स की ओर से इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और इस वक्त मंजुनाथ के लिए तो जहाँ तक सवाल है 31 रनों के अंदर रोक कर रखने का, तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा चमत्कारी गेंदबाजी ही मंगला देवी क्रिकेटर्स को इस मैच में विजय दिला सकती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले उन्हें काम करना है कि ये दोनों आरंभिक बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ना है जल्द से जल्द अगर उन्हें मैच में वापस आना है. तो मंजुनाथ के लिए ये गेंद बेहतर गेंद थी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम किरण. मच स्ट्रेट लाइन, और गेंद को ड्राइव करने का प्रयास में चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन 90 लाके से नुकसान के. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और इस बार बेहतर गेंद थी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन दिस टाइम. वंस अगेन मच स्ट्रेट लाइन, wanted to loft that one, not connected that one, and collected by wicket keeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है.
1 रनों पर बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है किरण का। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए मंजुनाथ के लिए, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। This time just wanted to play the reverse shot, not succeeded, and short fine leg fielder collected the ball, and there is no possibility of any run. एक बेहतर ओवर इस वक्त प्रगति पर, और एक बार फिर से किरण गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजुनाथ के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली मत स्ट्रेट लाइन, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट। कुछ हद तक धीमी गेंद उन्होंने फेंकी थी, और इस धीमेपन को मंजुनाथ समझ नहीं पाए, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से किरण बाएं हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजुनाथ के लिए। इस बार this time lofted that one. I think it's got a chance for the fielder, but he won't get that one, and it's gone over the fence for a 6. काफी ऊंचा उछाला था। Have a look at this in the replay. फील्डर मिड ऑन से जिस तरीके से दौड़े थे उससे एक बार अंदाजा ऐसा लगाया गया कि गेंद तक पहुंच जाएगी, लेकिन नहीं, गेंद इस वक्त सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर, और मंजुनाथ का खाता जो कि खुल चुका है इस छक्के के साथ। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं एनएम मैंगलोर और टॉर्पेडोस काना के सर्व सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। तो 7 रन बन चुके, एक बेहतर शुरुआत कर चुका है। कुछ ज्यादा लंबा लक्ष्य नहीं है इस वक्त, सिर्फ 32 रन बनाने हैं 8 ओवर में, और पहले ओवर के बाद 7 रन जोड़ चुका है। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से, और सुरेश बी एन की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज मुन्ना इस वक्त नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, और सामना करेंगे इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज रवि पटयूर। और जहां तक रवि पटयूर का सवाल है, पिछले मैच में जिस तरीके की विध्वंसक बल्लेबाजी उन्होंने की है KFC कोडिकल के खिलाफ, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके इरादे कितने साफ हैं। तो यहां पर देखना है कि इस मैच में वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं, क्या वो पिछले मैच के सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। और गेंदबाज मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद। ये गेंद इस बार ड्राइव किया रवि ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है उनके पारी का, और मंजुनाथ फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। जमीन के सहारे गेंद ड्राइव किया, रन के साथ स्ट्रोक्स के साथ दौड़ पड़े, और कोई उन्हें दिक्कत ही इस वक्त नहीं हुई 1 रन प्राप्त करने में। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इस वक्त। KCCR कदरे को इत्मीनान के साथ भी अगर वो बल्लेबाजी करते हैं तो 32 रनों के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं उनके निर्धारित 8 ओवर से पहले। और इस बीच गेंदबाज मुन्ना दाहिने हाथ ओवर द विकेट रवि के लिए लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर 10 रन बिना किसी नुकसान के। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्दा ट्रॉफी 2023 की बेहतरीन प्रगति यहाँ पर होते हुए, और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर, लेकिन नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर। मंजुनाथ स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं तैयार, ऑफ सबसे काफी बाहर, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर बेहतर तरीके से गेंद को इस वक्त रोका गया। हालांकि फिसल गए थे जरूर फील्डर गेंद को 20 गज के दायरे के अंदर रोकने में सफल। बेहतर फील्डिंग का नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज मंजुनाथ के लिए, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद
ऑफ स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा. 1 more run added to the total. फ्री हिट बरकरार और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार. फ्री हिट गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजुनाथ के लिए. मुन्ना अगली गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा और स्कोर बढ़कर इस 1 रन के साथ पहुंच चुका है. 14 रन बिना किसी नुकसान के. अभी भी फ्री हिट बरकरार है और अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए गेंदबाज मुन्ना इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज मंजुनाथ के लिए. इस बार बेहतर गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर. वाइड का इशारा. 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर. तो फ्री हिट अभी भी है और जहां तक सवाल है इस वक्त अब फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज रवि पडयूर और मुन्ना इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. टीम के अन्य खिलाड़ियों ने कुछ कहते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें इस वक्त गेंदबाजी करनी चाहिए और फ्री हिट गेंद लेकर तैयार. मुन्ना दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस बार हिट दैट वन एंड दिस इज गॉन आई थिंक मिलियन माइल्स. इट्स अ ह्यूज वन. छक्का इस वक्त रवि पडयूर के बल्ले से लगता हुआ और इस फ्री हिट गेंद पर जो करना चाहिए था वही किया इस वक्त रवि पडयूर ने. गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ विजय के और निकट हो चुका है केसीसीआर कदरी. 22 विदाउट लॉस. मुन्ना एक बार फिर से स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड. गेंद को उछाला फ्लैटर वर्जन पर लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद. एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. 23 नाउ इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और जहां तक सवाल है इस वक्त सामना का तो मंजुनाथ इस वक्त सामना करते हुए. Lofted and this time Manjunath, in fact it cuts it up just inside the fence, I think so. Oh, he's crossed over the fence. He's crossed over the fence after being flicking out of Whitish long on fielder's hand. देखिए वहां पर गेंद सीमा रेखा के अंदर टिप्पा खाई थी जरूर. फील्डर ने गेंद पर हाथ भी अड़ाया. आसान सा फील्डिंग था लेकिन गेंद उनके हाथों से इस वक्त निकल गई. फिसल कर सीधे सीमा रेखा के पार कर गई 4 रनों के लिए. 27 विदाउट लॉस. 2 overs completed. ಅಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಂ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 5 runs required in remaining 6 overs with the required run rate of 0.85 runs per over. 0.83 in fact. और पहली गेंद इस वक्त तीसरे ओवर की और गेंदबाज यहाँ पर शुरू कर चुके हैं. अगली गेंदबाज अश्विन. इस बार टॉप एज आसान सा कैच and that is the end of Ravi Padayur. First wicket gone and now they are 27 for 1. ಎನ್ಎಂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. This time good one from the bowler to a new man. और बल्लेबाज दीक्षित इस वक्त स्ट्राइक पर. गेंदबाज की ओर की अगली गेंद. ये गेंद बेहतर. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. मच स्ट्रेट लाइन और गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके बल्लेबाज और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में. एक बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ अश्विन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑफ द टोस. गेंद को मुड़ना चाहा. शॉट स्क्वायर लेग पर 1 रन इस बीच मिलेगा. मंजुनाथ पहुंच चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर. 28
for the loss of 1 wicket. और सिर्फ एक चौके की और ज़रूरत इस वक्त विजय के लिए कदरी केसीसीआर कदरी को यहाँ पर इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। मंजुनाथ सामना करते हुए इस वक्त अश्विन की गेंदों का। Just gone for a big one, misses. Good one, good over came to none from Ashwin. He conceded just 1 run in this over, and after 3 overs still KCCR Kadri looking in a commanding situation. It's 28 for the loss of 1 wicket. फर्स्ट बॉल फुल टॉस, स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, तो फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर, वाइड 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 3 to get now for KCCR Kadri for entering into the semi-final of this competition. Just gone for a big one, not succeeded. He's got a single for that. 1 रन मिलेगा और लेग बाय का इशारा. स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर. 30 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. Love that. This time I think it could be taken just inside defense and comfortably held. So that is the end of Manjunath. Good knock came from him, and a second wicket loss for KCCR Kadri. 30 for the loss of 2 wickets. Just wanted to play the reverse shot, misses. 2 रन अभी भी चाहिए विजय के लिए, और ये गेंद फिर से डॉट गेंद. दो रन अभी भी चाहिए विजय के लिए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार. Driven, that's it. Comprehensive victory for KCCR Kadri by 8 wickets with more than 4 overs to spare, and with that victory they are through to the semi-final of this competition. So comprehensive victory for them. और देखते हैं KCCR Kadri इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में किसका मुकाबला करेंगे. अगला मैच एनएम मैंगलोर और टॉर्पेडोज काना के बीच में खेला जाएगा, और उस मैच की विजेता टीम का मुकाबला सेमीफाइनल में KCCR Kadri के साथ होगा. तो अब वक्त है एक और बेहतर मैच का, एनएम मैंगलोर और टॉर्पेडोज काना के बीच, और वो मैच शुरू होगा यहाँ पर चंद लम्हों बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब एनएम मैंगलोर और टॉर्पेडोज काना की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद, थैंक यू.
So thank you very much, and we're now going to the man of the match of the previous match, which is goes to the captain of KCCR Kadri, Dilip, for his 2 overs, excellent 2 overs, 6 runs, and picked up 2 valuable wickets. I request Naresh Nachu of Gori Young Boys request you to present Man of the Match award for Dilip. I request Dilip of KCCR Kadri, please report to the presentation dais to collect your Man of the Match award for 2 overs, no made and 6 runs, and 2 wickets he taken. So now big match, and Torpedoes Khana versus Torpedoes Khana versus NM Cricketers Mangalore. The big match is coming up, and the news here is that captain of Torpedoes Khana won the toss and is rightly elected to ball first. And so far in this 2 matches, the 3 matches altogether, which is completed. The first match, KCCR Kadri, after winning toss, elected to field first. They won the match quite comprehensively. Even in the second match also, I think batting first team, which is won the match, which is we're talking about the second match. NM Cricketers Mangalore defeated Gori Young Boys. They failed to chase the 71. And the last match, the previous match, which is won by team KCCR Kadri, once again after winning the toss, elected to field first. That means so far in these 3 matches in a day, the batting first team won only once, and batting chasing team, they won 2 times. That means in this particular match, wait and see. After winning the toss, Torpedoes Khana elected to field first, and wait and see the strategy from Torpedoes Khana against NM Cricketers Mangalore. Both the teams has got a very good record in the present season, 22-23. Just like NM Cricketers Mangalore they are dominate this season with clinching some prestigious titles, and even Torpedoes Khana also they got 2 very good prestigious titles behind their name. And so that the level of competition is going to be very high, and just wait and see the level of competition between these 2 teams. I request organizers please present the team list of 2 teams. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So umpire is walking towards the middle here for a very important match. Torpedoes Khana takes on NM Cricketers Mangalore. Torpedoes has got a bye in their first round because only 6 teams taking part in this main pool, the ranking pool. NM Mangalore versus Torpedoes Khana in this match number 14. Match number 14 altogether is the day number 3 is in progress, the final day of this cricket tournament. And a very good crowd is gathered here in this cricket ground
of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is proudly organized by under the sweet memory of Suresh B and with the great leadership of Alfaz and with the support of Gori young boys. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. So signal straight away came from umpire, and Arish Padil umpire, and just saying that, just noticing the time, it's going to be a start. And here is the first ball, right arm over the wicket. Sharan will go into ball the first ball to Tawfiq. This time up and over, as like in the previous match. He's got this first run in the similar fashion, the same kind of start here from Tawfiq, just going over the top of the infield to get the boundary. And with the boundary score moves on to 2 on the board without loss of any wicket. Two without loss of any wicket. What a fantastic condition out here. Absolutely hot, but condition of the match is also very hot. Absolutely, the two very good teams are each other to get the place in the next round of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. A successful cricket tournament is in progress, and Sharan bowling away from us. Right arm over the wicket to Tawfiq. Tawfiq drives, beautiful shot, just crashing that one between backward point and the cow point, and before the fielder will go and run back and collect that one. Ample time for the batter to complete that 2 valuable runs. With the 2 valuable runs, cover numbers on to 4 on the board. Every time the bowler is giving some width for the batter, Tawfiq, and he loves to play that cover drives. Absolutely, one is upishly and another one is along the ground between backward point and cow point, and got a valuable couple of runs. A change in opening pair, and Mansoor now is just came into middle as an opener to open the innings for NM Cricketers Mangalore. Here is again right arm over the wicket. Sharan, this time ball is there. Opportunity for the fielder. Straightforward catch. The first pitch is back into pavilion. It's 4 for the loss of 1 wicket. The batsman just going off, try to get that one over the top of the infield, just like he did in the previous 2 deliveries. But this time the bowler is just slight a bit of shortening the length, and Tawfiq is fails to get the enough timing in the stroke, and is back into pavilion. Ali NM Cricketers ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಡಗೌಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. There is a 2 stands for both the teams, Kishore stand as well as Jaga stand. NM Cricketers ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಡಗೌಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
4 for the loss of 1 wicket, and the new batter just came into middle. Azim. This time is coming down in the order as a number 3 batter. Here is Sharan, right arm over wicket bounce. This time outside the line of off stump, beautifully bowled there by Sharan. This is the result of the bowler once he get the wicket. He's looked so confident, isn't it? And he's bowled a fantastic outswing delivery, where there's a perfect delivery for the incoming batsman Azim, and one more dotted delivery. It's a 4 for the loss of 1 wicket. This time again, lovely delivery right on the block hold. The batsman going for the drive and not really getting that much of enough timing. And Sharan balls the dotted delivery. Absolutely perfect stuff here from Sharan. It needed to be, because captain won the toss, elected to field first, and they wanted to get a good start from the ball. And Sharan so far is looking so good. After that, 4 runs in 2 deliveries. Then he bowled a very good 3 deliveries after that. This time, lovely shot, driven firmly down to deep long on for an easy single. The one of the fielder out of the 2 is there in the deep long on, so that it was just a single for Azim. And after completion of over number first, and a good start given there by Sharan in his first over. Once again, considering the fact that it's a power play over, and against NM Cricketers Mangalore, if you concede only 5 runs and you are getting a wicket, means it's always going to be a good start, and it's definitely going to be a good start given there by Sharan in the first over. So NM Cricketers Mangalore certainly not really bothered about that first over, because they knows that this is not a 5 overs game, this is not a 4 overs game, but it is a full 8 overs game. So that is a plenty of time for the recovery, plenty of time to get some good partnership. So one hour will not to give the exact picture of this match. And that NM Cricketers knows that they got another 7 overs to go. That means 42 deliveries remaining, excluding wides and no balls. They can get some good score. But coming back to their match against Gori Young Boys, they scored 70 plus runs in their stipulated 8 overs. So against Torpedoes Khana, they are not really expecting that much of runs, because Torpedoes Khana is that really got some good bowling department, and maybe thinking about the first thing they wanted to get 50 plus runs. And it's going to be a good total to depend, because NM Cricketers Mangalore has got a very good bowling department. So bowler from the far end. The first ball is in the air and is gone. Absolutely. Azim tried to get the acceleration by playing that improvising switch reverse sweep. Have a look at that one. Just he wanted to pedal that one by playing a horizontal bat. But ball once again straight to the hands of fielder. Sinan, the fielder, then the short third man. He's a one who taking both the catches. Even the direction is different. The fielding position which is different. He's taken a catch in the backward point region in the first over. Now he's standing in the short third man region, and he got one more opportunity to take the catch. The 2 catches for him, 2 wickets for Torpedoes Khana. Azim departs. Even a slight bit of surgery in the batting order from NM Cricketers Mangalore, but I think it's not really working out. The 2 wickets back into pavilion of NM Cricketers Mangalore. So Mubir is experienced bowler. He's got a very good breakthrough here. It's a very experienced and very economical bowler. Mubin is experienced campaigner, bowling right arm over wicket. This time slash, but very lucky here for Asif Adur. That ball is not really carried to the fielder. He's just wanted to go for the expansive off drive, but that ball is not really came from the middle of the bat. The ball is in there for a while, but fortunately for him, ball which is landed safely and in front of that cow point fielder. Ashwin is there in the cow point region. He won't get there, but here is a batter's good opportunity to complete the single. 6 for the loss of 2 wicket NM Cricketers Mangalore against Torpedoes Khana. It's a very good number of cricket crowds out there out here is enjoying the game of cricket. They know that they're going to witness one good match here. After that, a little bit disappointment finish in the last 3 matches. They're not really getting that much of entertainment what they're looking for. This time Mansoor is looking for one of his favorite switch it. But have a look at that. Have a look at the way that Mubin is changes line.
This is what you call that experience always comes into play. You know exactly the batsman playing for premeditated switch it, so he's just following the batter. Again, lovely delivery outside the line of flag stump, well within the reach of the batter. But I think this is the one line where Mansoor always enjoying the hitting the ball down to square leg region. But maybe that is beaten by the pace of that ball, as well as at the same time that ball is came along the carpet, and he's not really getting that much of short enough to pick that one from his bat. This time again that's going to be a white. Maybe but Mubin wanted to ball that one outside the line of off stump. He wanted to ball a different line, but by doing that he's just lost his concentration over the line, and ball is gone far away outside the line of off stump, and a white call by umpire Roland Pinto. 7 for the loss of 2 wicket in the over number second is in progress. This time again across the line. He wanted to swing that one. Beautifully balled there by Mubin. Absolutely. He's just testing the temperament of Mansoor so far. He's winning the race, in fact, I want to say. Because he knows that he's bowling one of the good striker of the ball. There is no excuse at all to bowling some loose deliveries. You know exactly you need to bowl some tighty line and length, and so far he's winning the race. It's 7 for the loss of 2 wickets. Mubin ball, what a delivery! Absolutely perfect line right on the block hold, and good over completed there by Mubin. Absolutely terrific over. So NM Cricketers Mangalore searching for the right track, struggling in the middle. 7 for the loss of 2 wickets. It's 7 for the loss of 2 wickets. 2 overs completed. The 3.5 runs per over. The run rate is not. I'm not. Don't think that it is going to be a good run rate when you are playing against a team like Tarparos Khana. NM Cricketers Mangalore got a slow start. Quite understandable that they lost 2 big wickets in the first 2 overs. So that they are a little bit in a defensive frame of mind. I'm not saying that a defensive frame of mind. Mansoor has tried his level best to get some big shot in the previous over, but he fails to make any impact in that over. Ashwin brought an attack from the commentary box and right arm over the wicket. First ball itself, he wanted to play the switch it, but didn't got enough placement in relegation. So before the fielder from backward point region to field that one, ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 8 on the board for the loss of 2 wickets. It's going to be a very good contest now. Ashwin versus Mansoor. Ashwin bowling with a short run off. Right arm over the wicket to Mansoor. Single-handed stroke and ball which is went into the hands of one of the spectators. It's not a fielder is taking a catch, but one of the spectators who's sitting in that wall is taking a catch, and that is 6 signal by umpire. And first ball itself, Mansoor is got a result in the form of maximum 14 for the loss of 2 wicket. Ashwin bowls again, lovely delivery in delegation. He bowled that one slight a bit of incoming and sharp incoming delivery, so that Mansoor couldn't manage to get that one from the middle of the bat, but enough for him to rotate the strike. 15 for the loss of 2 wicket. Just flum, absolutely flum, no doubt at all. Because Asif is shuffled across the line of the delivery. He just shuffled across the line of the delivery. He tried to swing that one on the square leg region. Not a bad idea to play that one. But especially when you are playing against the spinner like Ashwin, is known to be one of the master class spinner. Especially when he is bowling the leg cutter, is always going to be one of the wicket taking delivery. He is bowling that one. And you need to be very careful when you are going across the line of the delivery. You need to pick the wickets. You need to pick the ball from the bat. Otherwise, it's going to be more dangerous, and that's why they got a result. 15 for the loss of 3 wicket. ಅಲ್ಲಿ NM Cricketers ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ ಉಂಟು, ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So 15 for the loss of 3 wickets, and Asif departs. Good comeback, and as for the bowler's point of view, after that the first ball, the Mansoor hit 1-6 down to deep third man region. Then he's just back strongly with a wicket taking delivery. Atif, the captain of the side. This time he wanted to pedal that one. Free meditated. Otherwise it's going to be a juicy full toss. It's a juicy full toss in the sense that the ball is almost in the good height, where the batsman can enjoy some big shot, but I think Atif is trying to pedal that one, but not really getting that one from the middle of the bat. It's 15 for the loss of 3 wicket. Ashwin bowls. Oh, what a fantastic delivery! What a fantastic leg cutter here from Ashwin. He's knowing for that, but he's not still not satisfied. That's the reason that they got 1-6. He considered 1-6 in that over, and that's why he's not satisfied enough. But I think still it's a good over as far as the run rate is concerned. And NM Cricketers Mangalore are going exactly 5 runs per over. But I think it might be the first better over for team NM Cricketers Mangalore. Even they lost the wicket in that over, but they got a runs what they really wanted. It's 15 for the loss of 3 wicket after completion of over number 3. There is a time limitation which is given for each and every team to complete their 8 overs quota. You are wasting your time, means you are asking for trouble, because it's especially when it comes into play, when you are asking the one fielder to come inside the ring, especially in the batsman who is looking for acceleration of run rate. This one fielder is going to make a big impact. That's It's 15 for the loss of 3 wicket. They're going 5 runs per over, but I think Torpedo Khana might be a little bit looking in upper hand, but it's a 8 overs format of the game. It's very difficult to predict in this particular condition, because still they got a 5 overs. NM Cricketers Mangalore got a 8 wickets in hand, 7 wickets in hand, and they can get some good score in remaining overs if we bat well. Right arm over the wicket, first ball. Again, problem continues here for Mansoor, especially in this end. He's looking so good in the far end. He's got some runs, but as when you're coming batting in this end, especially against a fast bowler, it's slight a bit of struggling to make a contact with the bat. And the scoreboard remains on 15 for the loss of 3 wicket. Rilwan from the far end. Right arm over the guy, edging it down. This is a delicate, absolutely intelligent cricket. But even I think it's a better fielding there by the fielder. I think the ball is racing towards the fence, down to deep third man boundary. But I think the fielder is doing a great job. The jersey number 14 I want to see. He's a very young, talented player for the side of. Looks like it's a new face. Shafiq is a fielder, done a great job. Absolutely fantastic stop. Once it looks like when the batsman is edging it down, Mansoor quite deliberately adjusts that one so that he can beat that third man and fine leg fielder. But I think the fielder did a great job to stop the boundary. Couple of runs anyhow. 17 for the loss of 3 wicket. This time again I wanted to go for the reverse streak and missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. So lot of changes, lot of time taken there by the Torpedo Khana as far as the field set is concerned. I think rightly so, they're doing a right job, because he knows that what a danger of having these two batters in the middle. They need to get some wickets. It's a job which is not yet over. Still, if you think that the job is yet over after getting 3 wickets, I don't think so. This time, fantastic work, absolutely brilliant work. The wicketkeeper behind the stump in a fraction completes the job, and Mansoor slight a bit of looks like he's uncomfortable, as he was not really connecting the ball very well in this end, even though he got a 6 under his name. But as far as rotation of strike is concerned, and he's slight a bit of struggling
and that's the result. The wicketkeeper did a great job. In a fraction, he completes the job. It's 17 for the loss of 4 wickets. So what a fantastic wicket keeping there from Ashraf. The one good wicket keeper is doing the stumping job against one more good wicket keeper. Mansoor is absolutely one of the top wicket keeper. And here is Ashraf of Torpedoes Khana. Did a great job. Absolutely fantastic collection behind the wicket. It's 17 for the loss of 4 wickets. And warm welcome for the president of Gori Young Boys, Umesh Kotian, for this prestigious cricket tournament, the final day of this cricket tournament. And friendly atmosphere, the captain of Gori Young Boys, Karna, enjoying along with Naveen of Gori Young Boys, one successfully organized 2 very good cricket tournament in this UCG cricket ground. Again, nicely pedaled down to squash, fine leg region for a single, with a single score but Mozante 18 for the loss of 4 wicket. Now I think NM cricketers Bangalore have to be a little bit careful, because losing a wicket in a frequent intervals, that gives a lot of opportunity for the opposition team to tighten up the screws, isn't it? Runs which is hard to combine, at the same time wickets are tumbling, and even very difficult to get a partnership so far. Rilwan. Oh, what a delivery! What a delivery! Wrong shot selection here from captain of the side. In this condition, when captain need to play responsible innings, he is trying for the irresponsible cricketing stroke, and he just pays the penalty for that. And Rilwan strikes. NM have lost a huge wicket. Have a look at that one. Nowhere near to the line of the ball, isn't it? When you wanted to play that reverse stroke, you need to cover your stump, isn't it? At least if you miss the ball ball was going to hit your legs. But he just exposed his stump where he was standing. Where he was standing, there only you wanted to get that one into the down to fine third man region. But he misses the line completely. Then Rilwan bowled a beauty. Absolutely bowled a beauty. And now NM cricketers Bangalore in all short of trouble. They're in all short of trouble. 18 for the loss of 5 wickets. If you see that out of that 18 runs, if we exclude that 1-6 which came from the bat of Mansoor, but it's absolutely once again it's going to be horrible. That the scoreboard of NM cricketers Bangalore. More disappointment. Now, Torpedoes Khan is quickly realizing that 4 overs completed. Now time for Gopi to take over the microphone. Looks like he's very happy after having a very good lunch. Maybe had got a very good seafood. He looks very and very happy here. And Gopi, 18 for the loss of 5 wicket. Quite unusual scoreboard, isn't it? NM cricketers Bangalore one was got a 72 runs against the Gori Young Boys. Now they are struggling in the middle. 18 for the loss of 5 wicket. That's only because of Sauhardha Khana. They're dominating the first 4 overs. But I think Gopi, still 4 overs to go. And I think, do you think it's good enough for NM cricketers Bangalore to bounce back in the remaining 4 overs? एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा इस बार रनआउट के मौके से बच चुके हैं इस वक्त बल्लेबाज। और जहां तक सवाल है, फर्स्ट 4 overs belongs to the bowlers of Torpedoes Khana, who picked up 5 wickets, 5 important wickets of the batsmen of NM Bangalore and conceded just 18 runs. And a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Torpedoes Khana. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बाउंस बैक करने का, तो कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुँचना होगा यहाँ पर NM Bangalore के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। क्योंकि टॉर्पेडोज खाना के पास भी सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, और उस लाइनअप पर अगर दबाव डालना है तो न सिर्फ उन्हें बेहतर गेंदबाजी करनी होगी, तो इससे पहले उन्हें कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुँचना होगा। तो 5 विकेटें गिर चुके हैं और इस बीच अश्विन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार बेहतर लेग कटर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता रियाज ने, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को उछाल नहीं पाया। जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम रिकॉग्नाइज्ड पैर इस वक्त क्रीज पर मौजूद अजहर और रियाज, और इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है एक बेहतर साझेदारी यहां पर निभाने की।
और गेंदबाज ये गेंद इस बार बेहतर दैट इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज कॉल्ड एज अ मैजिशियन बॉलर। और जहां तक सवाल है इस वक्त इस गेंद पर बिल्कुल टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद थी। गेंद को इस वक्त खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज टोरपेडोस काना के, और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार चिप गया। गेंद को एनफील्ड क्लियर करते हुए फील्डर वहां पर पीछे मौजूद, सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5 चोटी के बल्लेबाज पेविलियन वापस लौट चुके हैं। तौफीक, मंसूर, अजीम, आसिफ और आतिफ। तो क्रीज पर मौजूद इस वक्त रियाज और अजहर गेंद बल्लेबाजी करते हैं। रिवर्स शॉट खेल को खेलना चाह नॉट क्वाइट मिडविकेट, इनफैक्ट फील्डर स्टूड टू स्क्वायर इनफैक्ट बट द बैट्समैन गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। निश्चित रूप से यहाँ पर गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष जारी है। 2 प्रतिष्ठित टीमें यहाँ पर इस मैच में भिड़ रही है। एनएम मैंगलोर और टोरपेडोस काना, और इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष इस वक्त जारी है। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट कटर एंड द बॉल एंड इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड द 5th ओवर हैज बीन केम टू एंड। वन मोर गुड ओवर इन टोरपेडोस काना's point of view came to an end. 5 runs came from this over and 3 runs came from this over and fantastic over came to an end from Ashwin. 5 overs completed, 21 runs on the board, 5 wicket lost. Still the batsmen of NM Mangalore are now searching for the right track. और गोरी यंग बॉयज के खिलाफ एनएम मैंगलोर ने पहले 4 ओवर में 28 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद के 4 ओवर में उन्होंने 33 रन जोड़े थे। तो यहाँ पर 5 ओवर में 21 रन जरूर है, तो 3 ओवर का खेल यहाँ पर बाकी है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि जिस तरीके की बल्लेबाजी अंतिम 3-4 ओवर में गोरी यंग बॉयज के खिलाफ एनएम मैंगलोर के बल्लेबाजों ने की थी, उस तरीके की बल्लेबाजी क्या वो बचे हुए 3 ओवर में अपना पाते हैं। लेकिन वहाँ पर तब सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, जबकि यहाँ पर 5 विकेट गिर चुके हैं एनएम मैंगलोर के। और जहाँ तक टोरपेडोस काना का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए जो 5 ओवर के बेहतर गेंदबाजी के सिलसिले को आने वाले 3 ओवर में बरकरार रखने का। रिलवान इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए 6ठा ओवर शुरू होता हुआ और अजहर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट पहली गेंद लेकर तैयार अजहर के लिए। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से इस वक्त दबाव बल्लेबाजों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ, जैसा कि मैंने पहले भी फरमाया है, कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा या फिर 50 के आंकड़े को पार करना होगा उन्हें, अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो निर्धारित 8 ओवर में। और इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज अजहर, माफ कीजिए गेंदबाज रिलवान अजहर के लिए गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार उछालना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट फील्डर स्टैंडिंग एट शॉर्ट स्क्वायर लेग, ही जस्ट पिक द बॉल। और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। स्लोअर प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर एनएम मैंगलोर। रिजवान इन दिनों में काफ़ी चमकते हुए खिलाड़ी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने दिया है और यहाँ पर इस मैच में उसी तरीके की बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजी में इस वक्त ज़रूरत है उनके टीम को। और देखना है कि रियाज इस वक्त उस कमी को पूरा कर पाते हैं नहीं। ये गेंद इस बार लेग से बाहर गेंद निकल चुकी है फाइन लेग पर और इससे पहले की गेंद को दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यशस्वितम यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, हल्के से गेंद को मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ डीप फाइन लेग पर और आखिरकार जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त दाहिने हाथ
ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, पॉइंट पर रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। अजहर काफी तेज, आखिरकार उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई एक रन प्राप्त करने में। 25 for the loss of 5 wicket. Match number 4 of the day 3 of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023, is now progressing here under this bright sunshiny afternoon. और इस बीच गेंदबाज रिलवान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार स्वीप किया, इस बार स्क्वायर लेग पर रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका और इस बार टकरा चुका है, निशाना टकरा चुका है। और देखना यह है कि इस बार अंपायर क्या निर्धार देते हैं। तो इस बीच इम्तियाज उनकी ओर दौड़ कर आए और आखिरकार रोनाल्ड पिंटो वहां पर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि जी आप चीखना चिल्लाना रोकिए, मैं इस वक्त निर्धार आपको बताता हूं कि क्या है। और यहां पर तीसरे अंपायर के लिए उन्होंने मांग यहां पर की है। तो यहां पर निशाना स्टंप्स पर टकराया था, बिल्स डिस्टर्ब हुए थे और देखने वाली बात यह है कि तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। He's gone. So one more wicket fallen. और इस बार बारी समाप्त हो चुकी है बल्लेबाज की। तो यहां पर जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था, देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था। फॉलो थ्रू में गेंद पर लपके गेंद को इस तो उन्होंने थ्रो किया और गेंद लगभग स्टंप्स के बेल्स को उड़ाकर इस वक्त ले गई और इसी के साथ अजहर की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएम मैंगलोर के लिए परेशानियां और बढ़ चुकी है। दे आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। तो इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज। तो अजहर का विकेट के पतन के बाद एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त रियाज के ऊपर आन पड़ी है अपने टीम को इस संकटमय परिस्थितियों से बाहर निकालने की। और देखते हैं वो किस तरीके के बल्लेबाज यहां पर अपनाते हैं। और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार लेग से बाहर, शॉर्ट फाइन लेग पर इम्तियाज के हाथों में गेंद चूकी इस वक्त। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। इसको डिफ्लेक्शन ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर। 26 in fact, 26 for the loss of 6 wicket and 6 overs completed. So still a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Torpedoes. 2 overs left in overall calculation in their innings. और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में एनएम मैंगलोर के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए शरण कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई और रियाज
इस वक्त सामना करते हैं। निस्संदेह रियाज के दिमाग में ये कश्मकश जरूर चल रही है कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाई जाए, क्योंकि सिर्फ 4 विकेटें इस वक्त बाकी बच चुके हैं, कोई रिकॉग्नाइज्ड बल्लेबाज उनके सामने नहीं है इस वक्त। तो इस वक्त ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए अपील को नकार दिया अंपायर ने। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर। और जहां तक नए बल्लेबाज का सवाल है, इमरान इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज शरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा, दूसरा रन तेजी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को गैप को चुनते हुए इस वक्त ड्राइव किया था खूबसूरती के साथ, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। एब्सोल्युटली difficult time continuing here for the batsmen of NM Bangalore. They needed a run at this stage to get back in this match. और इस बीच ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंदबाज की दाईं ओर से मिड ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 30 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 30 for the loss of 6 wicket. A terrific battle is now continuing here between the bat and ball at the situation between these two teams. और इस बीच शरण रियाज के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस वक्त इस बार ऑन साइड पर गेंद को ब्लाइंड स्विंग खेलना चाहा, इमरान काफी आगे निकला है, इस बीच निशाना चूक चुका है, और इन मौके पर बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर वापस लौट चुके, काफी आगे निकल चुके थे इमरान, लेकिन अंतिम क्षण में सही तरीके से वापस भेजा बल्लेबाज स्ट्राइक रन के रियाज। और जहां तक रियाज का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक वो अपने पास रखना चाहते हैं, और यहां पर अंपायर ने इशारा किया कि उनके स्टिपुलेटेड टाइम निगदित समय समाप्त हो चुका, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। सिर्फ 4 मात्र खिलाड़ी अब 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, और देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज किस तरह उसका फायदा यहां पर उठाते हैं। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाज की गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, सही गेंद घोषित, रन से नहीं मिलेगा, बेहतर गेंदबाजी और सही गेंद घोषित, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 30 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त इस बार चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए आसानी के साथ इस कैच को लपक लिया है, और इसी के साथ रियाज की पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से उछाला था, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए गेंद किस वक्त उछाला, लॉन्ग ऑफ पर, कवर पॉइंट पर कहना पड़ेगा, और वहां पर कवर पॉइंट फील्डर ने कोई गलती नहीं की। 7वां ओवर समाप्त हो चुका है, 27 रन बन चुके हैं, 5 रन इस ओवर में बने, 1 विकेट गिरा रियाज का, और 7 ओवर के बाद अभी भी ऐसा करना पड़ेगा। NM Bangalore आर नाउ स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। It's 30 for the loss of 7 wickets after completion of 7 overs, and just a last over to go now in their innings. तो नए बल्लेबाज इमरान इस वक्त स्ट्राइक रन पर मौजूद, नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद है इस वक्त, और ये गेंद स्वीप करना चाहा चूके, और इसी के साथ विदाउट फेसिंग एनी डिलीवरी द न्यू बैट्समैन इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन। इनफैक्ट इट्स इमरान इज बैकिंग टू पेविलियन, और वहां पर इमरान ने गेंद को बिना देखे रन लेना चाहा, तेज तरीके की विकेट कीपिंग यहाँ पर की विकेट कीपर ने, और यहाँ पर ऐसा कहते हुए अंपायर इस वक्त ऐसा देखना पड़ेगा इमरान शायद बच चुके हैं, और नए बल्लेबाज को आउट होकर पेविलियन जाना पड़ेगा बिना किसी गेंद का सामना किए हुए। 30 for the loss of 7 wickets. What a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Toscana. और निस्संदेह यहाँ पर उनके गेंदबाज लगभग छाते हुए, और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ नंबर 9 बल्लेबाज। इट्स 30 for the loss of 8 wickets, 5 balls left,
in overall calculation in their innings. तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद मुबीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए, और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर इस वक्त प्रगति पर, और फिर से एक बार गेंदबाज मुबीर गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज अयाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद लेग से बाहर, और इम्तियाज चूके मिसअंडरस्टैंडिंग, रन आउट था वहां पर, लेकिन काफी वाइड थ्रो, और शायद रन दौड़ते तो शायद रन भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर इम्तियाज का काफी वाइड थ्रो विकेट कीपर के पहुंच से बाहर, और वाइड का इशारा अंपायर का हो चुका। 32 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, और अभी भी 4 गेंदें उनकी पारी में बाकी। तो अयाज इस गेंद पर बच चुके हैं, और एक बार फिर से मुबीर की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। मुबीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद जाती हुई इससे पहले की गेंद लॉन्ग ऑन पर पहुंचे, मिड ऑन पर शरण ने गेंद को फील्ड कर लिया, और शरण जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 33 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, एंड नाउ जस्ट 3 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। मुबीर इस वक्त गेंदबाजी करेंगे फैसल के लिए, तो 3 गेंदें अभी भी बाकी, और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद swings it away, and this is an formless struck, it's gone many a miles, a perfect struck came from the number 10 batsman, 6 runs. So have a look at this in the replay, just swept it away fine, and he got that one right from the middle of the bat. So this is an absolute outstanding struck, और यहाँ पर अंपायर ने इशारा किया कि एक और खिलाड़ी को अंदर बुला लिया जाएगा। तो इस बार फैसल का स्ट्रोक काफी बेहतर था, और ये छक्का इस वक्त कुछ हद तक उनके रन की गति को एक्सेलरेशन दिलाने में सहकारी बन चुका है। तो एक और खिलाड़ी अंदर, अब 3 खिलाड़ी सिर्फ 20 करके दायरे के बाहर तैनात, 2 गेंदें बाकी, और इस वक्त देखते हैं इन 2 गेंदों में बल्लेबाज और क्या करते हैं। अगर एक और छक्का लगता है तो ऐसा कहना पड़ेगा एलए मैंगलोर एक चुनौती भरे स्कोर तक पहुंच सकता है। तो मुबीर इस वक्त तैयार, तो इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त, और गेंद सीमा लगा जवाब 6 रनों के लिए। Consecutive sixes, this time in a flatter motion, and the scoreboard is now rising up to 45. Have a look at this. This is an absolutely flatter motion, just wide of the deep backward square leg fielder. It just pitches on that steps of a deep backward square leg, pitched on that steps. Consecutive sixes, last ball left, 45 for 8, and the batsman Faisal looking on fire. The bowler is now straight away under pressure. अगली गेंद, ये गेंद इस बार स्विंग करना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद थी, और इसी के साथ एक बेहतर गेंद, बेहतर पारी यहां पर खेल चुके हैं, छोटी मगर बेहतर पारी, अंतिम गेंद पर डॉट करने में सफल। देखिए यहां पर डॉट हुई थी, और एनएम क्रिकेटर्स की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। They finished 45. They struggling start for them. In fact, finally they finished a little bit well because of that 2 consecutive sixes hit by the number 10 batsman Faisal, and they finished with 45 for the loss of 9 wickets in the stipulated 8 overs. And now the target for Torpedo-Skana is 46. They have to score for victory. Exactly 5.75 runs per over they have to score for victory. With the help of 10 wickets they have to score for victory. In fact, that means they have to score 46, and there's 48 stipulated deliveries. With the help of 10 wickets the present equation shows for them. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर उनकी पारी की शुरुआत होगी टॉर्पेडो-स्काना की। तो आइए सतीश आपको बुलाते हैं एक बार फिर से। तो 2 छक्का अंतिम 2 गेंदों में लग चुका है, अंतिम ओवर के चौथे और 5वें गेंद में, वो 2 लगातार छक्का कुछ हद तक एनएम की रन की गति को बढ़ोतरी देने में
सहकारी बन चुका 46 रनों का लक्ष्य। लेकिन एनएम मैंगलोर के पास सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है और राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर के गेंदबाज एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, घातक गेंदबाजी करते हैं तो मुश्किलें पैदा हो सकती है। और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, टॉर्पेडोज खाना को इस वक्त अपनानी है एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, इंटेलिजेंट बैटिंग जिसे कहते हैं, और खासकर उनके सलामी बल्लेबाजों को इस वक्त बेहतर प्रदर्शन देना होगा अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप ऑफ एनएम मैंगलोर। Well, thank you, Gopi. Coming back there, 2 6s. If you believe me or not, when that 6 which came, first 6 which came from the bat of Faisal, just I'm entering into the ground after the lunch break. I'm not really realizing that which batsman hitting that one. I'm not believing my eyes, Gopi, because number 10 batsman Faisal hitting that kind of cricketing strokes, unbelievable. And certainly he will going to get a promotion in coming matches. He is definitely going to get promotion in the batting order. The way that he hit the ball, absolutely fantastic, isn't it? The first ball right from the middle of the bat, absolutely one of the best stroke I want to say. But second stroke, there's a punishable delivery, which is far away outside the line of leg stump, and Faisal once again capitalizing that one. And altogether, Gopi, you're right that 2 6s which came from the bat of number 10 batter Faisal, really changing the complexion of this game. And that 2 6s will going to give a lot of confidence for the bowlers of NM Cricketers Bangalore. And wait and see how NM Cricketers Bangalore will going to capitalize that 2 6s which came from the bat of Faisal. Can they able to justify that 2 6s? Because at one stage looks like they're struggling to get listed. They will going to finish their innings for the just 35 runs. But now they got 45 runs, more than what they're expecting. They got more than what they're expecting, 10 runs more than what they're really looking for. And certainly it's going to be a run which is NM Cricketers bowlers definitely going to capitalize. And coming back to bowlers, Gopi, Torpedoes Khana, so far I think the bowlers did a great job. Of course, the hitting which is a part of cricket, and especially in a modern day cricket, you are not you are not really relaxing if you're bowling to the number 10 batsman or 11 batsman. But sometime the condition is really asking the batsman to go for the big shot, and when you get the connection, proper connection, then the bowler have to absolutely take the challenge from even the number 10 and 11 batters. That's the beauty of modern good day cricket. You can't underestimate the potential and ability of the batters, and might be that 2 6s which came from the bat of Faisal will going to give a lot of energy for the bowlers of NM Cricketers Bangalore. But I think Torpedoes Khana certainly, and coming back, there's batting department. They're also suddenly got a very good batting department. I don't think they will going to feel that much of pressure to get that 45, even though that 2 6s which came from that last over. But still, it's a 45. I don't think it's going to be a huge total. But once just you can say that it's a fighting total. Just is a fighting total, and where NM Cricketers Bangalore can fight in that particular runs. And wait and see how Torpedoes Khana will going to start. The victory of Torpedoes Khana all left to the start which they wanted to get from the opening batters. So 2 opening batters, absolutely the talented and technical player, and Bashit is in strikers end, and in other end Tanveer, and the players were playing for same team for young friend Surua for several years, so that that might be the best combination you can get for Torpedoes Khana to open the innings. Bashit is absolutely the kind of batters who can be very, very handy for any opposition. If he able to bat for 1, 2, 3 to 4 overs, he can change the complexion of the bat. But Tanveer is also still little master. Got all the varieties, ranges of cricketing strokes, and he can be the very handy. So that I think NM Cricketers Bangalore might not be there relaxing there. Even the 46 runs they're going to defend, they need to work hard. They need to work hard to win this match. The first ball and first over, Mujib has got a ball in his hand, bowling away from us. Right arm over the gate, and wanted to sweep that one. Ball just going outside the line of leg stump. He wanted to sweep that one, but umpire Arish Padil not interested. It's first delivery, and the batter Bashit completely missed it, and Tanveer is just not impressed with the decision. And here is again bowler Mujib. Right arm over the wicket, balls beautifully bowled. That's the line. That's the line you need to bowl outside the line of off stump, and wicketkeeper behind the stump Mansoor did the rest, and back to his bowling mark.
This time tries that one down to square leg region. Faisal misfielded that one, so that batter has the opportunity to get the single. One without loss of any wicket. One without loss of any wicket. Bashit is off the mark. 45, which is a total score of 46. 46, which is the target. Now the ball to ball run which is required. Ball to ball run which is required. 3 balls completed. 45 runs required from 45 balls as Mujib right arm. No ball called by umpire. Driven that one nicely down to deep extra coverage, and but ball definitely going to cut it off by the fielder from the deep long off to run towards his left. To run towards his left hand. Ample time for the batter to complete the couple of runs. Not only the couple of runs, they will going to get 3 valuable runs, and more than anything else, I think they will going to get free hit delivery. They will going to get a free hit delivery for that no ball, and of course the back leg of the batter bowler Mujib just looks like the brushing that the popping grease, and of course the return grease what you're talking about, and because of that they will going to get a free hit delivery. So this is going to be very costly for enemy cricketers Bangalore, because if the batsman will going to capitalize, so I think I think this, if the batter will go to capitalize, then enemy cricketers Bangalore has got a level of definitely going to be have a dangerous that yes, if a batsman get any big shot, it's going to be a big runs for team Torpedo-Kana. And we will see how Mujib will going to survive, and we will see how Tanvir will going to capitalize this free hit delivery, and it's going to be a free hit delivery. Here is the bowler, right arm over wicket Mujib. Was Tanvir, went for the big shot, appeal for leg before wicket. You won't get wicket for leg before wicket because it's a free hit delivery, and maybe the batsman is shuffled across the line up to delivery, looking in front, but you are not getting a wicket for that. You can't give the leg before wicket for that free hit delivery. It's 5 without loss of any wicket. So Mujib survives, bowled a very good delivery to survive from that free delivery. It's 5 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Mujib bowls, this time lofted, what a shot, great shot, as straight as an arrow, as straight as an arrow. This is what I'm talking about, the Bashit is all about, absolutely the experience what he has got behind, but more than anything else, that technique, absolutely, I love that technique, what is implemented for that stroke, absolutely into the side screen. It's not a side screen we're watching in international cricket, but there's a dark green side screen, and the scores be at 11 on the board now. Improvisation, bit defeats the infield, running down to deep square leg boundary for 4 runs. Absolutely delicate, intelligent and delicate cricketing stroke there from Bashit. Have a look at how well he's improvised that cricketing stroke. Just moving towards the offside to let the ball coming to his bat, then closing the face of the bat and running it down to square leg boundary for 4 runs. 15 came from that first over. 15 came from the first over. That means absolutely explosive start here for Torpedo-Kana. So the first semi-final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023 will be played against, of course, the team which is came from the local pools. There is a Red Wings Kunjat Bail takes on Zaman Boys Kalladka. That semi-final is going to play exactly at 4:30. And make a little bit of correction. The time of the first semi-final is 4:30. That means both the teams have to report before 15 minutes. Before 15 minutes, need to report and complete your formalities of signatures and get ready to start the match exactly at 4:30. Please note, both the teams. So what a fantastic start here for Torpedo-Kana. Bashit is on fire. What a fantastic improvisation, isn't it? Two very good quality cricketing stroke. You can't blame the bowler for that, but you need to appreciate the batter for that. Riaz brought into attack. Starts with the big wide. It starts with the big wide. That's all happening when you are wanted to try to extra pace. By doing that, he's just lost his concentration over the line. Maybe the Riaz is a slight bit of aggressive frame of mind, saying that he need to bowl one good over here for his team if he wanted to back into the game. 16 on the board. Again, that ball is
outside the line of off stump, but I think it's a slight bit of misjudgment. Ball which is just passing inside the line, we can see there. Absolutely. That's why umpire Roland Pinto is not interested, and even the batsman is not interested to drive the ball, and even umpire is not interested to call the wide, because that ball is just coming inside the line. 16 for the loss of 1 wicket in the over. Number second is in progress. Second over of the power play. There is a deep extra cover and deep long. The two fielders are in the deep for Tanveer. Again, quicker one, beaten by the pace. Absolutely perfect start. After that, first one is a wide. The two very good deliveries to followed by the Riaz. This time he is able to defeat the bat of Tanveer. Tanveer is taking his own time. Relaxation is so important, isn't it? He just left the crease, going to his left and having a little bit time to make a concentration. And here is again Riaz. This time went for the reverse sweep. Didn't got enough bat onto that, but quite enough for him to bat a single for that. With that single score, it moves on to 17 for the loss of 1 wicket. Have a look at the crowd here. Absolutely fantastic, isn't it? It's all, you can see that all around the ground. We can see the number of spectators, very colourful and decent spectators out here in UCG cricket ground. They're enjoying the game of cricket of this Sauhardha Trophy 2023. The fantastic match is in progress. Riaz again. Bounce. Bashit this time just a run out. And Faisal wanted to get the run out in non-striker's end, but I think it's a very difficult angle for the fielder to return the ball to the non-striker's end, so that batsman has got plenty of time to complete the single. Bashit almost drags the ball from outside the line of off stump. He wanted to swing that one on the mid-wicket region, but he got one single for that. 18 for the loss of 1 wicket in the over. Number second is in progress. Riaz again. Right arm over the slower one, but leg cutter. And Tanveer doesn't realizing that going to be leg cutter. Ball just passing is around his legs, missing his leg stump. But I think is a lucky escape here for Riaz. But he need to try for special something, because if you wanted to get the result, you have to get the. You need to play with some gamble, and gamble in the sense bowling some slow deliveries. This time that ball is looks like, I think that ball is almost looks like it's got a bat onto that, and rightly so. And after getting inside edge of the bat, one more singles. 19 on the board without loss of any wicket. 19 without loss of any wicket. Going exactly 9.5 runs per hour. I want to see that equation now. 19 which is deducted from 46. That means they have to get another 27 runs to win this match. So 27 more runs required for the victory. 19 for the loss of 1 wicket. 27 required from 6 overs. That means a 36 ball 27 equation still favoring Torpedoes Khana. Not only in the sense of required run rate, but at the same time in form of the wickets in hand, because without losing a wicket they got that 19 runs. That might be the danger sign here for NM Cricketers Bangalore, unless they fails to get a wicket here. They're very difficult for NM Cricketers Bangalore to back into the game. And wait and see how captain will go to produce the breakthrough here for NM. Right arm over wicket, slower one, change of pace, but Tanveer just wanted to swing that one, missed it completely. But umpire Harish Patil not missing his opportunity to lift the leg to signal the leg by. With that leg by, Skoban moves on to 20 for the loss of 1 wicket. 26 to get from 35 balls. Bashit is looking so good so far in this particular match. Again, appeal for leg. It's given him. It's given him because he's just bending a lot and try to play across the line of the delivery. I think it's the right decision there from umpire Harish Patil. I have to see it in a replay. Have a look at it, a slower one, and absolutely it's right in front of some, but ball is not having that much of a bounce here. The ball is just going to hit the midland leg stump, and there's evidence enough here for Harish Patil to raise his finger. Just like I mentioned about, if NM Cricketers Mangalore wanted to back into this game, they need to pick the wickets. Need to pick the big wicket, but danger here for Torpedoes Khana is that they lost the subtle batsman Bashit back into pavilion. Bashit back into pavilion after they played a small cameo, which is quite enough for this team to get a good start with a boundary and a sixes which is scored from his bat. But unfortunately he wanted to play that across the line, and that ball has got a bit of extra bounce, so that they're finding himself right in front of middle stump. It's 20 for the loss of 1 wicket.
The new batsman in is Imtiaz. He's a new batter as a number 3 batter. Is a game into middle. He just loves that place, number 3, because in this number 3 position, he achieved a lot when he was representing for Young Friends Ruwa. Now he's representing for Torpedoes Khana. And both Bashir, Tanveer and Imtiaz, those are very experienced campaigner for who are represented for Young Friends Ruwa. Definitely they got a very good understanding. Step that one. He is a kind of batsman. He need to start his innings in the similar fashion by doing the job by sweeping the ball, placing the ball here and there. He wanted to get the runs, so he starts his journey in this particular match. It's 21 for the loss of 1 wicket. This time Bashir looking for the expansive drive. Almost he drags the ball. Didn't got enough timing in that stroke. Tanveer. Again Atif is bowling some slower one, testing the temperament of the batters by bowling a slower ones. So far in this over, I'm not seeing that Atif is trying for any extra pace, but he bowling some slower ones. This is the right strategy if he wanted to get the wicket. He need to bowl some variation, which is very important. Again, nicely bowled, equally well played there by Imtiaz. That ball is a Yorker and delivery, but the line is a slight bit of a ball going to miss the leg stump. But still Imtiaz has to get the bat onto that to get the single, and with the singles cover numbers on to 22 for the loss of 1 wicket. 22. Outside line of Ramba going for the drive, misses it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. 23 for the loss of 1 wicket. Over number 3 completed. Still Torpedoes Khana looking in a commanding position because half of the job which is completed. And yet to complete another half of the job. That means 23 runs which is scored, and they have to get another 23 runs to win this match. But they got a 23 in just 3 overs. The big difference in this 23 is that they got that 23 in 18 balls, and they have to get another 23 in the remaining 5 overs. That means 30 balls they have to get 23 runs. They got another extra 7 deliveries. So that I think still it looks like Torpedoes Khana looking in a driver's seat of winning this match. But cricket, everybody knows this. This is a cricket which is an unpredictable game. You can't say anything in cricket. Cricket is a game of glorious uncertainty. And wait and see how well NM Cricketers Bangalore will going to come back. How well they're going to bounce back. Needed 2-3 good overs here. But sensible batting. Just a sensible batting is required here for Torpedoes Khana after getting such a good start. I don't think Torpedoes Khana will going to lose the momentum here. They doesn't want to lose the momentum here. Then Ayaz, I think, is brought into attack from the far end. First ball, as always, Imtiaz is so good in the sweeping the ball, and he swept that one very nicely down to deep fine region for a single. And with that single, score moves on to 24 for the loss of 1 wicket. There is a big number of crowds watching and enjoying the game of cricket here, because both the teams has got their own supporters. This time the ball is absolutely stuck right in front of the middle stump. No way to get away from that decision from umpire Roland Peter. Knows that ball is almost hitting his back leg, and his back leg is right in front of middle stump. Have a look at that one replay. Absolutely flum. Have a look at the Mansoor is appealing Roland Pinto. How is that, and how is that? And of course he's got a result. So 24 for the loss of 2 wicket. Now I think simply Torpedoes Khana and just throwing the wicket. You can't do the mistakes when you're playing against a team like NM Cricketers Bangalore. If you give one simple opportunity for them to bounce back, they will go into grab the opportunity. They will definitely going to grab the opportunity. That's why it's very important here for Torpedoes Khana. After they got a good start through Bashit, through Tanveer, they need to capitalize. It's a 24 for the loss of 2 wicket. So new batsman just came into middle. Ashraf
Ashraf is a good striker of the ball, and he picked up a single for that. It's a quick single, risky single. But Imtiaz is a very good runner between the wicket. The condition is not that much of easy for any players, especially in this condition, very hot here in Mangalore. More than 37 degrees Celsius, it's not easy. The players will go into tired very quickly. So scoreboard is a 25, quarter century coming up here for Torpedoes Khana. It's 25 for the loss of 2 wicket. Ayaz, after he got a very good, very important breakthrough, now he's bowling from the far end to Imtiaz. This Ahmed has nicely swapped that one round to square leg region for a single. With that single, scoreboard now moves on to 26 for the loss of 2 wicket. So 26 for the loss of 2 wicket. The 4th over is in progress. 20 runs required for the victory. This time, lofted. What a shot. That's a huge one. Absolutely fantastic struck there from Ashraf. Effortlessly played. Just stand and delivered. Have a look at it on a replay. Ayaz just bowled that one. Not that much of shot, but Ashraf is a kind of batter who never looks like he's going to see the condition of. But he's just seeing that how he will going to hit the ball, and he clearing the fence. It's 32 for the loss of 2 wicket. Top edge opportunity for the fielder to take the catch, and he drops. Azim, I think, is a fielder. He's dropped the catch. The Ashraf is got a life. He wanted to finish it off the things quickly. It's 33 for the loss of 2 wicket after completion of over number 4. Now just 13 more runs required for the victory. Slight a bit of changes in a schedule of this match. Please note that winner of this match will go into play against KCCR Kadri, and after this match, after we are getting some the break, we are going to start first the semi-final. That will be going to between winner of this match versus KCCR Kadri. Please note the changes, slight a bit of changes. And it's not the match between Zaman Boys Kaladka and Red Wings Kunjatbail. That match will go into play after the match between KCCR Kadri versus winner of this match. And 4 overs completed, 13 more runs required for the victory. This time a lovely delivery indeed, right on the block hold. And Gopi, welcome back. There's 13 more runs required for the victory, and looks like Torpedoes Khana absolutely complete control over this match, isn't it? They need to get only 13 runs to win this match, and unless any miracle and magical bowling, I think very difficult for NM Cricketers Mangalore to back into this game. Exactly, Satish. Or his ball straight into the hands of commentary box stand. और आपने माइक मेरे हवाले सौंपा सतीश, और माइक मेरे हवाले सौंपने से अच्छा है आप ही इसे खत्म कर देते हैं. तो छक्का यहाँ पर लग चुका है, और that 6 brought Torpedoes Khana more nearer to the victory. 7 more to get. And what a fantastic strike came from the bat of Ashraf. 6 number second came from the bat of him. और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची. बाई का इशारा और बाई के इस रन के साथ द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. और सिर्फ एक और छक्के की जरूरत विजय के लिए है. टॉर्पेडोज खाना ऐसा कहना पड़ेगा अपने विजय के द्वार पर आकर रुक चुका है. तो अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रियाज, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, लेकिन नॉट पॉइंट मिडली गेट द लास्ट पॉइंट, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर. It's 41 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress.
Next one, change of pace, 2 for outside the off stump. One more wide. तो 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 4 रन चाहिए विजय के लिए. गेंदबाज इस वक्त तैयार था, इन हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए. लेग स्टंप से बाहर, क्विक वन, बट no use of that. Missing 2 for outside the off stump, 2 for outside the leg stump in fact. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 42 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है, अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो. और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार था, इन हाथों पर था विकेट. ये गेंद इस बार बाउल है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं होगा एनएम मैगलू का. और एक बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है अशरफ का. सो फैंटास्टिक नॉक केम्स टू एन एंड. और एनएम के कप्तान आतिफ ने उनसे हाथ मिलाया इस वक्त इस बेहतर पारी के लिए और सराहना की उनकी. और इसी के साथ अशरफ आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हैं कि बेहतरीन पारी खेलने के बाद. ही इज आउट फॉर 14 इंक्लूडिंग 2 सिक्सेस. And third wicket loss for Torpedoes Kana. It's 42 for the loss of 3 wickets. इस बीच गेंद इस वक्त पहुंचते हुए ऑफ स्टंप से बाहर और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर अभी भी रुक चुका है 42 रनों पर. स्कोर स्टेज 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 6th ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को. अगली गेंद just wanted to play reverse shot, not succeeded and collected by wicketkeeper, short fine leg fielder behind the stump. Still 4 more runs now they have to score for victory. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. Lofted in the air and a chance, and that is the end of Imtiaz. 42 for 4 and a good knock came student from him. 5 singles he scored. He scored 5 runs into his credit and now it's 42 for the loss of 4 wicket. Have a look at this in the replay. और के टॉप पेज पर टकराने के बाद वहां पर लपक ली गई. Good one. 42 for the loss of 4 wicket. The scoreboard stays. Akram, the new man, is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा. This time, once again a dot ball and dot ball to end the over. 6 overs completed. 42 for 4. Maiden over from the bowler. Faisal, wicket maiden over has been came to an end. 6 overs gone. It's 42 for 4. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂತವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೊ Atif, the bowler, here he bowls first ball. 11 balls and 4 runs required. Got him.
One more wicket fallen. 10 balls, 4 runs. Drives down to long on. Single run added. And with that single run, the scoreboard moving up to 43 for the loss of 5 wicket. Nine balls, 3 runs required. Off the toes, short square leg per. Direct shines, and it's going to be a third umpire. I think Ashwin is backing to pavilion. You know, वो जानते हैं यहाँ पर कि वो out हैं और इसी के साथ certainly that is an out. That is an absolutely out. Just short of out of his crease. 43 for 6. 8 balls and 3 required. So 8 balls and 3 runs required, and the new man is now comes out to the middle. तो अब यहाँ पर 8 गेंदें बाकी हैं और 3 रन चाहिए विजय के लिए. नए बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए रिलवान और आतिफ इस वक्त गेंद का सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार that is an absolutely, I think the celebration is going on here. This could be the turning of the match. This could be the turning point of the match. 7th wicket down. 43 for 7. This is an absolutely irresponsible cricket from the batsmen of Torpedoes. So run out, he's gone in the face of run out. It's 43 for 7, and now 7 balls remaining and 3 runs required. 3 wickets they got in their hand. और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को बिना देखे रन लेना चाहा था, चूंकि और गेंद यहाँ पर सीधे विकेट कीपर मंसूर विकेटों को यहाँ पर उड़ाते हुए. 7 गेंदें 3 रन. एक या दो 3 डॉट गेंदे अगर गिरते हैं तो निस्संदेह इस मैच में जान आ सकता है. तो अब 3 विकेटें सुरक्षित. विकेटों की जरूरत आतिफ इस वक्त चाहिए उन्हें एक घातक गेंदबाजी की. और न्यू बैट्समैन स्ट्रेट अवे ही इज नाउ ऑन अंडर प्रेशर. सराउंडिंग फील्डिंग और इस वक्त तैयार. गेंदबाज आतिफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. और देखना यह कि बल्लेबाज इस गेंद पर क्या करते हैं. सो 7 balls and 3 runs required. और आतिफ विकेटों की तलाश में दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट. गेंद को खेला इस वक्त पॉइंट पर. जस्ट अ सिंगल दे गॉट. 2 runs required of last 6 balls. That means in last over they have to score 2 runs for victory. और सतीश इस वक्त मैच एक तरफा लग रहा था, तो अंतिम चंद गेंदों में शायद इर्रेस्पॉन्सिबल क्रिकेट
इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो टोरपेडोस काना ने इस वक्त दिखाया है पिछले 10 या 11 गेंद में। हालांकि वो जानते थे कि वो आसानी के साथ जीत चुके हैं, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला। मैच यहाँ पर देखिए कुछ हद तक फिसलने वाला था कि अंतिम गेंद पर 1 रन बन चुका है। 2 रन 6 गेंदों पर बनाने हैं और निस्संदेह चमत्कारी गेंदबाजी ही अब एनएम क्रिकेटर्स की इस मैच में विजय दिला सकते हैं, लेकिन मौका जरूर है इस वक्त एनएम बैंगलोर को। Exactly, Gopi. This is cricket, Gopi. You cannot underestimate the game of cricket, isn't it? And just like you're mentioning about irresponsible, and suddenly, Gopi, the confidence is different and overconfidence is different, isn't it? Looks like they're overconfidence. The maiden over, do you believe me or not? They play maiden over and they got first run. After that six, Ashraf one hit 1-6. After that got their first run after 10 deliveries. After they facing the 10 deliveries, they got the first run. This is called overconfidence, Gopi. It's too much, and that's why they are now a little bit under pressure because 1 wicket here onwards in the first ball, it's going to be more trouble for Torpedoes Kara. Exactly, Satish. 6 balls 2 runs, first ball, and this time wide. सारे दबावों को इस वक्त समाप्त कर चुके हैं फैसल इस वाइड के साथ। तो मैच में कुछ हद तक कशिश आई थी, लेकिन यहाँ पर फैसल का यह वाइड लगभग सब कुछ समाप्त कर चुका है एनएम बैंगलोर के लिए। तो इस वक्त गेंदबाज तैयार। That's it. Torpedoes Kana 3 wickets victory with 5 balls to spare, and they are with this victory they are through to the semi-final of this competition. And now the semi-final match, KC Sarkade will take over Torpedoes Kana. So I request Mr. Javed of 4S4 Fish Market MOM to please hand over the man of the match prize to the man of the match winner, and we just still announce the man of the match player's name. So man of the match of this match award goes to Rilwan, who bowled superbly, conceded just 8 runs in his 2 overs scored and captured 2 wickets. And Rilwan adjudged the man of the match. I request Mr. Rilwan of Torpedoes Kana, please come on to the stage and receive the man of the match award from Mr. Javed, 4S4 Fish Merchant MOM. I request Mr. Javed, 4S4 Fish Merchant MOM, to please distribute the man of the match for Rilwan of Torpedoes Kana for his best bowling performance of 2 wickets for conceding just 8 runs in his 2 overs. Mr. Rilwan of Torpedoes Kana.
So the first semi-final match will be played between the KCCR Kadri versus Torpedoes Kana. That semi-final match is going to start exactly at 4 p.m. And both teams play as note. The first semi-final match of this tournament is going to start between KCCR Kadri versus Torpedoes Kana at exactly 4 p.m. And we'll be back right after the short break right after the 25-minute short break. And we'll be back exactly at 4 p.m. When the first semi-final match of this tournament is going to play between KCCR Kadri versus Torpedoes Kana. Thank you.
Welcome back. I request the the players of KCCR Kadri as well as players of Team Torpedoes Khana to please be reported here for the signatures. Please get ready for the first semi-final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is proudly organized by Gori young boys under the leadership of Alfaz and the sweet memory of late Suresh Bian. We are ready for the first semi-final. I request the captain, please get ready. Kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. So 3 days of wonderful cricket tournament which is running very successfully, and special thanks to Abu Bakar Ashik, partner of Spirits Saloon, Exim Line UAE, and at the same time we'd like to give special thanks to Mudassar Kurg, the Nucleus Exhibition Dubai UAE, and Javed Forest of Fish Merchant, Azmal Tens Gold Mangalore, a special thanks to the donors who are contributed for the success of this cricket tournament, and a special thanks to Gori family Mangalore and Gori fans from Qatar, and the special thanks to Praveen Chandra Alwa, corporator MCC. Nabil from Dubai UAE, and special thanks to Spirits and Company, Exim Line Nucleus, Umesh Kotian.
I request all the players of KCCR Kadri and Torpedoes Khana please to be reported here to make a sign in the official chart. Torpedoes Khana ಹಾಗೂ KCCR Kadri ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು KCCR Kadri ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಅಲ್ಲಿ KCCR ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು KCCR ಕದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ KCCR ಕದ್ರಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು
ಅಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಕಾರಣದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request once again the remaining players of Torpedoes Corner please to be reported here to sign in the official chart. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ತಂಡದವರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು
I request the captains of Torpedoes Ghana and KCC Arkadri please to be reported here for toss. KCC Arkadri ಹಾಗೂ Torpedoes Ghana ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So KCC Arkadri after won the toss, they elected to field first, and I request both. In fact, they elected to field first. So KCC Arkadri after won the toss, they elected to field first against Torpedoes Ghana, the first semi-final of this prestigious cricket tournament. Sauhardha Trophy 2023 is now coming up live exclusively right in front of you within just a short while. And that match starts within just a short while, and we'll be back right after a short break with Satish in English when the first semi-final match will going to commence right after the short break. Thank you. Dhanyavad. Welcome back. Thank you very much, Gopi. Welcome back for the first semi-final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, and the tournament which is organized with the sweet memory of late Suresh Bian under the leadership of Alfaz with the support of Gori young boy.
Of course, support from everyone, those who are contributed heartily for the success of this cricket tournament. Special thanks to all the donors so far did a great job for this for this Sauhardha Trophy 2023. They wholeheartedly supported for this cricket tournament. Thank you very much on behalf of organizers. So we are into the semi-final. The news that after winning the toss, captain of KCCR Kadri, the third time they are winning the toss and rightly elected to the field first. Once again, the captain of team KCCR Kadri registered winning the toss against Torpedoes Khana, and they are rightly elected to field first. Coming back to these two teams, especially KCCR Kadri, they got a very good performance so far in this particular tournament, and especially in the round number 1 and in that second round, and highly dominated performance from Kadri. And coming back to the Torpedoes Khana, suddenly after defeating one of the favorite of coming to the final of this prestigious cricket tournament, NM Cricketers Mangalore in the quarter final, and there certainly looks like they're also favorite here. And looks like both the teams has got a potential of going to the final of this prestigious cricket tournament, and we're expecting some good battle between these two teams to get the place in the final. First ball, right over the wicket, Bashi drives that one, lack of placement. Very interesting field set, isn't it? Very interesting field set. We can see that mid-on is not orthodox, almost just left of umpire is standing, and one more fielder is orthodox mid-on, and a very unorthodox fielding set here for Bashir. This time, lovely delivery. Beautifully bowled. This is what the speciality of Dilip, and sometime he can make impact with this spin bowling, especially the ball mixing of the delivery very well, bowling both outgoing and incoming delivery. This is the wrong one here from Dilip, and Bashir misjudging the turn of the ball. This time top edge, opportunity for a big man. Opportunity for the big man. Every time when they're taking the first wickets, this man's contribution is again from the fielder in the short cover point region, making no mistake at all. And once again, it's a top edge there from Bashit. Might be that was the fielding set which is encouraged the batsman to go for the big shot. And Manjunath is making no mistake at all. Once again, he's contributed with the catch for his team. And it's not a good start there from Bashit for his team. Bashit, without making any impact from his bat, is out for the duck. And the wicket number first, which is back into pavilion of Torpedoes Khana. 0 for 1, and a good start from the captain of the side. Dilip once again being the captain of the side, producing a vital breakthrough here. And because seeing that Bashit is the one who's got the flying start against NM Cricketers Mangalore when they're chasing 46 to win the match. He's got a 1-6 and a bound in the first over, and they won't open the gate for team Torpedoes Khana. They goes on win the match. Of course, at last a slight bit of nervous moment for Torpedoes Khana when they're throwing the wicket in to try to finish the match quickly, and then it's a match which is finished in the last over. And now the new batter just came into middle for Torpedoes Khana, is a man who played one good innings for his team in the previous match. The experienced Ashraf will go in to take the strike. Outside the line of off stump, misjudgment by the batter Ashraf. He thought it might be a wide, but it is a couple of inches that ball inside the line, so that there is no question of any run. Score remains on correction, yet to open the account, and here is Divin. The Dilip balls this time lofted it handsomely. That ball is going out of the park for the huge 6. This is a man I want to say is effortlessly sending the balls out of the park. What he did in the previous match against NM Cricketers Mangalore, the same thing is continues here, and a perfect batter to come in the power play. And have a look at the stroke, absolutely effortless, isn't it? It's one of the most difficult stroke to play in the books when you are dispatching the ball down to deep extra cover. Lofted deep extra cover stroke is always going to be a difficult stroke to play, especially in under-arm cricket. But for Ashraf, it's so simple, absolutely so simple. And he got a very important blow in this over. This time a slow over one. Looks like the batter is just missed the opportunity
both the full toss in the sense might be ball just slipping out of the hand of Dilip. I think so. But he is very lucky that ball is not came to the bat of Ashraf. But even though only one cricketing stroke which is came in that over, and that is quite enough for Torpedoes Kannada to get the 6 runs. But I think Dilip definitely once again he's got a good start, excluding that 1-6. I think he bowled brilliantly and he picked up a big wicket of Bashit in that over. And Torpedoes Kannada 6 for the loss of 1 wicket. Satish, not in commentary, but of course the bowler is bowling his first over and the second over of the innings of Torpedoes Kannada. And Satish so far has got a good tournament. Might be got some punishment, but altogether, totally, if you see his performance in this tournament, I think it's very good enough for KCCR Kadri. Every time they wanted to get a good start from Satish. First ball, right arm over the wicket, beautifully ball, perfect one outside the line of off stump, and the Bashir tried to cut that one. Correction, Tanveer wanted to cut that one, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Satish bowling with a short run up, past the umpire over the wicket. This time Tanveer drives that one right in between mid off and extra cover. The bit of before the fielder from a short extra cover to field that one down at just moving to us right to field that one down at extra cover. Ample time for the batter to get the single. With that single score, Namuza 7 on the board. Now Ashok is just charging from the deep long on towards the bowler, and captain himself is charging from the deep square leg, having some word with the Satish. Might be that is talking about talking about the potential of the batsman in front of Satish. What kind of line you need to bowl to him, because he's such a dangerous batsman. Satish bowling away from us. Right arm over the wicket, drives it unofficially but quite safely between mid off and extra cover. So before the fielder from wideish long off to collect that one, ample time for Ashraf to get the single there. With the single score, moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Satish so happy to concede the single to Ashraf, and now he's get ready to bowling to Tanveer. This time I think the bowler did a great job, absolutely perfect job. Seeing that the batter Tanveer is a premeditated sweep shot is wanted to get by doing that. It is just changing the line and bowled a perfect line to defeat the bat of Tanveer. Score remains on 8 for the loss of 1 wicket. Dilip again balls. This time appeal for leg before wicket, but certainly that ball is going down the leg stump, missing the leg stump, and leg by call by umpire, rightly so. So Satish absolutely, and shout there from Satish from the wicket keeper, but certainly that ball is will going to miss the leg stump. 9 on the board for the loss of 1 wicket. And once again a good start came from Satish, but job which is not yet over. And over number second is in progress. Satish again, right arm over wicket balls, beautifully balled, perfect one in the head. Just seeing that the batsman might try to make a little bit room to play the shot, he's just following the batter and bowling around his legs, and manage the batter to play forcibly down to short mid wicket region. One more good over which is completed. After completion of over number 2, searching for the right track, Torpedoes Kannada 10 for the loss of 1 wicket. Have a look at the crowd, absolutely, even though have got a slight bit of a break after that last quarter final, the break of almost 1.5 hours, but crowd once again slowly gathering here and to witness this first semi-final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. No change in bowling. Dilip to continue, captain of the side, but now he's bowling with some protection in the deep after that power play over. Deep extra cover is there, long off and long on, and mid wicket, deep square leg. Even one fielder is situated for the switch it down to deep backward point. Here is the first ball.
This time Ashraf again going for the expansive drive. Very lucky indeed, because the last moment he's got a bat onto that. Otherwise that ball going to crash the midline leg stump of Ashraf. He's got last moment, he's got a bat. And there's no chance at all for any run. They're not interested at all for the run. Again going for the drive. Missed it completely. Again Dilip has got a very good start in the second over. The 5 fielders outside the ring. 2-4 in the inside the ring. 2 in the off and 2 in the on. This time he lofted. This is a fantastic strike. What a great striker of the ball. Absolutely. I want to say that so far in this 3 days of cricket tournament, I never see the batsman like Ashraf who effortlessly hit the 6. Effortless. Absolutely effortless. The timing is absolutely exquisite. Great striker of the ball. Absolutely great striker of the ball. 16 for the loss of 1 wicket. Dilip has been punished by Ashraf, and second sixer which came from his bat. The previous match also he's really did a lot of damages for NM Cricketers Bangalore. Now looks like the 2 umpires are walking together. They're just wanted to see that ball which is used for this match, this particular match, looks like it's the problem there. Well, it is good enough to continue. Umpire asking for the ball from the organizers. Might be that after that one big stroke came from the bat of Ashraf, the ball has got a slight bit of damage. Already 2 6 came from the bat of Ashraf. So after a lot of conversation with the fielding team and the batters of the middle with the umpires, they both are happy and satisfied enough that they will going to continue after they change the ball. And 16 for the loss of 1 wicket. And over number 3 is in progress. Dilip once again back to his bowling mark, and he will go into ball to the right-hander batsman Ashraf. Twice is dispatched at 6 of the bowling of Dilip. Again he drives that one, but this time a ball is went straight to the hands of short mid-on, and there is no chance at all for any runs. Score remains on 16 for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Dilip again bowling with a short run off. Alright, Amawat wicket he bowls. This time swings and missed. And Dilip just quickly realizing that if you bowl the ball which is on the slot, one of the strongest zone of the batter, you would definitely very good, difficult to survive. So these balls slide a bit away from the bat of the batsman. This is a good line. Because Dilip quickly realizing that the kind of line need to be bowled to Ashraf. So he bowled a slow leg cut interrogation. Negotiated very well by Ashraf in that occasion. Just turns that one down to square leg region with the wrist work, and he picked up a single, and he will going to keep the strike for the next over. So 3 overs completed. After completion of over number 3, the equal battle is on for from these two very good teams. It's 17 for the loss of 1 wicket. If you see that out of 17, the 2 sixes is really make a big impact, isn't it? The 2 sixes, that out of 17, the 12 runs in 2 sixes, and that's only because of Ashraf is again looking so dangerous.
but converting that start into the big innings is so important for Torpedoes Khana if they wanted to get a good score here. Because he's a man. Ashraf is a kind of batter who always be the very dangerous batsman. And that's why Tanveer knows that's why he's just having a little bit word with him to need to be very careful, because he's now going to play against Raghu. He's one of the wicket-taking bowler of the side of KCCR Kadri. And that's why the captain of the side, Kadri, doesn't want to waste the time. You know exactly, as quick as possible, you need to send this man, danger man, back into pavilion. Otherwise, it's going to be very difficult for them to restrict the opposition less than 50. So Raghu again with a short run up, right arm over the wicket. Drives, bowler's back grab. Have a look at the power behind the stroke. Absolutely, even Raghu is one of the best fielder. He himself feels the ball, because that ball is be driven powerfully by Ashraf down to deep long off. And with that single scoreboard, Namuzan to 20 on the board. Little correction, scoreboard is 18 on the board. Slight a bit of correction. 18 on the board. 18 for the loss of 1 wicket in the over number fourth is in progress. In fact, Raghu again right arm over the wicket. Bowls this time. Tanveer swings at one leg cutter, but beaten by the flight and turn of the ball. Otherwise, he can able to deliver that one down to square leg. But no contact with the bat, so that leg by call by umpire. With that leg by, scoreboard Namuzan to 19 for the loss of 1 wicket. Again Raghu, short run up, right arm over the wicket to Ashraf. This time drives, but this time he will going to find the fielder, I think so. Yes, he does. This time he's played that one in a flatter version, isn't it? He played that one in a flatter version and pays the penalty board. And more than anything else, I want to say, he just played against the spinner. If you wanted to get the big stroke, I think so when you drives the ball against the spin, is always going to be a difficult for you to get the distance. And at the same time, you are playing against the direction of the wind. From this end, you can get the distance. You can see that the wind which is flowing from commentary box to in front of commentary box. But he wanted to get the ball towards the commentary box end. I think not only the timing is enough for them, but at the same time needed extra power, as well as he's played that one in a flatter version and he faced the penalty for that. This is what I'm talking about. Raghu once again proving that why he is one of the important bowler in the side of bowling department of KCCR Kadri registered. Immediately when captain wanted a breakthrough, and Raghu produced that breakthrough. Huge wicket of Ashraf. Once again Ashraf, he got a start but fails to convert that start into big innings. This is always going to be a frustration for any batter when you got a good start and fails to get that one into the big one. And Raghu has got a fantastic breakthrough here. It's a 19 for the loss of 2 wicket. New batsman in his Imtiaz is coming down in the order. Again pedal that one down to square leg region for a single. With a single, scoreboard moves on to 20 for the loss of 2 wicket. I really impressed with the addition of the captain of Torpedoes Khana, because Imtiaz is a number 3 batsman, and but in this match is coming number 4 only because they lost the first wicket Bashit too early, so that they're sending Ashraf as a number 3 batsman to just exploit the condition of fielding restriction, and he succeeded to get 2 sixes. And here is a Raghu, right arm over the wicket. Across the line, swings, but didn't got enough bat onto that. He will go into cross off for a single for that. Tanveer is not really looking that much of comfortable in the middle. Every time he's looking for some drive, is very difficult, finding difficult to get the timing behind the stroke. And especially when you are playing against the spin bowler, it's not so easy. And Raghu is a kind of bowler mixing up the delivery very well. And the scoreboard is at 21 for the loss of 2 wicket in the over number 4 is in progress. Raghu again. This time Imtiaz, typical Imtiaz, chance of run out. Raghu missed the stump because the batter came right in front of Raghu when he wanted to try to return the ball. But I think it's a great over, absolutely great over there from Raghu for KCCR Kadri. The kind of restriction which is required from him, and he just produced a restriction. At the same time, he's produced the breakthrough. 4 completed after completion of 4 overs. And team Torpedoes Khana searching for the right track. They're 22 for the loss of 2 wicket.
and wait and see how many runs they will go into score. And Gopi, big semi-final, and just like we are mentioning about these two teams, definitely has got a potential of qualify for the finals. But I think it's a good toss to win here for Kadri again. The third time the captain winning the toss, elected to field first. Once again, the bowlers doing a fantastic job. First 4 overs, it definitely belongs to KCC or Kadri. But I think remaining 4 overs, definitely Torpedoes Kana has got an opportunity to accelerate the run rate. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा, इस वक्त जो टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया था केसीसीआर कदरी के कप्तान ने, उस निर्धार का समर्थन करते हुए फर्स्ट 4 ओवर्स पहले 4 ओवर में उन्होंने गेंदबाजी की उनके गेंदबाजों ने, और खासकर यहाँ पर 2 विकेटें भी वो उखाड़ने में सफल। 4 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन टॉर्पेडोज काना के लिए बाउंस बैक करने का मौका यहाँ पर जरूर है। और जहाँ तक सवाल है बाउंस बैक करने का, तो इस वक्त देखना यह है कि बाउंस बैक करने के लिए वो किस तरीके की रणनीति यहाँ पर अपनाते हैं बल्लेबाजी में। 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ और गेंदबाज धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद लेग स्टंप पर टकरा चुकी है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ इम्तियाज। और यहां पर असल में क्या हुआ था मैं देखना चाहूंगा। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। इम्तियाज देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद शायद ऑफ कटर गेंद थी, गेंद बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे स्टंप पर जा टकराए और लेग स्टंप का गिल्ली बिल्स जो कि उड़कर गिरता हुआ इस वक्त, और एक बेहतरीन गेंद के जरिए धनुष ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं। टॉर्पेडोज का ना इस वक्त तीसरा विकेट खो चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। ओ, गेंद उनके लगभग बल्ले के अंदरूनी किनारे पर टकराने के बाद, पैरों पर टकराने के बाद सीधे स्टंप्सों पर टकराए थे और आखिरकार यहां पर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और इस विकेट के पतन के साथ नाउ दे आर लुकिंग in trouble now. 22 for the loss of 3 wicket, and the number 5 batsman, one more good striker of the ball, Akram, is now comes out to the middle. और जहाँ तक सवाल है टॉर्पेडोज काना के एक अच्छा स्कोर यहाँ पर बनाने का, तो टॉर्पेडोज काना के लिए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों की उपस्थिति इस वक्त बेहद ज़रूरी है, तनवीर और अकरम। और खासकर तनवीर आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे। अभी तक हालांकि ज़्यादा कुछ रन उन्होंने नहीं बनाए हैं, लेकिन एक छोड़ पर विकेट बचा कर रखने में वो सफल रहे हैं और उनके सामने 3 विकेट गिर चुके हैं। अकरम का आगमन हो चुका है और अकरम देखते हैं उनकी टीम के लिए क्या करते हैं। धनुष एक बार फिर से तैयार, दाहिने आता ऊपर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, लगो स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन। सो दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस। और देखिए रिप्ले में इस वक्त दिखाया जा रहा है किस तरीके से अकरम ने स्ट्रोक को खेला था और यहां पर कैच छूट चुका है। तो आसान सा मौका गवाते हुए और अकरम जैसे बल्लेबाजों के लिए जीवदान देना निस्संदेह उनके लिए भारी पड़ सकता है अगर वहां पर अकरम एक बेहतर पारी यहां पर खेलते हैं तो यहां पर इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त धनुष तैयार, इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन्स इस बीच नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। कुल मिलाकर 23 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद बेहतर गेंद थी, ऑफ कटर गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा, गेंद बल्ले का शायद नहीं, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों से चूकने के बाद फाइन लेग पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। गेंदबाज ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मेकिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर। सो really the batsmen of Torpedoes Kana are still searching for runs at this situation। और फिर से एक बार गेंदबाज धनुष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मेकिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, गॉन थ्रू अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 26 रनों पर। फैंटास्टिक ओवर केम्स टू एन एंड फ्रॉम द बॉलर धनुष, कंसीडर जस्ट 4 runs in this over and got the wicket of इम्तियाज। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 26 for the loss of 3 wicket after completion of 5 overs। The present run rate is now exactly progressing here 5.20 runs per over. Still 3 overs left in their innings. That means 18 balls to go and 7 wickets they got kept intact. First semi-final match of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy, is now progressing here। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस श्रृंखला का, तो ये श्रृंखला ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए और हम विशेष
अभिवादन स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे अबू बकर आशिक पार्टनर स्पीड सैलून एक्जिम लाइन यूएई और मुदस्सर कूर्ग न्यूक्लियस एग्जीबिशन दुबई यूएई इनको जिन्होंने इस श्रृंखला के सफलता के लिए संपूर्ण सहकार हमें दिया है। और जहां तक गेंदबाजी का इस वक्त सवाल है तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए रघु और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज तनवीर। तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 5 ओवर के बाद है इस वक्त 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर लेकर रघु इस वक्त तैयार। अब तक केसीसीआर कदरी के गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी के लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी इस वक्त की है और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन एंड ही फाइट्स द गैप एज वेल। It's gone over the fence and backward a third man for a boundary. He just played that one with a reverse shot and got the gap perfectly. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त डिस्पैच कर दिया डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए तनवीर ने। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका तनवीर और अकरम की उपस्थिति इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के लिए बेहद जरूरी है अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होना है तो। और तनवीर और अकरम खुद जानते हैं कि उन्हें इस वक्त क्रीज पर जमना है और एक साझेदारी निभानी है। और जहां तक केसीसीआर कदरी का सवाल है इस वक्त उन्हें चाहिए एक विकेट, खासकर इस जोड़ी को उन्हें तोड़ना होगा अगर उन्हें यहां पर दबाव बल्लेबाजों के ऊपर और बढ़ाना है तो। ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई प्लम इन फ्रंट और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी, गेंद उनके शायद बैकलेग पर टकराई और उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा और अंपायर ने यहां पर उंगली उठा दी। तो इसी के साथ तनवीर कुछ हद तक नजर आ रहे थे आत्मविश्वास के जरिए। ये देखिए किस तरीके से यहां पर गेंद उनके पैरों पर टकराई थी और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है तनवीर का। विकेट नंबर 4 डाउन। Now they are once again looking in trouble. It's 30 for the loss of 4 wickets. तो अकरम एक छोड़ पर मौजूद दूसरे बल्लेबाज नंबर 6 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और तनवीर और अकरम एक साझेदारी निभाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर तनवीर का विकेट गिर चुका है और चौका प्रदान करने के बाद एक बेहतर कमबैक यहाँ पर कर चुके हैं गेंदबाज रघु विकेट प्राप्त करने के बाद तनवीर का। तो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए सिनान एक और बेहतर बल्लेबाज टॉर्पेडोज खाना की ओर से और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज राघु की ओवर की अगली गेंद का दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए 4 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और राघु एक बार पूरी तरह फील्डिंग में मुआयना करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची रन के लिए दौड़ पड़े नो स्ट्राइकर पर थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो पहुंचे इससे पहले निशाना नहीं टकराया लेकिन अगर निशाने पर थ्रो टकराता तो निस्संदेह यहां पर बल्लेबाज के लिए कुछ हद तक खतरा पैदा हो सकता था लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 31 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और अकरम इस बीच फील्डिंग का मुआयना करते हुए इस वक्त तैयार गेंदबाज यहां पर राघु की ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट राघु इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग कटर गेंद खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ दिया गेंद जाती हुई इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन मिलेगा। थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ कलाइयों के साथ ऑन साइड पर मोड़ दिया था। ऐसा करना पड़ेगा, इस लेग कटर गेंद को पहले ही भांप लिया था, गेंद के टर्न को पहले ही भांप लिया था, खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। फिर से एक बार गेंदबाज राघु गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सिनन इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार सिनन के लिए ऑन साइड पर मोड़ा इस वक्त डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़कर आए मंजुनाथ जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और इससे पहले कि वो गेंद को थ्रो करे नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 33 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर पकड़ 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और अकरम एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार
और राघु इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद ऑफ कटर गेंद परिवर्तन के तौर पर इम्प्रोवाइजेशन गेंद जाते हुए इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में फील्डर मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 6 overs completed, exactly 5.66 runs per over. The present run rate is now progressing here for them. और कुल मिलाकर उनके पारी में 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। तो एक बेहतरीन नज़ारा हम यहाँ पर देख रहे हैं। शाम का वक्त लगभग 5:15 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का प्रकोप काफ़ी हद तक मैदान पर कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मैदान पर मौजूद है। सूरज नीलाकाश तले मैदान के बाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर धूप की तीव्रता भी कम होती हुई घने वृक्षों की परछाइयां धीरे धीरे सीमा रेखा के और इस वक्त पधारते हुए इस बात का संकेत देते हुए कि जैसे जैसा वक्त इस वक्त ढलता जा रहा है, रोशनी इस मैदान पर कम होती जा रही है। और इस बीच नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार। पहली गेंद, ओह दिस इज गॉन विद बिग वन, आई थिंक सो, इट्स क्लियर डिफेंस, यस इट डज, इट्स अ बिग। धनुष की पहली गेंद और गेंद को इस वक्त डिस्पैच किया। देखिए किस तरीके से, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, एब्सोल्युटली एफर्टलेस एंड he's got the distance for that। छक्का इस वक्त प्राप्त करते हुए अक्रम और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। मिड लेग स्टंप पर गेंद थी और ऐसा कहना पड़ेगा पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट एट द लास्ट मोमेंट। बेहतरीन स्ट्रोक। एक बार फिर से अक्रम सामना करने के लिए तैयार धनुष की गेंदों का और धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद एक बार फिर से, इस बार मच स्ट्राइकर 6-4। Akram is on fire and the scoreboard is now rising up to 46. Have a look at this in the replay, much straighter line. It just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style. और छक्का, 2 छक्का इस वक्त लगा चुके अक्रम और अक्रम का जो कैच मिड ऑफ के फील्डर ने छोड़ा था वो अब उनके लिए भारी साबित होता हुआ। तो 46 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। धनुष स्ट्रेट अवे, ही इज नाउ अंडर प्रेशर। एक बार फिर से तैयार, यह गेंद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट पर 2 रन फिर से मिलेंगे और 2 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 48, 14 रन बन चुके हैं पहले 3 गेंदों पर और निश्चित रूप से यहां पर अक्रम इस ओवर में छाते हुए। धनुष अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, फॉलो थ्रू में फील्डिंग, ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली इन दिस डिलीवरी। फलस्वरूप गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं और गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार धनुष गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, नॉन सेकंड बल्लेबाज आगे निकल आए लेकिन अंतिम क्षण में ये देखते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिया कि विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर लपक रहे हैं और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 48 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार धनुष इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार वंस अगेन लॉफ्टेड हार्ड एंड हाई एंड इट्स अ मैसिव वन। 6 number 3 in this over for Akram and this is going to be Akram's over. He is looking absolutely on fire now and the scoreboard is now rising up to 54. Have a look at this in the replay. और गेंद सीधे वृक्ष के डाल पर जाकर इस वक्त टकरा चुकी है। तीसरा छक्का इस ओवर में अक्रम का लगता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति और इस ओवर के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा टोर्पेडोज आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। 54 for 4 after completion of 7 overs. 20 runs scored in this over. And because of this over, Torpedoes are now strongly back in the game. And now the last over remaining in their innings. और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए उस अंतिम ओवर का कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से सतीश जो कि अपना पहला ओवर काफी बेहतर फेंक चुके हैं, सिर्फ 3 रन वो प्रदान कर चुके हैं और इस वक्त अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। सामना करते हुए इस वक्त
बल्लेबाज सिरान और नॉन स्ट्राइक रन पर अक्रम इस वक्त मौजूद। 24 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए अक्रम बैटिंग ऑन 24 इंक्लूडिंग 3 मैसिव सिक्सेस। सतीश ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर, गेंद का पीछा करते हुए और इस बार थोड़ा सा मिस जजमेंट, बल्लेबाज को तीसरा रन मिल सकता है और तीसरा रन यहां पर मिल चुका है। अक्रम बैक ऑन स्ट्राइक नाउ। 57 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर और निस्संदेह अक्रम का स्ट्राइट फॉरवर्ड कैच जो मिड ऑफ फील्डर ने छोड़ा था, इसके लिए वो खुद अपने आप को इस वक्त कसूरवार ठहरा रहे होंगे। और इस बीच गेंदबाज तैयार, सतीश दाहिना हाथ ओवर द विकेट, अक्रम बैक ऑन स्ट्राइक, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, स्ट्रेट अवे, द प्रेशर ऑन द बॉलर, बॉल 2 फॉर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, 1 run added, 58. Terrific progressing here now for Torpedoes Khana. 5 balls left in overall calculation in their innings. और इस बीच सतीश तैयार, अगली गेंद, यह गेंद उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, रन्स नहीं मिलेगा, बेहतर गेंदबाजी, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को फेंकी थी इस वक्त, उछालने के प्रयास में अक्रम चूके और गेंद सीधे मिड विकेट फील्डर के हाथों में पहुंचती हुई, रन्स नहीं मिला। एक बार फिर से इस बीच सतीश गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अक्रम के लिए, यह गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, बेहतरीन गेंदबाजी, अक्रम को खामोश रखने में सफल इन 2 गेंदों में और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 59 रनों पर, 59। और अंपायर ने इशारा किया कि दे एक्सीड द टाइम लिमिट और यहां पर स्टिपुलेटेड टाइम उनके समाप्त हो चुके हैं, तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा, तो केवल 4 मात्र खिलाड़ी अब 20 गज के दायरे के बाहर मौजूद, तो कुल मिलाकर 3 गेंदें उनकी पारी में बाकी। और इस बीच गेंदबाज सतीश, यह गेंद स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, लॉफ्टेड और गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर नहीं रोक पाए, 4 रनों के लिए। इस बार सिनन की पारी, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद तक का नहीं पहुंच पाए, हालांकि जीतोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की थी लेकिन आखिरकार गेंद को रोकने में असफल। 63 for 4, 2 balls to go in their innings। और सतीश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके, 1 रन मिलेगा। 64 now। The last ball of their innings is now coming up। अक्रम वापिस स्ट्राइक पर आ चुके हैं। He is batting on 25 now, facing the last delivery of their innings। Satish comes, right arm over the wicket to Akram। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, बेहतर गेंदबाजी, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए और बाई का इशारा, गेंदबाज कुछ हद तक नाखुश विकेट कीपर से, 1 रन जरूर मिला। इन द इनिंग्स इज अप, Torpedoes Khana finished with 65 for the loss of 4 wicket after the completion of 8 overs, and now they set a huge target in front of KCCR Kadri, 66. They have to score for victory, and as far as the required run rate is concerned, exactly 8.25 runs per over they have to score for victory. 66 they have to score in the stipulated 48 deliveries, that means they're stipulated 8 overs with the help of 10 wickets, and let's see can they reach the target or not। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद, तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ, जब केसीसीआर कद्री की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
तो सतीश 66 the target and last 2 overs cost 31 runs और पांचवें ओवर में अकरम ने 3 छक्का लगाया और धनुष की गेंद पर और अंतिम 2 ओवर में 31 रन बने और उस ओवर 2 ओवर की बदौलत यहाँ पर इस मैच में एक बेहतर स्कोर टोरपोडोस का ना यहाँ पर खड़ा कर चुका है। अब केसीसीआर कतरी का सवाल है। 66 the target for them in 8 overs. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಗೇಟ್ನ ಎದುರೊಂದು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗೇಟ್ನ ಎದುರು ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶೌಚಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ತಂಡದ ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಬೈಕ್ನ ಮಾಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 66 the target. Now Satish, जहाँ तक सवाल है 52 the target set by KFC Kodikal and KCCR can reach the target in 4.4 overs all because of this man रवि सालियान पड्डयूर. लेकिन यहाँ पर 66 रन बनाने हैं और अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप अश्विन, शरण और एक दो गेंदबाज बेहतर गेंदबाज है उनके पास जो एक बार अपना सही रिदम गेंदबाजी में प्राप्त करने तो मैच का तख्ता पलटने की क्षमता रखते हैं. तो यहाँ पर सवाल है जहां तक बल्लेबाजी का लक्ष्य तक पहुंचने का एग्जैक्टली 8.25 द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम और लक्ष्य तक पहुंचने का तो इस वक्त ये दोनों बल्लेबाजों को रुकना जरूरी है इस वक्त, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज खासकर पावर प्ले के माहिर जाने जाते हैं. ना सिर्फ पावर प्ले के एक्सपर्ट हैं, पावर प्ले के फायदा उठाने में माहिर है, बल्कि लंबे पारी खेलने की भी क्षमता यहाँ पर रखते हैं और इन दोनों की उपस्थिति इस वक्त बेहद जरूरी है. खासकर 2 पावर प्ले ओवर्स उनके लिए बहुत ही निर्णायक पूरा है और जहां तक पहले 2 पावर प्ले ओवर में कम से कम 20 से 25 रन वो बटोरते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर वो इस मैच में एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन जहां तक केसीसीआर कदरी के विजय के लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, ये दोनों की उपस्थिति इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है. Well, Gobi, and rightly said that if KCCR Kadri wanted to win the match, you are just talking about that these two batters have to do the same job what they did in the first round match and wait and see how they will going to get the start here. As Sharan right over the wicket bowls to Ravi. Ravi this time he's got a start here with the single, not really able to get that one right from the middle of the bat, but he managed to get the single down to backward pointation and rightly said Gopi. And we are talking about these two teams, absolutely. We are talking about these two teams that the opportunity, the winning opportunity. But I think, Gopi, that you are just mentioning about the over of Dhanush is definitely going to be one of the turning point of this match. If Torpedoes Khana will going to win the match, that over is going to be very, very crucial. But match which is not yet over because this is a big game, 8 overs game. And it's very difficult to say in this condition which team will going to win the match. And Sharan looks like he's just... try to ball that one outside the line of leg stump. Seeing that the batsman is going for the reverse stroke, he wanted to get that one outside the line of leg stump, but the ball is going further away, and certainly umpire no hesitation to give the wide. And again, right arm over the wicket, Manjunath wanted to sweep that one very very fine, but Manjunath is kind of batters. Once he swept the ball, he is not simply sweeping the ball. He sweeps the ball with the power, and that's why he wanted to try that one. Once the ball will going to have a contact with the bat of Manjunath, ball will going to travel very quickly. So he just missed that opportunity in the occasion because the line is not that much of easy for Manjunath to get that one very fine, and he just got a single. This time appeal for leg before wicket, umpire not convinced. Oh my goodness! The two chances that over threes comes into play, but backup is will going to coming up from the deep extra cover. Akram there in the deep mid-wicket region will go into backup, but I think it's a golden opportunity, absolutely golden opportunity here for the fielder. And he wanted to hit the stump, but the two chances in one ball. One absolutely this loud appeal for leg before wicket, but suddenly just ball is just going down, going to miss the leg stump. And maybe the umpire saying that you are bowling wide of the crease. When you are bowling wide of the crease, then it's going to your ball is angling. Just going to be angling outside the line of leg stump. Even the ball pitched in the line, but ball is just going down the leg stump. But umpire is saying but one opportunity is golden opportunity for the fielder to shy the stumps, and Ravi lucky there. Here he is again, swings and missed, but umpire not going to miss the opportunity to call that wide because suddenly that ball is going to miss the line and second wide of this over. So once again the scoreboard now moves on to
6 on the board in the over number first season program. Well, we can see that all short of the pressure here for the bowler. When you're bowling to the caliber like the bowler, batter like Ravi Salyan, Pandeshwara, Manjunath is in front of you. It's not so easy for the bowler to handle the pressure. And that's why they wanted to change the line. By changing the line, they're missing the line and getting some extras. This time again, he's gone, I think so. Yes, he's gone. He hits a leg stump. Absolutely perfect delivery there from Sharan. This is a huge fish in the net. This is a huge fish in the net. So what a delivery there from Sharan. Absolutely right on the block hold, isn't it? And more than anything else, Gopi, if you see that dismissal, I think Ravi Salyan is missed that line because of the pace, I think so. Because Sharan is, have a look at that delivery, no chance at all, isn't it? No time to react to that ball. Absolutely, ball is, once it's landed into the ground, just a bit of ball is skidding and into the stumps, and Ravi is back into pavilion. Absolutely, it's a huge wicket here for Torpedoes Khana. Exactly, सतीश, यहाँ पर जो गेंद थी बिल्कुल वहाँ पर पिच होने के बाद इतनी तेजी के साथ वो अंदर की ओर आई कि बल्लेबाज इस गेंद की तेजी को समझ नहीं पाए और आखिरकार रवि सालियान जो एक्सक्विजिट फुटवर्क के बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं उनको ये गेंद वंचित करते हुए सीधे चले गए मिडल ऑफ स्टंप पर और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा सतीश रवि सालियान पड्डयूर का विकेट का पतन निस्संदेह यहाँ पर केसीसीआर कतरी के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है. Well, it's a definitely drawback. Why not, Gopi? Because a man who is really having a fantastic form in this particular tournament is back into pavilion after the score. One who got us highest individual score in this tournament in one innings, which is a 35 and unbeaten 35. Now, nothing much worry about that because KCR Kadri has got some batting department. This man, Ashok, is nevertheless, he is also a very good striker of the ball, and he will go into face his first delivery from Sharan. Right arm over the wicket. First ball, improvisation, nicely plays it down to deep, backward point region, running hard. Looking for the second, in comes the throw, chance of run out, and it's the stamps. Imtiaz hits a stump. Now Mohan Ayadi saying to all the fielders of Torpedoes Khana that cool down, man, cool down. I will take the decision. You don't worry about that. So just set it up. This is all the excitement we can see because the big semi-final will be quite understandable. And the excitement from the fielders of Torpedoes Khana knows that if able to get the result in the favor of a fielding team, then it's going to be one more huge wicket because I have a look at that one. I want to see it in the what really happened. But I think it's a very dangerous to coming back for the second. Have a look at that one. Reverse sweep comes into play. Plays it just over the infield. And have a look at the effort from the fielder. And he returns the ball. Imtiaz, presence of mind. And he collects the ball. It's a stump. And whenever there is going to be a direct hit, it's always going to be dangerous. But wait and see. And of course, the supporters of KCR Kadri Gopi doesn't want to see that there is no red light, even though. But they doesn't want to see that the third umpire will going to give the out there. But I think Torpedoes Khana supporters desperately wanted to that will going to be a big wicket. They knows that if you're going to get the result in their favor, they are rightly back in the game. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर ये विकेट काफी नजदीकी मामला है. जब देखना यह है कि विकेटों पर निशाना टकराया था, गेंद टकराए थे, बेल्स डिस्टर्ब हुए थे, तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज में लैंड हो चुका था या नहीं. तो यहाँ पर निस्संदेह केसीसीआर कतरी के समर्थक ये नहीं चाहेंगे कि इस बार लाल बत्ती जले. तो बत्ती तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आउट की घोषणा यहाँ पर ना आए. और यहाँ पर टॉर्पेडोस खाना के समर्थक चाहेंगे कि वहाँ पर आउट की घोषणा इस वक्त दे थर्ड अंपायर. तो देखते हैं इस वक्त असल में सही निर्णय क्या निकलता है. तो अगर ये विकेट गिरता है सतीश, तो निस्संदेह केसीसीआर के समस्या है, प्रॉब्लम्स और वहाँ पर बढ़ सकती है. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो देखते हैं यहाँ पर क्या निर्धार होता है. और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है, दूसरा विकेट का पतन निस्संदेह केसीसीआर कतरी को मुश्किलों के और दलदल में ढकेल देगा. लेकिन अगर बल्लेबाज बचते हैं तो निस्संदेह सतीश केसीसीआर कतरी के लिए एक बेहतर रास्ता यहाँ पर खुल जाएगा. Very interesting. See that, Gopi. Everyone is facing towards the commentary box, and even the umpire also. And of course, we can see that the eyes of Torpedoes Khana, the players, the fielders, certainly they wanted to see that what could be the result.
Now umpire is signaling here. He is a not out, which is a call from third umpire. The batter survived. Batter survive, and even though there's no direct hit, but I think Ashok is managed to drag his bat. This is a dragging your bat is so important, isn't it? He's just putting. In fact, he's not dragging the bat, but he's able to put the bat in the right time when the ball is hits the stumps, and it takes a little bit time to the bills to uproot, and that's why he's just survived. Gopi, just a little bit he survived from the run out, and. Ashok, this certainly is a lucky man there. Now is going to face next one from Sharan. Right arm over the wicket bounce. This time Ashok drives an inside out cricketing stroke. Oh, misfield by the fielder. That will going to be a boundary. That will go into boundary, and that will going to open the gate here for absolutely for KCR Kadri, isn't it? Have a look at that one stroke there from Ashok. Inside out cricketing stroke. Beautifully played, but an absolutely pretty ordinary effort. Pretty ordinary effort there from the fielder Bashit there. And KCR Kadri really back in the game after that boundary, isn't it, Gopi? Because runs are died up. Almost 8 runs in the before the start of the last delivery, but boundary which is definitely gave the start what Kadri wanted. Even they lost the wicket of Ravi Salyan. बिल्कुल सतीश, रवि सालियान पर ड्यूर का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव था वो दबाव कुछ हद तक हट चुका है, खासकर पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर जो चौका इस वक्त मिला, लकी चौका जिसे कहते हैं, फील्डर की मिसफील्ड की वजह से बल्लेबाज ने चौका प्राप्त किया। उस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन और 66 रनों के लक्ष्य का पीछा करते 12 रन अगर आप पहले ओवर में बनाते हैं तो निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कहलाएगी। अब 54 रन चाहिए, 42 गेंदें बाकी, 54 टू गेट in remaining 42 deliveries. That means in 7 hours the required run rate coming down to just under 8 runs per hour, और एक बेहतर ओवर अगर इसमें कम से कम 12 से 15 रन बनते हैं, निस्संदेह KCR कद्री इस मैच में वापस आ सकता है। सतीश, Absolutely, Gopi, and just I want to say that the start which is they wanted to get in the first over, they got a start. Even they lost a wicket this time. Switching this comes into play. Fielder behind the ball. Ashwin definitely going to get there, but before he returns the ball to the hands of wicketkeeper Ashraf, ample time for the batter Manjunath to get a couple of runs. And just like you mentioned about Gopi earlier, we are talking about how important for Kadri to get that advantage of the power play. We are talking about 25 to 30 runs in the first 2 overs. Definitely going to be a very interesting match, and they are really trying for that. 14 for the loss of 1 wicket. Mubir right arm over the wicket, bounce down the leg stump. It's going to be a punishable for umpire. They're going for the extra run, trying for the run out. Imtiaz slide a bit of the miss the stump. Otherwise, it's going to be one more close decision here for umpire to call for the third umpire, but this time it's wide signal umpire. So 1+1, 2 bonus runs is going in favor of KCR Kadri. 16 for the loss of 1 wicket. They're getting some extra runs. Now it looks like slowly this match is turning out, and especially because of the power play over is going on, and Kadri knows that they wanted to get some runs in that over. Again, Mobile right arm over the wicket, bounce inside out, cricket is outside to the hands of fielder. Straight to the hands of fielder, but I want to see the real one. The kind of catch has been taken. He thought ball will go into over his head. That's why he has got a jump, Gopi. But quickly realizing the ball is not that much of height, so just take that one. Just have a look at that one replay. Absolutely slide of comedy of error. Looks like he's just taking a catch in the boundary line, just saving that line. And at last he managed to take the catch, and the wicket of Ashok is back into pavilion. This is a huge wicket there from Mubir. So Ashok is back into pavilion. Looks like he will going to take the role of Ravi Salyan. After Ravi Salyan is back into pavilion, looks like Ashok is a kind of batter who can be the very handy to come and deliver in the number 3 position. But I think he's slight a bit of loose stroke is played, and Rilwan making no mistake at all to take that catch. Rilwan is a very good fielder, and he's got a lot of good catches is taken for his team in this season. Now one more good catch is taken at mid-off region. So new batter in is Sandeep now came into middle. Sandeep, the experienced campaigner, wanted to sweep the ball, but missing his bat. Absolutely, if he able to have a little bit contact with the bat, it's definitely got a chance to get that one very fine, because Imtiaz is standing well up to the wicketkeeper, well behind the wicketkeeper, and the batter Sandeep completely missed out that delivery. 16 for the loss of 2 wicket. Mubir bowls beautifully, ball perfect one. This is what the change of
completion of the game. Whenever whenever the settled batsman is back into pavilion, then all in sudden we can see the level of confidence from the bowler. When you are bowling to the new batter, is looking so confident, and he bowled 2 dotted deliveries, back-to-back dotted deliveries. Again, Mubir right arm over the wicket. Sandeep once again wanted to get that one very fine, but this time they managed to get the single for that. Good bowling there, good comeback here by Mubir. Absolute the kind of over which is restriction which is required in the second over, and so far he succeeded. I don't think it's going to be a good over there for Kadri, but definitely it's good over for Torpedoes. Scoreboard is 17 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3 is in progress. 2 is a little protection, absolutely. The 2 is in progress. This time again, driven that one, but not enough power behind the stroke. In fact, the timing is not coming proper here. Absolutely good over. Mubir bowled a great over. The over of economical as well as the wicket taking over is considered after completion of over number 2, chasing total score of 66 to win this match. Is 18 for the loss of 2 wicket. And Gopi, before we are coming back to this, the condition of the game, I would like to invite Zaman Boys Kaladka as well as Red Wings Kunjat Bail. Please complete the signatures as soon as possible, because they are the one they're going to play the second semi-final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. And Gopi, good over. And for the point of view of Torpedoes Khana is concerned, after conceding 12 runs in the first over, in that over they got only 6 runs, Gopi, and more than anything else, 1 wicket in that over, the wicket of Ashok, definitely going to be a big impact in this particular over. Exactly Satish, ये ओवर बेहतर रहा टॉर्पेडोज खाना के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसमें सिर्फ 6 रन गेंदबाज ने दिए और इस ओवर के बदौलत वो इस मैच में वापस आ चुका है. अब इक्वेशन अगर देखा जाए तो 18 रन बन चुके हैं इस वक्त. जो स्कोर है, टारगेट है 66, 48 टू गेट फ्रॉम 36 डिलीवरीज, 8 रन प्रति ओवर. और यहाँ पर अश्विन गेंदबाजी पर आ चुके हैं और देखते हैं उनकी गेंदबाजी का बल्लेबाज किस तरह सामना करते हैं. हालांकि पहले गेंद को मोड़ दिया मंजुनाथ ने 1 रन के लिए, और देखना है कि 5 बचे हुए 5 गेंदों में अश्विन का किस तरह बल्लेबाज केसीसीआर कदरी का सामना करते हैं. Well, Gopi, and especially the Ashwin's over is going to be very crucial for both the team. And as far as the Torpedoes Khana to winning this match is concerned, this man definitely going to play a big role here. But this time Sandeep is just playing a waiting game. He's just playing a waiting game. You know exactly, because Manjunath is a better man to deal with the over of Ashwin. So he picked up a single and now Manjunath is back on strike. Here is Ashwin, right arm over wicket bounce. This time Manjunath went for a reverse stroke and his given him is gone. Ashwin picked up a huge wicket. Now Manjunath just asking umpire Roland Pinto why you are given out. I will give the perfect, if you go to the pavilion, Gopi, if you have watched the replay of this dismissal, absolutely you are going to be satisfied enough why umpire given leg before wicket is absolutely flum, and no doubt at all, because of that the batsman is not really moving anywhere, Gopi. His front foot is right in front of middle stump, and if he's outside the line, I think definitely going to be a doubt that impact which is going to be outside the line of off. But he's standing right in the middle stump. There is a slight bit of deviation, no big deviation, and rightly umpire Roland Pinto has got no doubt at all to call that leg before wicket. And the wicket of Manjunath, Gopi, this certainly KCC Kadri now maybe they're under pressure and more pressure for the incoming batsman as well. Exactly सतीश, मंजुनाथ का विकेट यहाँ पर गिर चुका है लेग बिफोर विकेट के रूप में, और इनका भी विकेट का पतन होना इस वक्त केसीसीआर कदरी को और मुश्किलों में इस वक्त ढकेल चुका है. और नए बल्लेबाज के लिए इस वक्त दबाव भरा माहौल और हर्षित का आगमन यहाँ पर हो चुका है. और देखते हैं यहाँ पर हर्षित जो कि दूसरे छोड़ के बल्लेबाज के साथ मिलकर किस तरीके की बल्लेबाज यहाँ पर अपनाते हैं. लेकिन जहाँ तक सवाल है टॉर्पेडोज खाना का, पहले ओवर में 12 रन प्रदान करने के बाद एक बेहतर कमबैक इस वक्त की है उनके गेंदबाजों ने, फलस्वरूप इस वक्त उनका तख्ता भारी लगता हुआ. लेकिन मौका जरूर है इस वक्त केसीसीआर कदरी के बल्लेबाजों को, और ऐसा कहना पड़ेगा गट्सी बैटिंग इस वक्त उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है. Well, Gopi, the gutsy batting is badly required for Kadri to be wanted to win the match. Again, swept that one down to fine leg region for a single by the batter Ashit. Ashit now I think he's got opportunity. He's got opportunity to showcase his talent, because they're not getting regularly the chances in the specialty team like KCC Kadri. But this time, oh, that ball is definitely, and I think he's got a bat onto that. Otherwise that ball is almost close to the leg stump, isn't it? And again, one more single has been taken. With that single, score numbers on to 23.
So one more good over which is comes in, and after completion of over number 3. After completion of over number 3, looks like team Kadri are really struggling in the middle. 22 for the loss of 3 wicket, and that means the long way to go. Gopi, now 44 runs required, isn't it? 44 required from 5 overs, and I think in this situation, looks like Tarpadus they're in upper end, but I think Gopi still they got opportunity because Sandeep is still there in the middle. Sandeep is a kind of batsman who loves to bat up in the order, open innings. But this time I think he need to play responsible innings because he's the only one batter. He's got a potential of getting the runs what they really wanted. And Ashit is another batsman in the other end. He is going for some big innings and some sensible batting. Definitely will going to create the opportunity for Kadri. Otherwise, Torpedoes are looking in a top. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर एक बल्लेबाजी के जरिए एक साझेदारी की जरूरत है इस वक्त, और यहाँ पर क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज हर्षित और दूसरे बल्लेबाज जो कि इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, जोरदार स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता रखते हैं। और यहाँ पर निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा जो 14 का फासला है बचे हुए रन और बनाने हुए रन और बचे हुए गेंद के बीच, उस 14 के फासले का अगले 2-3 ओवर में ये दोनों बल्लेबाजों को मिटाना होगा एक बेहतरीन साझेदारी के जरिए। और यहाँ पर तख्ता इस वक्त जरूर भारी लग रहा है टॉर्पेडोस का इस बार खूबसूरत स्ट्रोक हर्षित का ऑफ द बैक फुट गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर, कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, 1 रन का इजाफा। तो यहाँ पर मौका जरूर है सतीश बाउंस बैक करने का इस वक्त केसीसीआर कतरी के बल्लेबाजों के लिए। Absolutely, Gopi. And again, the lovely delivery there from Rilwan. Again, Sandeep fails to make a contact with the bat. Each and every dot ball, the run rate required, which is really creeping up here for KCR Kadri. They at least if they are not able to get the big shot, but I think Gopi, they need to rotate the strike at least, because rotating the strike and getting one big shot in an over, definitely they will going to get the definitely they will going to catch the run rate required if they wanted to win the match. Again, Rilwan from the far end, bowling with a very good condition here. This time appeal for leg before wicket, but umpire says it's not out because of the impact of the line, slight a bit of outside the line of off time, because Sandeep is shuffled across the line of the delivery slight a bit. 25 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 4 is in progress. That brings Ashit into strike now, and very interesting to see that how Ashit will go into handle the pressure here. Absolutely, it is not a good easy position for any batters to come and deliver straight away. This time top edge, and but ball going to land it very safely between bowler and the extra cover, and before Ashwin returns the ball to the hands of Ashraf, ample time for the batter to complete the single. With that single, score moves on to 26 for the loss of 3 wicket, and it's a really good performance here from Torpedoes Khana. This is the result when you are defeating a big team like NM Cricketers Mangalore in your first round. Then it's always going to be level of confidence is going to be high. This time is Flum. This time and this time the bowler is bringing the ball. Slight a bit of incoming delivery, and that's why this time Sandeep is not really able to save his wicket because of that fantastic delivery ball from Rilwan. One more wicket is back into ball, and Sandeep departs, and team KCCR Kadri looking in a deep trouble. But any trouble, but this man is not in trouble. We're watching in monitor is absolutely one of the happiest man in the world, Gopi, and one of the happiest man in the world, and he is absolutely relaxing here, and and Gopi, you won't get many of them like that sleeping, isn't it, in this condition, and just like we are talking about, no worry, so you can get a very good sleep. बिल्कुल सतीश, वो इस तरह इत्मीनान के साथ सोए हुए कि दुनिया गए तेल लेने, मैं आराम से यहाँ पर सो, और सारा मैच का जो दबाव है वो जो भी झेले, मेरी नींद यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर वो इत्मीनान के साथ सोए और यहाँ पर मैच आगे बढ़ता हुआ। Absolutely, and again the next ball, lovely delivery there from Ashwin to start with, and then Gopi, nothing but maybe the spectators are just maybe thinking about what we are talking about, but we are only talking about seeing the monitor. The cameraman is just covering that man. Here is again right arm over the wicket Ashwin. Again they wanted to play that reverse sweep, missed it completely. Might be the ball got a bat onto that, and 4 overs completed, Gopi, and welcome back once again, and
27 for the loss of 4 wicket. Looks like in this condition, I think comeback is maybe so difficult, but not impossible for Kadri. They needed some, just like we were talking about, the brave and gutsy batting is definitely required here for Kadri if they wanted to win the match. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर देखिए 5वें ओवर की पहली गेंद थी इस वक्त अश्विन की गेंद पर स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चुका। जहाँ तक सतीश इस वक्त कंपैरिजन देखा जाए तो टॉर्पेडोज खाना ने भी 4 ओवर में शायद मेरे ख्याल से 26 रन बनाए थे। 26 रन स्कोर्ड बाय आई थिंक टॉर्पेडोज खाना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। इनफैक्ट केसीसी कद्री 27 रहा। तो यहाँ पर हालांकि प्रेजेंट रन रेट में जो तो वो कुछ हद तक 1 रन ऊपर है, लेकिन यहाँ पर द्वितीयार्ध में उन्हें इस वक्त कमबैक करना है, जिस तरीके की कमबैक टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाजों ने किया था। और खासकर अब जब लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर रहता है और उस दबाव को आपको झेलना होगा। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। और 1 रन के साथ कुल रन संख्या आप चाहिए 38 रन विजय के लिए, और जबकि गेंदें बाकी हैं यहाँ पर 20। और अगली गेंद के लिए गेंदबाज तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा, काफी लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकल रही थी। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज अश्विन, गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हर्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हर्षित के लिए रिवर्स शॉट, इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेला इस वक्त, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, और इससे पहले की गेंद को पॉइंट पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा है यहाँ पर हो चुका है। ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 5 overs has been came student, 30 runs on the board, and one more good over in Torpedoes Khana's point of view came student. 30 runs on the board, 36 to get, required run rate is now gone out exactly 12 runs per over सतीश। और अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के यहाँ पर केसीसी कद्री के इस मैच में वापस ला सकते हैं। Exactly, Gopi, and boundaries and sixes is badly required in each and every over. 12 runs per over is the required run rate. And Gopi, in the present cricket, modern cricket, 12 runs per over is achievable. But question raising here is, Gopi, against the fantastic bowling department of Torpedoes Khana, will it going to be possible or not? And that's the main thing is question is raising here. But I think, Gopi, both the batter has got ability. Just like we're talking about the potential of the bowling of Torpedoes Khana, they got the potential of hitting a big shots as well. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाते हुए मिड ऑन पर 1 रन में प्राप्त करेगा। क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सिर्फ पाने की इच्छा होनी चाहिए, इरादा होना चाहिए, आपका इरादा बुलंद होना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं किस बुलंद इरादे के साथ यहाँ पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं और अपनी टीम को अपनी मंजिल तक पहुंचा पाते हैं। तो पहली गेंद को इस वक्त खेला था मिड ऑन पर 1 रन के लिए, और यहाँ पर शायद गेंद पर कुछ हद तक दरार आई है। फील्डर अंपायर है जो कि इस वक्त गेंद को लेकर बढ़ते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की ओर गेंद की परीक्षा करते हुए इस वक्त खेल है, जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। फिलहाल अगला मैच जमन बॉयज का लड़का विल टेक्स ओवर रेड विंग्स कुंजत बैल इन द नेक्स्ट मैच, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. The second semi-final match of this tournament will be played right after this match, after this first semi-final match. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए शरण दाइनात ओवर द विकेट, 17 balls left in overall calculation in the innings, 35 more runs now they have to score for victory. Again better गेंद थी, absolutely good one. Once again the required run rate coming exactly at 12 runs पर ओवर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो शरण एक बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाइनात ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाइनात के बल्लेबाज सामना करते हुए, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, बैक टू द बॉलर की दिशा में निशाना चूक चुका है इस वक्त, और बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं। 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर, 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में यहाँ पर बनते हुए, और अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी उनके लिए। और शरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, हर्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शरण की गेंदों का दाइनात ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर ने अपना हाथ हटाया और थर्ड मैन फील्डर गेंद को पकड़ नहीं पाया, लेकिन डीप थर्ड मैन पर गेंद को बैकअप किया गया है। और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, वाइट का भी इशारा हो चुका है। 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल रन इस वक्त चाहिए केसीसी कद्री को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और गेंदबाज इस बीच
शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था इन्हें तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मिनट, स्कोर अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर। पहला सेमीफाइनल मैच सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ और शरण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था इन्हें तो ओवर द विकेट ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली, 1 रन का इजाफा, इम्तियाज फील्डर और स्कोर 36 रनों पर बढ़कर रुक चुका है। तो रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और हर गेंद के साथ दबाव इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता नजर आता हुआ। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो शरण अपने ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार उछालना चाहा, पैर पर टकराई, गेंद को बिना देखे इस वक्त रन लेना चाहा और आखिरकार अपने दौड़ को वहीं पर रोक लिया, देखा कि निशाना लगता है या नहीं विकेट कीपर का और निशाना बिल्कुल मंजिल पर जाकर टकराता हुआ। और 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 36 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है बचे हुए 2 ओवर में, 30 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 12 balls. Well, Gobi, after this match, of course, we have some other programs related to the cricket. And we need to, the organizer decided to felicitate some former cricketers, legend cricketers, and the 7 players to be honored, felicitated in main stage. Mr. Sudhakar, the former cricketer and retired employee of Syndicate Bank, one of the classical batsmen, and Mohan Suvarna, everybody knows that the name of Mohan Suvarna, one of the best bowler ever seen in underarm cricket, will go into felicitated. And Iqbal of Gori young boys absolutely is deserve this felicitation, one of the most destructive batsmen. Mr. Santosh of Mangaladri cricketers and Jaya of UFC, Kuresh of Reliance cricketers and Praveen of Mangaladri cricketers. So these all 7 legendary players will go into felicitated and before the start of the second semi-final. धन्यवाद सतीश। तो वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा 7 ऐसे महान हस्तियों का जिन्होंने अंडरआर्म क्रिकेट के लिए अपना योगदान काफी कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहली गेंद पर 1 रन बना, दूसरी गेंद लेकर तैयार, ड्राइव किया, इस वक्त गेंदबाज का पैर टकराया था, रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। मिड ऑफ फील्डर का फेंका गया हुआ थ्रो यहाँ पर सीधे गेंदबाज के हाथों में बहुत और गेंदबाज ने अपना काम तमाम किया थ्रो को रिसीव करने के बाद। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 37 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 29 रन और चाहिए विजय के लिए, 29 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग जस्ट 10 balls। और सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब केसीसीआर कदरी को इस मैच में वापस ला सकती है। सतीश नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त, सतीश आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ जो कि नंबर 8 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। हर्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, 29 टू गेट फ्रॉम 10 balls। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और हर्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद बेहतर थी, इस वक्त बिल्कुल पैरों पर टकराए, डॉट गेंद, रन नहीं मिलेगा, एक गेंद और व्यर्थ, स्कोर वहीं पर रुक चुका है 37 रनों पर, 9 गेंदें बाकी, 30 रन चाहिए विजय के लिए, 30 रन टू गेट, इनफैक्ट इट्स 29 रन टू गेट इन रिमेनिंग 9 डिलीवरीज। ये गेंद ड्राइव किया स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। फैंटास्टिक स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ हर्षित नाउ, he just lofted that one and picked that firmly between long on and long off into the straight hit area for a boundary. तो 41 रन, 41 now, 25 to get, 8 balls to go। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और स्कोर इस वक्त बढ़कर रुक चुका है 41 रनों पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो बढ़ता विकेट हर्षित के लिए, यह गेंद इस बार चिप किया, वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर गेंद जाते हुए, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरे रन यशस्वीतम पूर्ण करते हुए 24 रन और चाहिए, 23 रन और चाहिए, 7 गेंदें बाकी, 23 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 7 balls। संघर्ष अभी भी बरकरार रखता हुआ केसीसीआर कदरी और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त तैयार था, इस बार गेंद को ड्राइव किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, एक बार फिर से इस बार सिर्फ सिंगल मिलेगा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 44 रन, 22 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। और सतीश निस्संदेह इस वक्त अंतिम अवकाश जो है
और सिर्फ यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा चौकिया छक्के ही अब इस अंतिम ओवर में केसीसीआर कतरी का भविष्य बदल सकते हैं. Well, Gopi, 22 to get, maybe this is difficult, but difficult road often leads to beautiful destination. And here is Arshit. Is a kind of batter, you cannot underestimate him, because if you observe that the last stroke we played in the previous over, straight down the ground, he's a very good strike of the ball in front of the wicket, because he's a kind of batter who's performing in both overarm and underarm cricket, and especially the one over performing in the overarm cricket, they're a very good striker of the ball, especially in front of the wicket. But Gopi, altogether, if you see that in this particular match, semi-final, there is a two big impact. One is the wicket of Ravi Padayuru. They lost early, Kadri, and the over of Danush. That's the two big things which is going against KCCR Kadri, and that's why Torpedoes are looking in top in this match. बिल्कुल सतीश, दो चीजें इस मैच में ड्रॉबैक साबित हो चुकी है केसीसीआर कदरी के लिए. बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश. एक जो धनुष का ओवर जिसमें 20 रन बना था, 3 छक्के बटोरे थे अकरम ने, और उसके बाद रवि पटयूर का त्वरित निर्गमन, अर्ली डिसमिसल, तो ये दो चीजें उनके लिए काफी भारी पड़ चुकी है और यहाँ पर तख्ता टॉर्पेडोज खाना का भारी लगता हुआ. इस बीच ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद लगभग विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, रन्स नहीं मिलेगा. 22 रन्स टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स नाउ. और जहाँ तक सवाल है 5 गेंदों का, और इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं रिलवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. हर्षित सामना करते हुए और रिलवान अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर चूके वाइड का इशारा, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, निशाना इम्तियाज का टकराता हुआ, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल. 46 for 6, 20 रिक्वायर्ड, 5 बॉल्स लेफ्ट. और इस बीच स्ट्राइक पर आ चुके मनीष, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई. अगर सही लेंथ और लाइन के साथ 5 गेंदे बचे हुए फेंकते हैं गेंदबाज, तो निस्संदेह यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना की विजय निश्चित है. लेकिन क्रिकेट में ऐसा कुछ कहना मुश्किल है जब तक ना आखिरी गेंद फेंकी जाए. क्या 2 छक्के या चौके निस्संदेह इस वक्त केसीसीआर कदरी को मंजिल तक के निकट पहुंचा सकते हैं. निशाना यहाँ पर टकरा चुका है, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 4 balls 19 रन्स और गेंदबाज इस वक्त तैयार. रिलवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हर्षित जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के गेंदबाज का, और रिलवान दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद हर्षित के लिए, ये गेंद चिप गया लगोर पर 6 रनों के लिए. द होप्स अलाइव फॉर केसीसीआर कतरी. 13 टू गेट फ्रॉम 3 बॉल्स. तो हर्षित के बारे में मेरे काबिल दोस्त सतीश ने कहा था, दिस मैन इज गॉट अ पोटेंशियल टैलेंट. और यहां पर देखिए गेंद को चिप किया था छक्के के लिए. 3 गेंदे 13 रन. अब सतीश एक और छक्का निस्संदेह केसीसीआर कतरी को लगभग इस मैच में वापस ला सकता है. Absolutely, Gopi, and it's a short enough for Arshit to hammer that one. Absolutely sweet sound which is came from the bat of Arshit. That's what I'm talking about, Gopi. The match which is not yet over, because this is a modern day cricket, Gopi. Anything can be possible in cricket, and one more 6 definitely you're just talking about, Gopi. It will go into a more interesting match. बिल्कुल सतीश, देखते हैं हर्षित स्ट्रेट अवे. द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर और हर्षित सामना करने के लिए तैयार. अगली गेंद, ये गेंद एक बार फिर से ड्राइव किया, लेकिन लंबन पर हर्षित स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं. रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरे रन के लिए थ्रो पहुंचा और इस बार 2 रन पूर्ण कर चुके हैं. 11 रिक्वायर्ड ऑफ 2 balls. 6 and 4 मेक अ टाई फॉर देम. छक्का और चौका अंतिम 2 गेंदों में टाई कर सकता है केसीसीआर कतरी को, और स्ट्रेट अवे 2 छक्के यहां पर विजय दिला सकते हैं. और मैच अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, द मैच इज नाउ स्टिल अलाइव. Absolutely, match is still alive, Gopi, and the same situation I still remember the match which is played at MA cricket ground,
when Riaz of Gori Young Boys against Adi Maheshwari, when it's a 13 required from 3 balls, he two back-to-back sixes and finishes the match, Gopi. And that maybe Riaz is remember that one, the innings which is played for Gori Young Boys. And now the same kind of treatment which is required here from the batter Ashit. Can he able to repeat the history? बिल्कुल सतीश, देखते हैं रियाज, माफ कीजिए हर्षित का, और रियाज बन पाएंगे नहीं। इस बार गेंद को उछाला, गेंद पहुंची मिड विकेट पर और वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और 2 रनों के साथ 9 रन चाहिए अब अंतिम गेंद पर। अब ऐसा कहना पड़ेगा, अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते तो यहां पर टोरपेडोस काना की विजय निश्चित है, लेकिन यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम गेंद पर हर्षित अब क्या करते हैं। तो बेहतर बल्लेबाजी मैच के अंतिम क्षणों में हर्षित ने दिया और यहां पर देखते हैं अंतिम गेंद पर सही गेंद क्या गेंदबाज रिलवान न फेंकते या नहीं। और तैयार, द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद सही गेंद, ड्राइव किया, दैट्स इट, 8 runs victory for Torpedoes Ghana and they are through to the grand finale of this competition। और सतीश ऐसा कहना पड़ेगा बेहतरीन प्रयत्न अंतिम मैच के अंतिम क्षणों में हर्षित ने किया है। Absolutely, it's a fantastic comeback, even though once it looks like the match is going towards a one-sided, but Ashit is just taking the initiative of taking his team into the target, but unfortunately is unfortunately they're falling short of 8 runs. But I think Gopi, all because of the winnings of Akram, definitely going to be one of the best innings he's played for his team, and once again he's showing his excellency. And whenever it's a slog over is in progress, he's the one. Akram is always going to be leading from the front, getting some important runs. And I think because of that, the batting performance he did it against the bowling of Dikshit, and I think that will go in. Dhanush, I think he played a fantastic knock for his team, and they are now entering into the final of this, a mega final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. Congratulations, Torpedoes Ghana. Once again, they are really came in a positive frame of mind. This is not an easy journey. This is not an easy journey for Torpedoes Ghana. I remember you because in the first round they defeated one of the favorite of in this particular tournament to lift this trophy, NM Cricketers Mangalore in the first round, and even second round they're really once again upsetting the better team, so the team which is looks very confident in this particular tournament, but once again they are defeated KCCR Kadri in the semi-final, and they deserve the place in the big final, the mega final of this prestigious cricket tournament. We are going to start the second semi-final, and as for that I request all the players of Zaman Boys Kalladka as well as the players of Red Wings Kunjat Bail to sign the official chart as soon as possible. So we are coming back to that after this. Before we are going to start the semi-final, we are just talking not like that, but in this particular tournament, we are going to, the organizer decided to felicitate some good players, former cricketers, legend players in underarm cricket, and some players not only they are performed in underarm cricket but even in the overarm cricket as well, and especially Mr. Sudhakar, the former cricketer who are performed in both underarm and overarm cricket, and is a retired employee of Syndicate Bank, one who represented for Syndicate Bank in cricket ball, the season ball. He will go into felicitated, and Mr. Mohan Suvarna, the Mohan of Young Friends Surua, as well as who represented for Jugal Sports Club. The Mohan Suvarna will go into felicitated, one of the top bowler, and as far as underarm cricket is concerned, will go into felicitated in this tournament. And one more one more legend player, Mr. Iqbal of Gori Young Boys, will go into felicitated, and Santosh of Mangaladevi Cricketers, one more top all-rounder ever produced in underarm cricket, who is known as Jack Callis of underarm cricket. Santosh will definitely has been felicitated, and one more legend player, Mr. Jaya of UFCA, absolutely fantastic wicket-keeper batter for Urva Friends Cultural Association UFCA, and he will definitely deserve the felicitation. And one more legend player, of course you can't call him as legend because he still is playing a cricket, and is none other than Mr. Quresh of Reliance Cricketers Jaipur will be felicitated, and at last is Praveen, one more fantastic all-rounder of Mangaladevi Cricketers will be felicitated in this particular tournament. So congratulations for
all the legend players, those are going to felicitate in this tournament. And we'll take a short break here in our commentary box, and we are back in the semi-final, second semi-final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. Thank you very much. Now it's the time to announce the Man of the Match award. Man of the Match goes to, and undoubtedly, man who are really changing the complexion of the match. And he just came in and delivered. And there's none other than Akram of Torpedoes Khana. They deserve this is a Man of the Match award. So I request Akram to please collect your Man of the Match award in our presentation dais. I request organizers request you to send chief guest to present this Man of the Match award to Akram of Torpedoes Khana. I request Praveen of Gori Young Boys to present this Man of the Match award to Akram in our presentation. I request the cameraman please cover this presentation ceremony in our presentation dais. And here is Akram. What a fantastic knock he played. Absolutely. One of the best innings he played for his team. Because of his innings, I think Torpedoes Khana, they won the match. Thank you very much. Congratulations, Praveen. Congratulations, Akram. Thank you very much, Praveen.
ಅಲ್ಲಿ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೇಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅಲ್ಲಿ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ 7 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು 7 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳೊಳಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು 7 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 7:15 ಫಾರ್ ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ to register their name and signature in the official chart. Please note the players of all the players of Zaman Boys Kaladka. All the players of Zaman Boys Kaladka. Please note. Thank you. Thank you. നിക്കൊറിയൊക്കെ കേന്ദ്രിച്ചാണ് ബാക്കി പുറ കേന്ദ്രുണ്ട്. Thank you and welcome back once again for the prestigious Sauhardha Trophy 2023. The second semi-final will going to start between Red Wings Kunjat Bail versus team Zaman Boys Kaladka. Meanwhile, of course, after this match we have felicitation for the legend players, those who are contributed for Handram and even for overarm cricket. Especially we are going to felicitate the legend player, respected Mr. Sudhakar, one who was a former cricketer of Syndicate Bank and is a retired employee of Syndicate Bank. We're going to felicitate one of the classical batsmen, and of course one more
we're going to honor Mr. Mohan Suvarna, one of the best bowler ever seen, ever produced in underarm cricket. The medium fast left-arm bowler, and is definitely going to be a nightmare for the batter during the 90s and in 2000. And one more legend player, Mr. Iqbal of Gori Young Boys, is known to be one of the destructive batsmen in the middle order. And of course, one more fantastic all-rounder, Mr. Santosh of Mangaladevi Cricketers, one who represented for Jugal Sports Club as well as Mangaladevi Cricketers, and even for Adimahesh Cricketers. And he is known as with the nickname of Jack Kellys of underarm cricket. Fantastic all-rounder. And one more legend player, Jaya of UFC, the wicket-keeper batter, and one of the best wicket-keeper batter ever produced for in UFC Cricketers. And next one, one more legend player, even is performing in a present cricketer also, Mr. Quresh of Reliance Cricketers. And the last and that list, it's Mr. Praveen